Yo, chat, I'm live. I am live भाई. So, आज भाई बहुत important दिन है भाई. Today is like the holy grail of the days because आज के दिन भाई Vidit is going to play against Aronian and that's a very important game I feel because अभी start नहीं हुई है for some reason Vidit की game. So हम बाकी games देखेंगे पहले. But it's very important for Vidit to win today भाई. आज बहुत ही important दिन है. आज अगर विडी जीत जाता है ही विल कैच अप विद अरोनियन. अरोनियन 1 पॉइंट आगे है. ही विल कैच अप विद अरोनियन एंड फिर एनीबॉडी कुड विन दिस इवेंट. सो वेरी इंपॉर्टेंट डे टुडे. वेरी इंपॉर्टेंट डे टुडे भाई. लैग नहीं होगी यार. आई डोंट थिंक सो लैग होगी भाई. लैग तो नहीं होगी. लैग है क्या? लैग नहीं होगी भाई. रिफ्रेश. सो चैट रेडी ओके भाई. लैग हो गया आते ही. नहीं आज नहीं होगा लैग भाई. आज आई थिंक आई फिगर आउट अ वे टू स्टॉप इट. सो नाउ देयर शुड बी नो लैग. एटलीस्ट होगी भी तो आधे सेकंड की कुछ होगी. सो दैट विल बी नो इशू नाउ. जब तक के लिए भाई जियो लगवाए. रियली नीड टू विन. या टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई बिकॉज अगर आज वो जीतता है ही वुड कैच अप विद अरोनियन. अगर आज हार गया ही इज आउट बिकॉज अरोनियन गोज 2 पॉइंट्स अहेड. इफ ही ड्रॉस अरोनियन मेंटेन्स अ 1 पॉइंट लीड एंड उसका भी एक मैच बचा है केमर के साथ. वो उसको तो पेल ही देगा तो ऑटोमेटिकली जीत जाएगा. सो आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है. आज जीतना ही है और कोई तरीका नहीं है. नथिंग वुड वर्क. वी हैव टू विन. ऑफकोर्स even coming second the pool is like 4 points for VD but I think अगर कैंडिडेट जीतना है तो भाई आज जीतना जरूरी है. अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा. लेट्स गो. So I don't know why VD game is not starting yet. I think VD is a bit late. So तब तक के लिए हरिकृष्णा ही गेम देखते हैं. हरिकृष्णा गेम में स्टार्ट हो चुका है. He has played E4 and Shirov is not on the board yet. So very interesting. Shirov बोर्ड पे नहीं है. हरिकृष्णा ही बोर्ड पे नहीं है apparently. काफी चीजों का नूब है. एक चीज तो हो रही है. So VD has not played yet chat. He has not played yet. हिकारू में क्या हो रहा है भाई? हिकारू में फ्रेंच डिफेंस है. ओह वेरी इंटरेस्टिंग. ही इज बैकवर्ड इज प्लेड द फ्रेंच डिफेंस एंड वी हैव A3 हियर बाय व्हाइट. गेम स्टार्टेड विद प्लेड कैटलान. रियली? व्हाई इज इट नॉट शोइंग हियर देन? सो अपेरेंटली chess.com is noob. Yeah, that's the only expression. Let me go check chess once if it's there. Guess D4 और E4. भाई लोग बोल रहे हैं कैटलान तो भाई ऑफ कोर्स अभी जियो लिया नहीं भाई. एक दिन में कहां से फिक्स हो जाएगा वो. बट लेकिन मैंने बेसिकली फिक्स कर दिया. आई थिंक आई मैनेज टू फिक्स दिस वन. सो अब लैग नहीं होगी. लेट मी चेक आउट भाई अभी के लिए. वहां कुछ हुआ क्या? हिकारू सेड हिज फेवरेट ओपनिंग इज इंग्लिश इनिशिएटिव बट ही आल्सो प्रेज द लंडन सिस्टम. या हिकारू ने लंदन की तारीफ करी है भाई. आज तो मतलब सूरज चांद जहां से भी निकला है भाई वहीं से निकले. बाय द वे चैट या विदित हैज स्टार्टेड हिज गेम. आई डोंट नो चेस.com पे क्यों नहीं दिखा रहा. देयर इज सम इशू हियर. सो एक बार मूव देख लेते हैं क्या चल रहा है. एक सेकंड के लिए इसको यहां उठाते हैं जब तक चेस.com आता है. लेट मी शो यू द गेम. सो द गेम स्टार्टेड आफ्टर C4, knight F6, G3, E6, bishop G2, D5, knight F3, going for this interesting Catalan जहां पे black usually takes on C4 and he took queen A4 check, knight D7, queen A4, A6. Now to be honest chat, this is like a opening which is very drawish and I hope white can find a way to win here. Queen C2 played, preparing B5 beforehand and now black is thinking now. So we will wait of course कि जैसे यहाँ पे वेट करते चेस कम आएगा. कहाँ थे भाई? चैट देखते हैं. अब चैट देखते हैं guys. By the way, you can still predict. You can win a diamond membership. Link is in the description. I think you can basically win a diamond membership today as well. So that is one more thing. And अब हम पढ़ेंगे chat. Hari got walkover. I don't think so. Hari को walkover मिलेगा भाई. I don't think so. Check लीजिए. Yes, attendance लगा दी भाई. Ding one with this line at call. Yeah, this is the thing is यहाँ पे there is this line. You can play the move bishop D7. And after queen C4 you can play C5. And after knight E5 you have queen C8. And this is so drawish. Vidit is very lucky Aronian did not go for this. So this was a very risky choice. But anyways, queen C2, C5 played, knight C3, and now with Aronian is thinking. Really shouldn't have gone for Catalan today, I guess, as it is the most played opening and opening can prepare well. Yeah, man, but it got him a win yesterday, so I think he will do it for a prepared. And I'm happy kind of he went for this. At least something he understands the best. And something that chess.com does not understand best is broadcast because we can't see the game here. Let me check out if they have it in the second link. Yeah, let me check out in this link if they have it. Pool C वाला जो separate link है इनका. Yeah, they have it here. Chat. So यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग. That's not an issue. Let's close the chess now. Let's go here and we fix this one. Awesome. Let's close the pairing. Of course, Ashad Harikrishna is playing Shirov as white. आज हरिकृष्णा को भी जीतना बहुत जरूरी है. That's very important for him. And of course, VD का भी. दोनों का जीतना बहुत
बहुत जरूरी है, बिकॉज हरिकृष्णा इज प्लेइंग द लोएस्ट सीड इन हिज पूल, सो विद वाइट वेरी इंपॉर्टेंट टू विन, एंड ऑफ कोर्स पीडी का तो आज कंपल्सरी है ही है. तो लेट्स क्लोज दिस वन. पेयरिंग्स सोच सकते हैं. ओहो ईशान जी मेंबर बन गए. अरे वेलकम ईशान जी, वेलकम. आपको तो शक्तियों की जरूरत नहीं है, आपके वैसी बहुत शक्ति है भाई. थैंक्स अ लॉट भाई. यो कैसे हो? कॉफी ढंग से बनी नहीं है यार. चंदस लगा तो लगा दी भाई. कैंसल टिक्कू क्यों भाई? सीबीआई. अरे यार मतलब ऐसा कुछ नहीं है यार, वो था ऑसम. हाउ द गेम स्टार्ट सो फार? सो चैट वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग. देखो चैट, कोई भी ओपनिंग खेलो बिशप तो F4 पे जाएगा ही जाएगा. कोई भी ओपनिंग खेल लो बिशप F4 पे जाएगा ही जाएगा. द लंडन सिस्टम इज ओपी भाई, द लंडन सिस्टम इज ओपी. द बिशप विल ऑलवेज गो टू F4. भाई लैग नहीं है भाई, लैग नहीं है भाई. रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो. So bishop has gone to F4. We saw it till I think this position. I think it's my laptop hanging this time, not really the internet. I don't know why my laptop is stuck though. Let me check. Yeah, my laptop was stuck, chat. I think my laptop was stuck. It wasn't the internet. Fortunately, not the internet today. So after Queen C4, A6 played by Black. Queen C2, C5, Knight C3, Queen C7, D4 played by Vidit. Very interesting choice. Yeah, sub closed है भाई, सब closed है. I think I'll close the Excel sheet as well. Apparently, there are many dramas going on right now. So that's closed. And Queen 7 के बाद D4 played by Vidit. Apparently, you know, castles in the move here. But D4 is also possible. And Black plays the best move immediately, B5. So, and now, in this position, you know, bishop F4 hasn't played before, chat. At least on chess.com it hasn't played before. So bishop F4 played by VD. And now Aronian is thinking. Now that's a good sign for VD ki Aronian is thinking. That's very interesting. अश्लील टैब बंद करें. अश्लील टैब कुछ नहीं है भाई. Looks like VD has some prepared. He's playing so fast. Yeah, I hope so too, man. I hope so. He's well prepared. I really hope so. He can play some good chess, bhai. I really hope so. My OBS is dancing around for no reason. I don't know why it's stuck, bhai. OBS ji, pranam. Pranam OBS ji, please. Please, काम करे. काम करे. OBS ji, please. Why is my OBS stuck, bhai? What is wrong with my laptop today? कल नेट था, आज लैपटॉप है बड़ी. अरे अर्षित भाई, थैंक्स भाई. अर्षित भाई, thanks for the samosas. Have a great stream. Thanks a lot, Shad bhai. Thanks a lot, bhai. Thanks a lot. अरे भाई ये क्या है यार, आज लैपटॉप क्यों लोल दे रहा है मुझे. Let me try and refresh this. What's wrong today? Discord के चक्कर तो ही है. Possibly Discord could be the problem here. Discord sometimes hangs. And has it been fixed? Okay. Okay, not really sure what's the problem. Okay, chat, is it fixed now? Give me a second, chat. Give me a second. I'll be. Yeah, I'm back, chat. I'm back. It wasn't the net actually. It wasn't the net this time. It was the OBS. Awesome, भाई. एक दिन net, एक दिन OBS, सब बढ़िया भाई. सब अपना हिस्सा पूरा निकाल रहे. सब अपना हिस्सा पूरा निकाल रहे भाई. So I am live back apparently. I hope so. I hope so. I'm back, chat. I am back, chat. I think I'm back. Let me know if I'm back, chat. Let me know if I'm back. My laptop is hanging for no reason whatsoever. I don't know. Like it makes no sense. Like अब तक laptop का भी issue नहीं करता था. Now laptop is having an issue. आज नेट का कोई चक्कर नहीं है. आज लैपटॉप के ड्रामे है apparently. Yeah, so Sahil is storming Airtel office right now with a hockey stick. नहीं, apparently नेट ठीक है. आज नेट बढ़िया, ओके बढ़िया नहीं है, बट थोड़ा लैग कर रहा है, बट ठीक है. और आज OBS के लगे हुए हैं. OBS इज लाइक भाई आज मैं नहीं चलूंगा. आज मैं नहीं चलूंगा भाई. किसी ने UPI से 500 सुपर चैट किया यार. लेट मी चेक इट आउट क्विकली. अरे चैत्री भाई, थैंक्स अ लॉट यार. थैंक्स अ लॉट. मींस अ लॉट भाई. यार लगता है मुझे अपना सर ही फोड़ डालना पड़ेगा. थैंक्स अ लॉट चैत्री भाई. मींस अ लॉट भाई. आई डोंट नो कि अभी क्या नाटक चल रहे हैं मेरे लैपटॉप के, बट आई थिंक इट्स फाइन. इज इट फाइन नाउ, चैट? इज इट फाइन? पहले बता दो इफ इट्स फाइन. आई थिंक
वायरस इन लैपटॉप, नहीं नहीं यार वायरस नहीं है, आज पहली बार हुआ आई थिंक लैपटॉप का नाटक। YouTube is not receiving enough video to maintain smooth streaming, ये क्यों दिखा रहा है मुझे? OBS के नाटक apparently। अटेंडेंस लगा दी, चंदी पे लगा देंगे भाई। अरे ये क्या है भाई, फिर कुछ तो चक्कर है आज मुझे चक्कर तो है भाई। इट्स फाइन, ओके फिलहाल के लिए चल रहा है होपफुली। हरिकृष्ण का वॉकओवर नहीं मिला, पता है वॉकओवर नहीं है भाई, वॉकओवर नहीं है। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज दिस वन। आई थिंक ये 2 टैब से भी कोई इशू हो सकता है, इतना घटिया लैपटॉप तो नहीं है यार मेरा कि 2 टैब से भाई बंदा कहे भाई ओके दिस इज टू मच, आई कांट हैंडल दिस शिट एनीमोर। इतना भी नहीं है भाई घटिया लैपटॉप। ये देखो ना भाई हैंग हो रहा है, ओह भाई स्क्रीन भी नहीं खुल रही, व्हाट द हेल इज दिस। अच्छा ओ आज मैंने लैपटॉप थोड़ा भर दिया था, तो चक्कर तो नहीं है। आई डोंट थिंक दैट शुड बी द केस दो। एनीवेज हाय टिक्कू जी, आज कौन कौन लोगों ने नूबसी ओपनिंग खेली है? आज खोली है बट बाय द वे चैट विषय फॉर विदित भी खेला है। हु इज वॉकिंग ओवर हरिकृष्णा? Nobody is walking over Hare Krishna. First of all, not only is he a person, in fact, Hare Krishna नाम के ऊपर तो ऐसा कुछ होगा तो I think mob killing हो जाएगी इंडिया में. So that's very important. Yeah, I don't know what's wrong. I don't know what's wrong भाई. क्या ही ड्रामा है भाई. Okay, okay. हाथ पकड़ते भाई. Patience. Breathe OBS, breathe. Breathe OBS, breathe. सांस लो भाई, सांस लो भाई, सांस लो. जान दो भाई. Take in your breath and take out your breath OBS. Yes. Yes, 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 yes. Yes OBS. Good OBS. Very good OBS. Very good. Very good. Very good. Anybody can do this. Yes, you can also do this. Yes OBS. Yes, very well done. Very well done. Very well done. Okay, okay. So, very important. Arey bhai, even my mouse is hanging for some laptop. Then what is the issue here? I don't know. अरे यार फिर ड्रामे. हेलो हेलो, मैंने हैक कर दिया लैपटॉप. अरे भाई ऐसे मत करो भाई मेरे साथ. भैया हो क्या रहा है यार? What the hell is going on today? I don't know, like it's completely random, out of the blue. Out of the blue literally, like it's lagging. I've never seen it lag like this. Crazy. I don't know what's happening. हरे कृष्णा की आखिरी 100% है भाई, अभी गेम स्टार्ट ही नहीं हुई. टास्क मैनेजर, या probably should see on task manager. Yeah, what the hell is wrong? Because something is happening. It makes no sense. Let me check. टास्क मैनेजर भी नहीं खुल रहा बेटे. Change connection. It's not the Wi-Fi chat. It's my laptop today. Wi-Fi is absolutely fine, I think. Let me check task manager. भाई आज ये क्या हो रहा है भाई? Back to back days यार. Very interesting. लगता है हमारे राहु केती सारे के सारे अलाइन नहीं है. केती तो खुद स्ट्रीम कर रही है वैसे. लेट मी चेक भाई. ऐसा कौन खींच रहा है इतना परफॉर्मेंस इसका? अच्छा चेस बेस भाई, चेस बेस इज लैगिंग. ओ माय गॉड, चेस बेस इज लैगिंग भाई. अरे मेरा चेस बेस खुला हुआ है. इट्स द वन लैगिंग. क्रेजी. चैट कैन यू बिलीव इट? चेस बेस 14 इज लैगिंग. चैट ओके मैंने एंटास कर दिया भाई. ओ माय गॉड भाई, चेस बेस वाज लैगिंग. ओह क्रेजी क्रेजी. ओके लेट मी क्लोज इट. भाई चेस बेस लैग हो रहा था भाई. होली फक. ओके लेट मी क्लोज इट चैट. ओके नाउ इट्स फाइन. अरे भाई ओके नाउ इट्स फाइन. Now it's absolutely fine. Chessbase was taking up 99% of the memory. Holy fuck! No wonder my laptop was lagging. It was consuming a lot. No, it was stuck basically. मैंने देखा नहीं होगा. Yeah, now it should be fine. I think अभी ठीक हो जाएगा कुछ सेकंड में hopefully. Cancel Chessbase नहीं भाई. I think वो मेरा इंजन ऑन रह गया होगा. उसमें and तभी it was taking too much memory. Yeah, so now it's fine. क्या अब ठीक है? चल मुझे बताओ भाई. Laptop is absolutely fine भाई. i7 है भाई. Is it fine? अभी कुछ लैग कर रहा है? अभी भी लैग कर रहा है भाई. रुको, इट्स नॉट चेस बेस. क्या फिर क्या है? ओके सब रिफ्रेश हो रहा है भाई, सब रिफ्रेश हो रहा है. आई थिंक इट्स लाइक लैपटॉप इज फाइनली गैदरिंग अप. रुको भाई, गिव मी फ्यू सेकंड्स. गिव इट अ फ्यू सेकंड्स. इट शुड बी फाइन. इसे वो दैट्स व्हाई यू शुड नॉट प्रिपेयर चैट. That's why you should not prepare because once you start preparing with the help of chess base, you start your streaming career goes down. Hence proved.
once you spend time into preparing for chess, your streaming career goes down. Your streaming career goes down. That's evidence. Still lag. रुको भाई, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. Give it a few seconds, chat. Give it a few seconds. It should be fine. It should be fine. Let me refresh it. Okay, it's still a bit slow. It's still a bit slow. It's still a bit slow for sure. VD insane पर भी आज मैं देख रहा हूँ कि prep easy है, but my laptop is still slow, so I don't know why that is the case though. Okay, is it fine now, chat? Is it fine? Is it fine? Is it fine? Let me know if it's fine or not. इतना एक्सपीरियंस होने का सब भाई गाने गायब हो गए यार, मेरे प्यारे गाने गायब हो गए यार. शिट, दैट्स सैड. अरे यार, ये अभी भी क्यों लैग कर रहा है? क्या नाटक है? अब तो चैट बंद कर दिया. अब क्या इशू है? Okay, let me check everything is fine. Why did the songs go away? My प्यारे प्यारे songs, ये प्यारे प्यारे songs. भाई सॉन्ग सुनाई दे रहे तुम्हें? नहीं सुनाई दे रहे ना? OBS is still lagging. I think it's still lagging. It's still lagging. I think it's still lagging. I can see it's still lagging. Chat, I'll be back. Chat, final. Chat, I'm back. I'm back. I'm back. I think दूसरी stream start हो गई थी. Now I'm back. Now I'm back. So I should be back now. I should be back now. Please refresh, chat. Please refresh. It should be back. And so I think I managed to solve most issues. So I think कोई issue नहीं होना चाहिए. कोई इशू होगा तो पता लग जाएगा. आई थिंक अभी तो लैग नहीं हो रहा है बिल्कुल भी. आई थिंक इट वाज बेसिकली चैट चेस बेस वाज लैगिंग एंड चेस बेस्ड एंड chess.com was lagging. It was not my laptop apparently. So chess.com was lagging apparently and chess base. So thanks to chess.com and chess base. It's difficult to have proper websites, chat. So yeah, so दोनों lag कर रहे थे. Anyways, so now I'm fine. So it was fortunately not my laptop and neither my internet for the first time. Okay, at least I'm happy about that. Anyways, so chat, let's check out Vidit's game now. Finally. So first of all, Vidit has to win today, chat. It's really important. बता नहीं भाई, चेतन की गलती नहीं है, मेरी गलती है. मैंने इंजन ऑन रखा था. So और ऊपर से लेकिन हाँ, चेतन की पूरी गलती है. इनकी पूरी गलती है भाई, मतलब because ये लोगों को तो मैंने सिर्फ Google Chrome was carrying 93% of my वो after chess base ended. Anyways, so c4. Oh, by the way, he started with c4. Yeah, very interesting. Chat, very important. He started with c4. So if black had played e5, you would see the English attack here. So c4, knight f6, g3, e6, bishop g2, d5, knight f3, dc4, queen a4, knight d7, queen c4, a6, queen c2, c5. And black ka idea usually had to go b5 and bishop b7. If he can do it, followed by rook c8, he's absolutely fine. So after knight c3, queen c7, d4, b5, same idea, yeah. So bishop f4 attacking the queen. Queen goes to a7, very sneaky square. And Vidit plays d5, trying to open up his position. While, you know, pieces are simply, black's is not developed, he's not castled. इससे पहले black अपने घर बाहर संभाल ले, उससे पहले ही life ने कहा COVID. So anyway, so d5 played, knight d5, ed5, a4 played. Now that is ab5 because black cannot capture back. There's a pin on the a pawn, and black now played bishop e7. Very interesting. And white simply took the pawn, and Aronian played queen b6. So now basically white has 1, 2, 3, 4, 5, 6 pawns. Black has 1, 2, 3, 4, 5, 6. Equal number of pawns. Black is not castled. White is not castled. But then there's something very interesting here. Black has 2 central pawns. And both of these pawns are, क्या बोलते चैट बताओ, इन दोनों पॉन्स को क्या बोलते हैं हम? रमेश और सुरेश क्या बोलते हैं इनको भाई, बताओ भाई. मॉड्स टू बी ब्लेम्ड. नहीं भाई, गलती मेरी है और गलती चेस.com की है. क्रोल लव्स टू हॉग रैम. या आई थिंक जब चेस बेस क्रैश हुआ, वो बंद हुआ, तो उससे क्रोम हैंग हो गया एक्चुअली. अब ठीक है. हैंगिंग पॉन्स, एग्जैक्टली, जस्ट लाइक माय OBS. हैंगिंग पॉन्स, एंड दीस आर 2 pawns here. Yeah, it's very it's definitely not symmetrical. That's very important. That's well said. And now white has 2 weaknesses to attack.
but these pawns also kind of give him some space. This is known as hanging pawns chat. Hanging pawns बोलते हैं हम इसको. Hanging pawns मतलब ये लोग वैसे तो अकेले हैं बट एक दूसरे का साथ है. इट्स लाइक मतलब आप पार्टनर के साथ कहीं डेजर्ट में अटक गए, इवन दो आप कंप्लीटली अकेले हो, एटलीस्ट आपकी बीवी या गर्लफ्रेंड या जो भी आपके साथ है, तो कोई तो साथ में है आपके. सो ये दोनों साथ में है, लेकिन ब्लैक इज ऑल्सो सेटिंग दिस, सो वाइट शुड प्रॉब्ली आइदर कैसल एंड ऑफ कोर्स you cannot castle the pawn right now. Queen से मारना possible है, so if white castles, black can always consider this. But I think considering कि अभी black is also not castled, I think he will also first try to defend the d5 pawn, because this pawn can be weak after moves like knight g5. For example, if you castle then knight g5 and there's mate and there's bishop d5 threatened. So I think black will also first of all play knight f6 next and not try to capture like this pawn. But let's see what happens. VD slightly better after castles. Yeah, but I think this is very normal, yeah, because होता क्या है कि मतलब white is to play here and white is having the first move, तो कोई खतरनाक बात नहीं है, मतलब इतनी हल्की सी एज होना, इट्स वेरी नॉर्मल. मुझे पता है आप स्ट्रीम लैग करवा के कल के लिए रोज ले आए. कल के लिए रोज, ओके, इसका मुझे समझ में नहीं आया कुछ. शुरू से वीडियो कैन 95 प्लेड, यस ही कैन ही प्लेड, बट आई फील ये नाइट उसी के लिए बैठा है कब व्हाइट 95 खेले. So let's not play it right now, although it can be played. It is a very normal move. 95 is a very good move. I think it might be the second best move. But castles is the most important move here for white. Keep your king safe. Very important. Why not pawn to a6? You can try to capture this pawn, but then you can see कि ये diagonal open हो चुका है. Moves like queen b4, moves like rook a6, gain in intensity now. You can see clearly कि black is now fully developed on the queen side. He has two strong pawns. After you castle, he can castle. And now rook to b8, and the b2 pawn is really weak. In fact, black's pawns are much less weak than white's pawns, so that's why they're weaker than white's pawns. And I would rather be black here, putting some pressure here, some pressure here, knight coming to f6, and black is absolutely fine. So let's see what VD plays here. हरित्या का गेम दिखाओ. हरित्या कौन है भाई? Vidit thinking means Aronian made some inaccuracy. It also might mean कि मतलब it's not the main line, inaccuracy जरूरी नहीं है. Chesses for running since yesterday, कोई epic line तो मिल गई होगी पक्का. कल से नहीं भाई, मैं actually आज थोड़ी prep start कर दी थी. I was trying to figure out कि which openings I'm going to play whenever I play tournaments, most likely either nationals or in March. तो I was trying to figure out कि कौन सी opening खेलनी है, and उसके लिए मैं चेस खोल के रखा था. आज लैग करके नहीं दिखाओगे? आज किया था भाई, आप लेट हो गए भाई. निखिल भाई बड़ा अच्छा किया, लेट आया. Harikrishna, let's go Harikrishna's game chat. So Harikrishna is playing Alexei Shirov, and Harikrishna के लिए भी जीतना एकदम ही 100% इंपॉर्टेंट है, because he's playing the lowest seed of his section. अगर उसको white से नहीं हरा पाए तो भाई क्या ही कैंडिडेट पहुंचोगे. So very important for him to win as well. Let's see, we have the Spanish here, and he did not go for the Berlin. Rook e1, b5, bishop b3, castles a4, b4, d3 played, some anti-marshal by white. Knight d2 played, knight a5, trying to get the bishop pair नहीं देंगे, bishop a2 played, and now black is thinking. This is very theoretical, of course. Spanish usually बहुत theoretical होती है. So let's see what happens. Noob, it is देसी नेम. भाई किसने दिया देसी नेम? भाई किसने? हरिकृष्णा ने खुद बोला क्या तुम्हें देसी नेम उनका? तो हमें कैसे पता होगा? हमारे चाचा थोड़ी लगते हैं. हाँ, पेंट, और ये क्या है भाई? मौज कर दी. मौज किसकी हो गई भाई? एक डाउट, इफ समवन प्रिपेयर्स वन ओपनिंग देन देयर इज वेरियस फैक्टर्स की ओपोनेंट कोई भी ओपनिंग खेले तो इनकी थ्योरी कैसे होती है? अश्लेष भाई, दे हैव ओपनिंग्स प्रिपेयर्ड इन ऑल वेरिएशंस ऑलमोस्ट. घर से जब वो घर बैठते हैं ना, जैसे टूर्नामेंट स्टार्ट होने से एक महीना पहले, वो बिल्कुल मतलब हर लाइन में दे हैव समथिंग प्रिपेयर्ड, समथिंग न्यू. सो इवन इफ दे डोंट लैंड इन ओपनिंग जो उन्होंने कल रात को देखी है, दे ऑलवेज हैव अ न्यू आइडिया प्रिपेयर्ड बिकॉज दे प्रैक्टिस्ड एट होम. सो दैट्स व्हाई दे ऑलवेज हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन. या कैन यू बीट Harikrishna? Not really. VD out of prep. I'm not sure still if he's out of prep. I think he's doing fine yet. UPI only, अरे यार. अरे thanks a lot Nankish भाई for the super chat. भाई 200 rupees. Thanks a lot भाई. 201 with Shagun. Thanks a lot भाई. Means a lot भाई. Vidit should remember his philosophy. Castling is good for heart. Yeah, but his fantastic wins have come, when he has not castled. So maybe he's a bit tempted now. Talsin Drew. धनजी भाई, आप लगता है हमारी 15 दिन पुरानी स्ट्रीम देख रहे हैं. प्लीज थोड़ा अप टू डेट आ जाए. आज के मैचअप्स भाई, आज हिकारू इज प्लेइंग बैकरॉट एट्रियन, एंड हिकारू ने कल बोला कि लंडन सिस्टम इज ओपी, सो आज हिकारू गेम भी हम जरूर देखेंगे. नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स
डैनी डुबोव अगेंस्ट विंसेंट केमर, ये गेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप सी के लिए जहां विदित खेल रहा है. राइट नाउ द पोजीशन लुक्स रफली बैलेंस्ड, मे बी वाइट इज टाइनी बिट बेटर. एंड नेक्स्ट वी हैव विदित अगेंस्ट लेवॉन हियर एंड हु इज राइट नाउ थिंकिंग. सो वेरी इंटरेस्टिंग, विदित इज थिंकिंग नाउ, वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस. यो जेदी भाई कैसे हो? टिको भाई कैसे हो? बढ़िया अपूर भाई, बढ़िया हूँ. कैसे हो भाई? डुबोव हारा तो डुबोव पर मास चलना चाहिए. अरे नहीं भाई, मास से क्या होगा भाई? अरोनियन के साथ फिर से मैच क्यों? हर किसी के साथ 2 मैच है. पिछली बार काले पीस लिए थे, अब सफेद लेंगे हम. वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस होना चाहिए भाई इक्वालिटी के लिए. डू यू थिंक ओपनिंग ऑलवेज इंपॉर्टेंट? यस, ओपनिंग इज रियली इंपॉर्टेंट भाई, really important. As we saw, Vidi caught Dubov in his preparation yesterday, and today also he prepared something. Let's see if he can catch Aronian in his preparation. Let's see. जस्टिस फॉर हरी का कोई जस्टिस नहीं है भाई, जस्टिस तो भाई हरी खुद करेगा अपने लिए. एंड नथिंग प्लेड येट. बाय द वे, वेस्ली सो इज हाफ अ पॉइंट अहेड ऑफ हरी. ही हैज टू विन टुडे टू काइंड ऑफ कैच अप विद वेस्ली, अदरवाइज तो कैंडिडेट्स के सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा. एंड डोमिंग एंड शिरोव ऑल्सो नोज इट, सो ही विल ट्राई टू प्ले इट वेरी सेफ, बिकॉज शिरोव ऑनेस्टली आई डोंट थिंक ही एक्सपेक्ट्स टू काइंड ऑफ क्वालिफाई फ्रॉम दिस टूर्नामेंट, सो ही इज ट्राइंग टू प्ले हिज बेस्ट चेस. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. चैट, लेट्स डू दिस गेम अगेन. चैंपियन पहचाना भाई, छोटा यूजर नेम, नाइस. आज मैंने भी कार्लसन से ड्रॉ के लिए से नोट 2000. अरे नाइस. If Vidi draws today, Levon will win the group. Yes, Chaitanya, that's very important. If Vidi draws today, Levon remains a point ahead, and even if Vidi wins both his matches and Levon ends up winning one and drawing one, Levon qualifies. So he has no chance whatsoever, or like a 0.5% chance after today's game if he draws or loses. So he has to win today. There's no other hope. Are you myopic? Yes, I am myopic. I am सारे पिक मेरे अच्छे हैं. If he draws today, तो RCB कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा. ये क्या है भाई? Do you think players are trying to hide their candidates? Atul bhai, what will they hide their prep for if they don't even qualify for candidates? Nobody here has qualified for candidates, so I think first of all they should try to win here. So nobody here is hiding his prep. I can assure you of that. भाई आज क्या होगा भगवान जानता है भाई, भगवान जानता है. आज का गेम इज एवरीथिंग. टुडेज गेम इज एवरीथिंग चैट. अगर आज बीजी ड्रॉ हो गया तो कल रेस्ट डे के बाद हम भी रेस्ट लेंगे आई थिंक, बिकॉज टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट. माया तो नहीं पता, बट नाइस पिक. एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली. कैसलिंग करना चाहिए. यस, कैसलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू टेक देन सडनली ब्लैक कैन ब्रिंग द pieces into the game very quickly. We should not be the first ones to exchange. Very important. अरे अर्चित भाई, thanks a lot भाई. 1.11 भाई, इतने शगुन के तो भाई लिटरली OBS भी शर्मा जाए. Thanks a lot भाई, thanks a lot भाई. अतुल भाई मेरा कॉपी कर रहा है. Thanks अर्चित, means a lot. Thanks a lot अर्चित भाई. शुक्रिया कदरदान मेहरबान, बहुत ज़्यादा शुक्रिया. Just for the change भाई. 95 is possible, chat. 95 attacks d5, so definitely a possibility. And black can obviously just take on e5 though. After bishop e5, I think black can just castle and he's probably doing fine. You also have the option of bishop d5 here, which is very interesting. After bishop b7, queen e4. But I feel after these moves, all pieces are getting exchanged. And यहाँ पे draw की chances बहुत है somehow. You can clearly see कि मतलब बहुत draw हो रहा है यहाँ पे. Yeah, just queen f5 check and black picks up the bishop, or it maybe not picks up the bishop, but he's absolutely fine. So I feel somehow if he goes for these exchanges, 95 will lead to some exchanges. Knight exchange हो जाएगा पहले ही, then bishop might get exchanged. So he should probably play castles, maintain more tension into the position, I think. OBS का मतलब क्या होता है पता नहीं यार. OBS is over body sexual, over body, I don't know what. Hope Kemal Dubov can pull off an upset against Levon. Yeah, but that's very unlikely, Athar bhai. That's very unlikely, especially Kemal का तो भाई कोई चांस ही नहीं है. And Dubov के लिए भी chances बहुत कम रहेंगे. So I feel somehow Will should take matter into his own hands and try to somehow win. And if it comes closer to a draw, it's not a bad move. It's a good move. But it's like a position जहाँ पे you end up with some piece exchanges, and that's what White has to avoid. Your support from Singapore here to go by. कैसे हो? Thank you for coming to the stream, bhai. If Vidit loses today, then does Dan picks over for Vidit, or he has some chances? He will have some chances, Ayush bhai. Then he has to finish second in the pool, gain 4 points, and then try to win the next Grand Prix. He can still qualify for the candidates that way. But of course, chances कम हो जाते हैं यार. If अगर आपकी अगर आपके पास क्लास में आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, मैकेनिकल कर रहे हो, आपके पास 2 ही लड़कियां क्लास में हैं, उसमें से एक लड़की कमिट हो जाए,
किसी सीनियर के साथ, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटिंग इन योर कॉलेज लाइफ रिड्यूस बाय 50%. दैट्स द प्रॉब्लम. सो ऑप्शंस बहुत कम है, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है. दैट्स वाई यहाँ पे क्वालिफाई करना इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. पहली ही लड़की पटा लोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी रिस्क फ्री फॉर लाइफ. E4, yeah, but E4 is like, I mean, it's like a position which owns up your king too much while you're not castled. And black can just go D4 and he has a protected pass pawn now. So let's not go for it, man. I think this is in black's favor somehow. Or he can, of course, even play bishop B7. He could even take, and after queen E4, he has just bishop B7, and I don't know what white gained from this. So if white's king was castled, then rook E1 would help white here, but white is not castled yet. So very important. भाई कसम खाओ, आज के बाद एनर्जी नहीं दोगे भाई. देंगे भाई, बिल्कुल देंगे. देना हमारा काम है, लेना पता नहीं किसका काम है. लेकिन what happens if VD and Levon end up with same points? Then there will be tiebreak by Imran, but they will only end up with same points if VD wins today. That's really important. आज जीतना बहुत important है भाई. And the best part is VD के, I think VD is going to play I think this is the fourth round, right? So VD is yet to play one game against Gamer, so he can also try to win that one. Queen A4. I mean, it is possible, or what's the idea, man? Like, if black just castles, like, there's nothing white has achieved. After takes, just rook takes, and I don't see what white has achieved here, unfortunately. So we should avoid this one. So best move here is castle chat. Whenever you don't have something concrete, I think one very important way to play chess is to develop your pieces. That really helps you, I feel. So let's do that. Let's do that, chat. Let's improve, yeah. Let's improve. Levon is Dishuk inverse. Okay, interesting. Hey, good evening, never mind chess. Castle के बाद queen take pawn से हम down नहीं हो जाएंगे. Yeah, so basically, let's say you castle and black takes. By the chat, आपको गाना सुनाई दे रहा है क्या? गाना बंद हो गया. Did it close for some reason? Did the song close? I don't know why it closed today. मुझे बताना भाई अगर song close हो गया हो तो. गाने भी जरूरी है लाइफ में भाई. गाने बहुत जरूरी है. वाइब आनी चाहिए भाई. वाइब. I need some vibe there. Let me add a new song and see if it starts playing the song. It started now. Awesome. It started now again. So कहाँ था मैं? Yeah. So गाना से अब बजेगा. So now after queen b5 chat, here white has a crazy move, and anybody who finds that move is just the next Magnus Carlsen. So chat, let's say VD castles. I hope VD has prepared this at home. Let's say white castles here, and black plays queen b5. So this is an Indian move, chat. I did not find this. What is white's best move here? Hikaru said he'll play Tile Tuesday tomorrow. भाई अलग ही आदमी है भाई. रितेश is saying B4. रितेश भाई कहाँ से कौन सा इंजन खोला? मुझे इंजन का नाम बता दो भाई. Music has negative impact on brain, studies have shown. यार क्या करें यार, हम तो लत लग गई भाई हमें तो. Yeah, it is B4 chat. It is just, I mean, if BD has not seen this and he finds this, तो भाई वीडी की फोटो लगा के उसकी पूजा करने का हमें टाइम आ चुका है. This is crazy. This is absolutely crazy. E4 is possible, but I feel it's not the best. The best is E4. I think it's like black is not forced. I mean, he can simply play D4 and close the center, so he maintains his pawn edge. But B4 is like opening up shit immediately. And black is, of course, three choices. He can capture with the pawn, he can capture with the queen, and he can castle. So first of all, if he captures with the queen, chat, now you can see the queen has very limited squares. And now comes the move which makes, again, no sense whatsoever. Knight to h4. I mean, what the hell is this move? I think the idea is to capture on d5 and go knight f5, which is all ridiculous. This is all ridiculous. Bishop h4, now bishop d5. This is why I hate Stockfish, bhai. This is why I hate Stockfish. Insane lines, bhai. Insane lines. And now black's best move is rook b8. वाह बेटे वाह, सीधा है बिशप के मुंह में. बिशप के सीधा मुंह में भाई. Awesome. Awesome. So I think ये crazy lines है कुछ. And if he takes with the pawn now the c file is opened up and we have the d4 square.
So we play knight d4, attack the queen goes back, I don't know, to b5, and now knight f5, and you can see this looks very human. Yeah, this is very human. There's a huge pressure here. What if black takes back with the pawn? Won't he have 2 credit passers? Yes, but now after knight d4, queen b6, knight f5, black simply has no time to castle, because if he castles, I take the bishop now, and this pawn is hanging. If he tries to play a move like bishop f6, trying to defend the bishop and this, then comes knight e7 check, king f8 maybe, and now bishop takes d5, and black can already resign. So this is crazy, but VD plays knight e5. Arey yaar, wo badi crazy line thi. That means chat, VD was not prepared. VD was not prepared for this. अगर वो घर से देख के आया होता, he would have played castles for sure, because castles, queen takes b4 was just an insane line for white, so much better. But he played knight e5, which is the second best move in the position. It's not so bad, but it might lead to some drawish structure. So let's hope so कि draw ना हो. VD, I hope you maintain enough winning chances here. No castle by VD. Yes, he played knight e5. Why not knight c8 in which line? Mukul bhai, we can of course analyze here. Knight c8 तो कभी आ ही नहीं रहा है वैसे किसी भी लाइन में. अच्छा मुकुल भाई अब तो ट्रोल ही करते हैं anyway. Tough for Carlson, too tough. It is. I mean, tough for Carlson. Okay, Carlson. इसे ढूंढता हूं मैं हर कहीं, वो कार्लसन यहाँ मुझे दिखता नहीं, इसकी रेटिंग 2900 नहीं हो रही, वो कार्लसन है कहाँ? स्लो मोड प्लीज. ओके, लेट्स एक्टिवेट स्लो मोड भाई. स्लो मोड करते हैं. VD plays and black immediately took on e5. Black immediately took on e5. Very interesting. Aronian ने एक सेकंड में मार दिया. That means Aronian is prepared. Aronian is prepared भाई. Aronian is well prepared. That is not a good sign for VD. I hope VD can find some interesting ideas there. Next Grand Prix में pool and players in respective pools will be same या बदल जाएंगे? नहीं, they will keep changing because 8 player तो वैसे ही different है, so they will keep changing भाई. Let's check out all the games chat. एक बार सारे के सारे game check out करते हैं, very important. So let's go to the game of Grishchuk against Esipenko. We have the Nimzo Indian here, and feels like this is all theory. I think I've seen some games by Karpov and Kasparov and Crazy. This is all theory. Black will of course take the correct moment on d4, and he has this X-ray pressure on the bishop, so still opening theory. We go to Hikaru against Backrot, and by the side, this g5 idea is very common in the French defense. The idea is to, of course, try to undermine the e5 pawn. Nothing beats playing c5 though. That's true, bhai. That's true. c5 is the craziest one. Aronian is not in prep. He was thinking VD's time. Let's hope so, Hitesh. That's true. So, trying to undermine the e5 pawn, Hikaru tries to defend it, and now d4 played, sacking a pawn and playing on f4. So, I think this is still preparation by Backrot. Let's go to Rapport against Vodacek. मैं एक सिंह के लिए खुश हो गया था, लंदन देख लिया मैंने. Okay, unfortunately it's not the London. The pawn should be here for that. So okay, typical Queen's Gambit, nothing special. We go to now Dubov against Kamer, which is in the end game now, and I do feel white is slightly better because black is not developed. So maybe Dubov is slightly better here. Now we go to the Opalin against Fedosiev, all opening theory here. Rapport against Vodacek. Yeah, we saw this one. And we finally have Dominguez against Wesley So. And black is of course guarding his pieces on the king side and trying to create some sort of attack here. But white is also trying to push the pieces back. So very interesting. Now we come to Harikrishna. And after bishop a2, black is now thinking. So Shirov is thinking, that's a good sign. And I feel that Harikrishna has to win this. He also is 30 minutes lower on time than Harikrishna. So Harikrishna having some amazing chances today. And finally we go to Vidit's game, jahan pe Vidit is thinking for now. Which pool do you think has the weakest players? Pool B has the weakest players because Ding Liren was the guy who had to go out and he was the top seed. So pool B is the easiest to play in right now. But then baki तीनों pool बराबर है kind of. Hello sir, how are you? I'm fine. भाई कैसे हो भाई? Aronian blended at 9:30 PM. I went to feature, saw the move. अरे चैतन्य भाई, thank you. अपनी time machine humanity के साथ share करे भाई. हम सबका भला करे. मेरे को भी देखना है कि भाई मेरे कितने subs होते हैं एक साल बाद. Why are we thinking? Because he has an option of bishop d5. दो option है. Bishop d5 is one option. Bishop e5 is one option. Both options he has, and that's why he's thinking. Bhai, that's why he's thinking. Why did Ding Liren withdraw? Because of visa issues. Because he could not travel to
which country is this in? I keep forgetting. Yeah, Berlin, because of visa issues. ये बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर दो, इतने क्या बात कर रहे हो पार्थ भाई, ऐसा पहली बार किसी ने बोला आज तक। अगर विदित जीता तो उसको फोटो फ्रेम की पूजा करो, हम चैट में भजन करेंगे। बिल्कुल भाई, बैकग्राउंड में वीडी की फोटो आएगी, यहाँ पे हम करेंगे ओ वीडी 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 वीडी। एक साल बाद तेरे पूरे 10,000 सब माइनस हो जाएंगे। अरे वाह वाह पवन भाई, एक पवन भाई है भाई, देखो एक आप पवन भाई है भाई, क्या ही मतलब भाई। Any idea why Vidit thinks for 30 minutes only after move immediately starts thinking again? He thinks 30 minutes for... Yeah, I know Subhajit. I think that might be because I think here 95 he thought, and now maybe he's just confirming if bishop d5 is possible. It happens sometimes, but I'm not really sure why right now, because he should have obviously thought about this before playing 95. Very interesting. Probably he did not think of this so seriously, and now he's calculating it. Let's see what happens. The best move is bishop d5 chat, but I think both are possible. Both are very human. Because bishop d5 attacks the rook, so that's definitely possible. But it also exchanges more pieces. So let's see what Vidit goes for. एक पॉइंट बोलता है 10 के सब्स होंगे, एक पॉइंट 10 के सब्जेक्ट करता है, what a time to be alive. Exactly भाई. Exactly. Stars and like GT or any other series of videos, subs count will increase. भाई करेंगे. I think 100 के हो जाएगा. Let's hope so. पूजा करो या काला जादू भाई. Of course पूजा भाई. So many pieces traded, does that lower the chance of winning? Yes. जितने पीस एक्सचेंज होंगे उतने ड्रॉ के चांसेस बढ़ जाते हैं. That's very important. But a big but. जब तक के लिए टेंशन है ना इस पॉन की, not castled, this bishop not being developed, तब तक के लिए कुछ भी हो सकता है. Once black castles, plays bishop b7 and takes on b5 या white takes on a6, then black has proper equality. So for now, it's not clear if black is of course thinking as he played fast, but maybe he will also think, and he might make a mistake, but I hope so he does, because अगर नहीं करेगा तो if everything works out fine for black in the next 5-7 moves, जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा white के लिए. With playing for a draw, I don't think so. He does not have the, उसके पास draw खेलने की luxury ही नहीं है भाई. आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोल चुकी है कि मुझे कल गिफ्ट चाहिए, तो do you have no other choice? गिफ्ट लाना ही पड़ेगा भाई. Levon has 4 times hitting ever. True. Today checkmated with the queen sacrifice inspired by AD in World Cup. Arey, nice. Wasn't like 1 hour 10 minutes of clock. How is 1 hour 20 minutes for AD? I don't know exactly, because ये clock ना बहुत डांस करती है. ये टाइम अपडेट होता था ऊपर नीचे आगे पीछे, तो हो जाएगा ठीक. It's still balanced by everything is balanced. This position is just equal, of course. There's no advantage for any side because knights have vanished off the board, and that usually means a simple position with the bishops. Bishops सीधा चलते हैं भाई, सीधा diagonally, and knights are tricky pieces, so knights have been traded off. Is taking on d5 possible? Yes, it's totally possible. You attack the rook, and black will probably have to play a move like bishop b7. Because if you try to move the knight, I take the rook then. So bishop b7 played, and after bishop b7, queen b7 is all fine. And white can also play queen e4, because if you take on b7, then queen b7 attacks your own rook, and suddenly white is lost. So queen e4 would make more sense. Or you could of course just take on e5, also very much possible, put some pressure on g7. Black will of course castle, but then I don't see how white is better here. I mean, it's just slightly better for black if anything. So Vidit did not play the best move, knight e5, and now he's suffering a little bit. After bishop d5 chat, bishop b7, you want to save your rook, and that's the only logical move. ये चीज का टाइम क्लॉक नशे में है क्या? 5 मिनट से 20 मिनट पे अटक गया है, या वो नशे में रहती है यार. वो उसका एटलीस्ट मॉर्निंग का टाइम नहीं है नशे करने का, शाम का टाइम है, सो इट्स ऑल फाइन. If you could give up your queen for a rook and bishop, would you do it? Not really, especially not in this position. जहाँ पे the bishop is not, I mean, yeah, the bishops are strong, but with no knights on the board, I will take the queen. Wheel time is 53 minutes. क्या बात कर रहे हो? अरे भाई समय का फोन आ रहा है यार. क्या बात है? यो समय भाई, बस स्ट्रीम कर रहा हूं भाई. बोलो. हाँ बोलो. अभी स्ट्रीम पे सुनाई नहीं दे रहा किसी को, लेकिन अच्छा हाँ बोलो. नहीं बोलो, कोई चक्कर नहीं भाई, स्ट्रीम तो खुशी हो जाएगी. हाँ कमेंट्री कर रहा हूँ भैया, कमेंट्री कर रहा हूँ. ठीक है चलो, ठीक है. ओके बाय.
भाई समय का कॉल था, हैंड एंड प्रिंट के लिए बुलाया था, चलो अपॉर्चुनिटी मिस्ड, नेक्स्ट टाइम। एनीवे, सो चैट, लेट्स फोकस ऑन द गेम। कॉल समय उसी का कॉल था भाई, उसी का कॉल था। कॉल समय क्या, उसी का कॉल था भाई। विदित सुसु करने गया लगता है यार, विदित का सुसु शेड्यूल को बहुत पता है, वेरी इंटरेस्टिंग। यू नो अ लॉट अबाउट विदित सुसु शेड्यूल। ओके, माय बैड, टंग ट्विस्टर है भाई ये तो। गो फॉर हैंड एंड ब्रेन, नहीं भाई कमेंट्री करना जरूरी है भाई, ऑफ कोर्स। गैरी साइन बुक मिस्ड, अरे 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 अच्छा, ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कॉल समय ऑन स्ट्रीम, यार he's already having his own stream. By the call विदित, शाबाश। ये कौन था कॉल विदित वाला? नमन गुप्ता जी भाई, आपको तो यार शाउट आउट भाई, वेल डन। Is with low on time? Yes, he's very low on time because he has 53 minutes per according to chat. Levon might overtake Caruana if he wins today. To be honest, I don't care who Levon overtakes यार, no offense, but I just feel कि यार विदित को जीतना है यार। लेवॉन भाई तुम आज हार जाओ, बाद में तुम जिसको ओवरटेक करना है, उसेन बोल्ट को ओवरटेक करना है, जिसको ओवरटेक करना है करो भाई, एंजॉय करो लाइफ में यार, मतलब तुम पार्टी करो, बस आज हार जाओ भाई, आज के दिन हार जाओ बस। सिग्मा मेल टिक्कू भाई, सिग्मा मेल क्या है इसमें? दोनों स्ट्रीम कर लो। नहीं यार, वो भी कुछ और कर रहा है समय। कॉल फिशर, ओके ठीक है भाई, और आई डेफिनेटली he took on d5, now that's the best move, that is the best move, but unfortunately for Vidit that leads to a lot of exchanges, and now he has to find queen e4, very important, he has to find queen e4 after bishop b7. Let's see how fast he plays, let's see how fast he plays, because very important, if Aronian plays really fast तो ऐसा होगा कि भाई ठीक है, मतलब then he knows तो स्ट्रेस है, अगर he plays slowly तो it's fine। वर्ल्ड से थंबनेल लगाना आपसे सीखना चाहिए भाई, थंबनेल नहीं, उनको लाइटिंग लगाना मुझसे सीखना चाहिए भाई, लाइटिंग उनकी इतनी बेकार है, थंबनेल तो चलेगा। बाय द वे ही प्लेज वेरी क्विकली, बिशप b7 played, and now VD has only one move, queen e4, he finds queen e4, well done, queen e4 played by VD, very well done, and now VD is slightly better chat, he's slightly better, let's go, come on। But yeah, lot of exchanges, and chat, you can predict these results. You have a link in the description. उसको जाके तुम predict कर सकते हो. You can win a diamond membership. Very important. Oh, Aronian snaps off the bishop in 1 second. Queen takes d5, and he castles in a second. भाई Aronian in his prep. यार ये prep में क्यों आ गया बंदा? And now bishop e5 only move. If queen e5, there is bishop f6, and suddenly VD is lost. He's completely lost because, for example, queen to, I don't know, f5, then queen b5, and you can't even castle because of queen e2. So only move for VD. He takes the knight with the bishop. Very important move. Bishop f5, defending the pawn on b2, and now he should have a side. भाई Aronian रट्टा मार के आया भाई, क्वीन b5 खेल दिया भाई, 1 सेकंड में रट्टा मार दिया भाई इसने। भाई क्या आदमी Aronian भाई, क्या आदमी है भाई। क्या आदमी है Aronian भाई, क्या आदमी है भाई, पूरा रट्टा मार के आया भाई। कोई इसकी किताबें छूतो, कोई इसके चूरन छीनो भाई। चतुर रामलिंगम एक्सपायर्ड, Aronian भाई बिल्कुल सारी की सारी बेस्ट मूव्स खेलते हुए भाई, चूरन छीनो कोई चूरन। Yeah, I know, not many pieces chat, but chat, the plus point is VD is still slightly better. And now I will ask you chat, why is VD slightly better? Can you answer me chat? Come on. Why is VD slightly better here still, even after Aronian playing all the engine moves prepared, VD is still slightly better. Why is that? Come on chat. Yeah, Pranali, remember, yeah. Yeah, so बहुत सारे important things. First of all, the most important element is the pawn islands. Well said chat. White has 2 pawn islands, black has 3. And more importantly, Aronian taking revenge of 13 match with Anand. No, ये revenge नहीं होगा भाई. VD is fine. VD cannot lose this, by the way. And the only weakness White has, the pawn on b2 is well defended. Very important. The only pawn on b2, the only pawn White has is well defended. So I feel there is no way on the planet ki matlab this pawn can be attacked easily. Black ko bishop f6 खेलना पड़ेगा. That will weaken up his king. So that's not really possible. So White defends his weakness. Now after defending this pawn, he will castle.
And if white can, if let's say white could manage magically castle here, he would be much better. But he can't castle right now because the e2 pawn is hanging, and suddenly black can win this pawn. So that's why white has to be a bit careful. But I do feel that white is slightly better. He can even give this pawn. Yeah, it's not a big deal. He can give this pawn also. So Vidit is still slightly better. No, Anik bhai, this is not a draw. If I was white, I would be really happy because I have a weakness to attack. This bishop is... Okay, chat, question for you. Which bishop is stronger? The bishop on e5 or bishop on e7? Come on, chat. Can Aronian take advantage of the fact Vidit hasn't castled yet? Ashit bhai, he can, but it's white to move right now. And to be honest, I could still castle. And if you take the pawn on e2, let's say you're very, very greedy. Now I play rook f1. Let's say the queen goes back. I don't know. Queen h5 feels like the most natural move. I could now play queen d7. And I have a lot of compensation. And surprisingly enough, the best move for black here is bishop f6. Crazy, because if you play rook e8, chat, what is the winning move for white? Come on, chat. Find me the winning move for white. Find me the winning move for white. Come on, chat. Time is not so important, chat. They've already played 19 moves and they have 50 minutes. Time is enough. Time is enough. What is the winning move for chat here? Come on, chat. Winning move for white. Yes, bishop goes to d6 or c7, anywhere, and basically you pin this bishop and white is completely winning. So that's why after the move queen d7, black has to play bishop f6, and you take and pawn takes, and even a pawn down, white is better here. So VD has his chances here. He can simply castle, but the only question is, he is not prepared like this. He has not prepared this at home. Aronian has. Aronian ये घर से रट्टा मार के आया चतुर रामलिंगम की तरह चूरन खा के. So he has to basically find this over the board. Will VD find all of this over the board? That's the most important question. Very important. Levon will not make these mistakes. DL, if VD plays all the best moves, Levon will have to go for this at some point. Vidit is slightly better because his weakness is defended. He has the extra central pawn. Imagine these pawns being pushed in the endgame. They will gain a lot of space. This pawn will be weak. This pawn I can play later on rook a2, rook ha1, and simply take this pawn for free. And this bishop cannot be attacked. Simply cannot be attacked. And we might reach an endgame jahan pe 4 versus 3 hai, but we will have some edge in the endgame as well. So I do feel white is better, clearly better here. But yeah, Vidit has to find those best moves. Not so easy to figure out over the board. Bishop b7, queen b7 Aryan, then the rook on h1 was attacked and there were too many pieces hanging for white. That was the issue. Realistically, it's a draw. Better not to unnecessarily give hope and have disappointment. Indian Shah Bhai, the thing is, if he draws, he's out. He cannot win this pool. Absolutely, he cannot win this pool. So if he draws, then fine. We can chill around. VD ne draw le liya hai. Kal bhi draw le lega. But for now, he has hope. He's better. And we have to cheer him on, I think. E3 is not, I think, the best move, chat, because now you no longer can castle. The queen cuts your king completely, and castle is not possible after rook f d8. Black takes the initiative now, so we cannot play e3 unfortunately here. Let's check out. Oh my god, इसने e3 खेला. Let me refresh this once. मैं डर गया था इसके लिए. Can't Dubov defeat Aronian? He can, bhai, but that's not in our hands. I think the form Aronian is playing in, he will easily draw against Dubov. And if he draws against Dubov, then VD has no chances. So let's check out the game of Harikrishna now for a second. Yeah, nothing has happened. Black has just played rook e8. And nothing special has happened in that game. Only one move played. And we have already played 19 moves, chat. 19 moves. Mod poll आज नहीं होगा भाई, कल परसों में करेंगे. Show Hari game, he has more chances. I am not sure about the DL bhai. I'm not sure if he has good chance, more chances than Vidit right now. Because यहाँ पे clearly only one guy is, ahead of VD, and if he defeats him, he equalizes. वहाँ पे 2 people are ahead of Harikrishna already, so it's kind of balanced. Chat time का कोई चक्कर नहीं है, ये because 19 मूव ऑलरेडी खेल चुके हैं. Long castle कह रहे हैं Jonathan भाई. Long castle. Chat, can you guess the evaluation? The evaluation is already -2. इस नंगे किंग की जो हालत होगी, जो बरसातें होंगी इसके ऊपर, रेनकोट नहीं बचा पाएंगे अनफॉर्चुनेटली. नो प्रोटेक्शन विल हेल्प हिम लेटर ऑन. सो किंग को यहां नहीं लेके जाएंगे भाई, किंग को यहां लेके जाना है. वेरी इंपॉर्टेंट. कैसल इज द बेस्ट मूव, चैट. बिशप c3 और कैसल्स. लेट्स गो, कम ऑन, लेट्स गो व्हाइट, लेट्स गो भाई, लेट्स गो. -5 इज प्रीटी एक्यूरेट. He castles. Yes, come on. He castles. Awesome. He castles. Come on, Aronian.
पॉन लेना, ले 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 लेना, मारना पॉन पे, पॉन मार पे, हिम्मत है तो, हिम्मत है तो पॉन मार, हिम्मत है तो पॉन मार, हिम्मत है तो पॉन मार, मार भाई तू पॉन मार भाई, तू मार भाई, तू पॉन मार, कम ऑन भाई तू पॉन मार। उन्होंने अभी स्टार्ट किया होगा स्ट्रीम अक्षत भाई शायद। हेलो हेलो साकिब भाई कैसे हो? I'll do a recap very soon. Let's focus on this moment for a moment. I'll go through all the games once more. अमित को हारते हुए देख, अरे नहीं नहीं भाई, आज जीतते हुए देखना भाई, आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। पॉन मारने से क्या होगा, हमने एक वेरिएशन देखी चैट, आफ्टर क्वीन e2 white gains a slight edge after rook f e1, queen h5 and queen to d7, the bishop is almost trapped, rook e8, bishop d6 wins for white, so bishop f6 takes, and in such an endgame जहां पे king नंगा है, white will always have an edge long term. For example, rook to a4 already threatening rook h4 and rook g4, it's very strong. So come on भाई Aronian, मार दे भाई, pawn ले ले, ले ले भाई, pawn ले ले, pawn is good for health, ले ले। Why is having advantage according to bar? Because white has a typical advantage in जिनसा भाई, कोई ऐसा वो typical नहीं है कि मतलब he has a clear edge. Bishop g7 कैसे यार? g7 is this square. मॉड पॉल आज नहीं होगा भाई, भाई व्हाइट पॉन डाउन भी तो है अमित भाई। देखो अगर ये पोजीशन आती है, ये पॉन एक्स्ट्रा पॉन की वैल्यू क्या है? ये उन लेटर्स की तरह है जो मेरी एक्स ने मुझे लिखे थे, दे हैव जीरो वैल्यू नाउ। So clearly this pawn is useless. Black would rather not have this pawn, ताकि मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है pawn हो ना हो। Oh, he did not take the pawn. Levon ने pawn नहीं लिया भाई। He knew it's dangerous. He knew it's dangerous. He played rook f8, and now VD is still slightly better. Let's just play the move bishop c3, defend our bishop carefully, and now we can start pushing our pawns. Come on भाई, e4, e5, e4 खेल सकते हैं maybe. come on, we need the spirit bomb भाई, spirit bomb की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ पे अपना माइंड भी चलेगा भाई, माइंड भी चलेगा। मूव ऑन फ्रॉम योर एक्स, अरे भाई किसी काम तो आए ना, कंटेंट के नाम तो आएगी, काम तो आएगी। ड्रॉ ऑलरेडी, घंटा ड्रॉ भाई, घंटा ड्रॉ, ट्रस्ट मी ऑन दिस इज नॉट अ ड्रॉ भाई, दिस इज नॉट अ ड्रॉ। I would be very happy with white again if I had this position against some grandmaster. I am not losing this, that's absolutely clear. मतलब I can draw this or win this, I will not lose this. Of course I'm most likely draw ही करूंगा, but Vidit is of course very strong, so he can win this. I know spirit bomb भाई, DBG fan भाई, DBG fan OP of course। बीडी जीत गया तो सिलेक्ट नहीं, अगर बीडी जीत गया तो ही इक्वलाइज विद लेवॉन, उसके बाद उसको केमर को पेलना है, केमर को तो पेल ही देगा बिकॉज लेवॉन हैज ऑलरेडी प्लेड अगेंस्ट केमर विद व्हाइट पीसेस, सो दैट मींस कि भाई he can try to win against Kamer and he might even take the lead from Levon. Come on भाई, come on कर दे भाई, जादू कर दे, तेरा जादू चल गया। come on come on, let's do it man, let's do it come on भाई, let's do it भाई let's do it। Why is Val showing it's almost equal? I'll tell you the Val is showing it plus 0.5 and I agree with it because white has clearly one weakness defended by the bishops, it cannot be attacked easily, and now you have two weaknesses जो आसानी से डिफेंड नहीं हो सकती। बेचारी रानी को डिफेंड करना पड़ रहा है, रानी को किंग से टाइम स्पेंड करना नहीं कर पा रही बिकॉज प्यार से डिफेंड करने में लगी है। शी इज अ सिंगल मदर, उसको इतने सारी जॉब्स, डबल जॉब्स करने पड़ रहे हैं जस्ट टू काइंड ऑफ सपोर्ट हर किड्स एंड शी इज अंडर ह्यूज स्ट्रेस राइट नाउ। एंड जो किंग है वो घर बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहा है। So unfortunately here black is under huge pressure and white pieces are very well balanced, king is very safe, queen is active, bishop is active, rooks are coming into the game very soon and I think white is just clearly better. Yeah, Levon has more time but I think because 20 moves have already passed, यहाँ पे टाइम का कोई चक्कर नहीं है। मिसोजिनिस्ट क्या है भाई, मतलब मैं तो बता रहा हूँ कि ब्लैक इज बिट मिसोजिनिस्ट, मतलब अपनी बीवी से काम करवा रहा है, खुद काम नहीं कर रहा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। अरे श्रीनिवास भाई, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब भाई, इट्स सो गुड टू वॉच अ कमेंट्री हियर टू वॉच वीडियो विल, लेट्स गो। यस श्रीनिवास भाई, लेट्स गो, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब भाई, लेट्स गो। आज टुडे इज द मोस्ट क्रिटिकल डे, इफ वीडी विंस टुडे he basically equalizes and he will be the most likely to qualify from pool C, that's how crazy it is, so let's see भाई, आज बहुत important है। thanks Anshu भाई for the kind words। Kings watching Game of Thrones, अरे जो भी भाई, Kaioken level 2 required, अरे भाई हाँ वो चीज तो है। If VD wins, it will be damn interesting। अनिक भाई, because Dubov को हराना is much more difficult
than let's say Kamer को हराना, and VD still has white pending against Kamer, VD will be the most likely to win, and VD's black will come against Dubov, जिसके against वो draw तो कर ही लेगा भाई. Dubov को तो वो आंख बंद करके छोटी उंगली से भी हरा दे. So I think he will draw against Dubov, he will defeat Kamer, and Aronian will struggle to defeat Dubov now. He will struggle to defeat Kamer also because he'll have black, and VD might just win this. Come on भाई VD. लेवॉन तो रट्टा मार के आया भाई. रट्टे खत्म होंगे भाई, जल्दी खत्म होंगे. चतुर का सिलेबस खत्म होगा, ये आउट ऑफ सिलेबस गेम जाएगी बहुत जल्दी. इतना मत बोलो जिंक्स हो जाता है. अरे जिंक्स नहीं होता भाई, जिंक्स नहीं होता भाई. अच्छा सच्चे दिल से बोलो तो भाई जिंक्स नहीं होता यार. फोकस इक्वल हरी गेम. यार लेट्स गो हरी. द थिंग इज हरी गेम में कुछ हो नहीं रहा यार, कुछ हो ही नहीं रहा, बहुत स्लो चल रही है यार. एक मूव चलिए बस C3 तरफ से, and of course the idea is to at some moment go D4, and yeah, he plays rook B8 defending the pawn on B4. If you take, I'll take with the rook, and yeah, that's pretty much it. The knight of course wants to go to C4 or F1 and G3 slowly. So let's go to the game of Hikaru for a second. Oh भाई, crazy position in Hikaru's game by the way. ये कैसे हुआ? Knight E5, and by the way chat, oh this was a mistake by Hikaru. So apparently queen side castle was the best move, but he played knight B3, and black played knight G6 is the best move, and black is better. Hikaru is much worse now. Interesting. Oh bhai. Chat. Crazy position. Can you find the best move for black? जो यहाँ best move निकालेगा भाई, उसको खड़े होके salute. उसको खड़े होके salute. Can you find the best move for black here? It's just completely insane. Completely insane move. Find the best move for black here, chat. Come on. Knight H4. Okay, interesting. F5 would be really bad, by the way, opening up your king. Castles possible, yeah, but not so sure. Okay. कोई नहीं निकाल पाया अब तक. कोई नहीं निकाल पाया अब तक मूव. Yes, we fed. शायद इंजन से देखा आपने, मुझे पता नहीं. Bishop to F8 is an insane move. The idea is to play bishop h6 and try to go queen d2 later on, and even just block the white king from castling. Crazy idea for black, bhai. Crazy idea. So that's one of the best moves. Bishop e7 is also a good move here. That's also the similar idea to go to g5. But at first, bishop f8. Insane move, man. Insane move. So craziest move is queen d1, I think. Yeah, I mean queen d2 could also be it though. So yeah, bishop f8 too is a crazy move. Bishop is also possible by the same idea to go to g5. So let's go to the game of Vidit now again. 0-9 chat. Levon to e2. बुलाती है मगर जाने का मन नहीं. ये कौन सा गाना है भाई? What of a video game? Kshitij bhai, VD is slightly better right now. He has the better pawn structure, and he has, well, I would say the slightly safer king, because he has 4 pawns and black only has 3. For example, if the queen goes to g4, then suddenly, you know, there's some mating ideas also. एक unpopular opinion, your commentary is better maintenance. I hope you become an IM so people can. Sahil Patawari, thanks for the kind words. I think Saga में मेरे style का difference है. I love his commentary as well. Maybe it's like मतलब because I am 2200, I learn more from it. Maybe that's the reason. But I do love his commentary. But thanks a lot for the kind words. Really means a lot, bhai. Penchi, thanks a lot for streaming. Of course, yeah, of course. Naka is playing well though. It doesn't feel like he left classical so long ago. That's true. He has not played a single classical tournament for 2 years. That's crazy. 2 साल से आपने 2 साल से अगर आप साइकिल ना चलाओ तो भाई साइकिल चलाना बंदा भूल जाता है. तो यार ये तो क्रेजी है. इतना रट्टा क्यों जरूरी है? He just has to play with situation, right? Another thing is, if you try to figure out everything over the board, it's like मतलब you will probably struggle because you will not find it over the board and you will go low on time. That's why they come prepared from home, ताकि they can save time on the clock. They will most likely still find the best moves, but more chance of going wrong. And by the way, VD has played the best move, bishop c3. And if black now takes, it is the exact same situation. In fact, this is completely lost now. Chat. Now let's say rook f1 and let's say queen, I don't know, to g4. What is white's winning move here, chat? How does white win here? Pawn takes is still better for white. Yes, Ashlesh bhai. So why is it better for white? Come on, find it for white. Rating just a number. Sahil bhai. हाँ साकिब भाई, but वो number मेरा थोड़ा कम है बाकियों से. Engine थोड़ा कम है मेरा. Yes, rook e7 exactly, and white simply wins because you cannot take back the rook because rook e7 would lead to queen 8 mate, and that is just game over. So black cannot still take the pawn. Very interesting. And the problem here, chat, is if I ask you, black bishop के पास square कौन सा है? Just think about it. The black bishop has no squares. I mean, the only good square it has is on f8. Just imagine, it has absolutely no squares. Crazy bhai. It has no squares on the board. I mean,
it never happens like this, matlab, but crazy. And black should probably just play a move like h6 or something. I don't know kya khelega wo. Yeah, but what is bishop d8 doing? I mean, it's just cutting off the rooks. Yeah, matlab, bishop d8 already, this looks very awkward. Oh, एक second, bishop d8 rook is hanging, bhai. You can't even go bishop d8. Chalo, bhai. Srinivasan bhai, thanks for the chat, bhai. Means a lot, bhai. Any suggestion in terms of how to study these games? Do you suggest to memorize these great games until certain moves? Not memorization, bhai. I would suggest the commentary helps. So what you could do is listen to my commentary or anybody's commentary. You could try to understand the logic behind it, and then try to go through the game and try to recall and try to, this time, instead of in fact trying to, not trying to recall, but trying to understand what the logic is behind the moves, and you will have the advantage that you've done it before on the stream itself. So you hear on the stream first, then you maybe look at the game, let's say 1 week later, and try to understand now why these moves were played, and you will have the benefit of being, understanding it before. So that's how you kind of retain that for long. Thanks a lot, भाई. What's that? Subtle promotion, भाई. कौन सा promotion किया मैंने? मुझे अभी समझ नहीं आया, भाई. Honestly, समझ नहीं आया. Hey, sorry for being mean earlier, but I feel Lorenz is a stronger player. Mean earlier, आप mean थे क्या? मुझे पता नहीं है, भाई. आप mean थे. Mean girl थे क्या? Big fan. Vidit queen and bishop laser 22. Exactly, भाई. ये bishop को देखो, भाई. ये bishop क्या piece है? First of all, it defends the huge weakness in white's game. It also attacks the black king. And this bishop is the difference between a draw and a win, basically. So, ये bishop विदित का pride and joy है. इसका एक मतलब बोलते हैं ना, किसी के पास कुछ बढ़िया होता है लाइफ में, उसको बचा के रखना है. ये वही है, भाई. ये वही है. Okay, that's done. Levon still in prep? I don't think so. I think his prep might have run out by now because this is already 21 moves deep. कितना ही रट लेगा भाई? कितना रट लेगा? मतलब चतुरामलिंगम की लिमिट भी 16 मूव थी. So I don't think he can remember so much. Let's refresh once and check it out. काय का लॉजिक इंजन देखो और जीएम को ट्रोल करो. एवरी अदर किड इन चैट. ओके, प्लीज गिव ओवरव्यू ऑफ ऑल द गेम्स. लेट्स गो थ्रू ऑल द गेम्स वन बाय वन. चैट एक बार सारे गेम्स चेकआउट करते हैं, देन लास्ट में गेम पे आते हैं. Quick round of all the games. Yeah, e5 player black, that's a very common theme in the Nimzo. You try to break white center one by one, and black is refraining from capturing it immediately because bishop खुल जाएगा, similar to what VD has in this game. ये bishop देखो, 2 pawn सामने है और VD का bishop पूरा खुला नंगा नाच रहा है वहां तक, h8 तक. Very important. So, roughly balanced in this game, Gishchuk's game. We go to the game of Hikaru now, and Hikaru, after queen f3, he played bishop e7, which is a7, which is a bit weird, because I do understand the logic of trying to come to this diagonal, but okay, this is also very interesting, still roughly balanced. So equal Hikaru's game. Now we go to Oparin against Fedosif, and here white is trying to play b4 instead of d4. Both are possible, but b4 makes more sense because d4 has more, control for black. So he's trying to gain space on the queen side, makes a lot of sense, roughly balanced, of course. Now we go to Rapport against Vodacek, and this looks like a crazy game. I think white is definitely slightly better because black has an isolated pawn, and there is no attack for black because queen is passive, rook is on c8, there's no attack for black, and white is just slightly better because of isolated pawns. So I expect Rapport to win this. We go to the game of Daniil Dubov against Vincent Kamer. भाई Dubov is winning. Dubov is winning. तो मतलब कि Dubov भी मिक्स में आने वाला है भाई. Dubov is much better. भाई नाइट को देखो d6 पे. भाई केमर जी, भाई क्यों सबसे पिल रहे हो यार? ड्रॉ कर लो यार. फाइंड द ड्रॉ समहाउ. सो वीडी को अब जीतना तो और भी जरूरी है भाई. अब तो जीतना और जरूरी है. सो Dubov is much better now, chat. We go to the game of Dominguez against Wesley. So, and भाई Wesley is trying to attack Dominguez like crazy. भाई सारे पीस इकट्ठे कर लिए हैं. So Dominguez has to be really careful now, even though position is balanced, but Wesley is attacking. Finally, Harikrishna against Shirov. Nothing much has happened after Rook B8. We saw this in the exact same position. And finally, we go to this game. जहां Levon finally सोच रहा है भाई. Finally, he's thinking. Thank God for that. Gishchuk has more time than his opponent. Yeah, I saw that. It was crazy. VD is weak in time management. He has not played so well in time management, but for today I am not so worried, chat, because 21 मूव हो चुके हैं, 19 मूव ही पेंडिंग है, and he has like 56 minutes on his clock, मतलब इंक्रीमेंट के 10 मिनट ऐड करके बहुत टाइम है. A5 played, chat, so black obviously wants to play A4, A3 and trade this pawn, ताकि his weak pawn is exchanged for white strong, not strong but not a weak pawn. So that's black's strategy, and then he will have a passed pawn on the c file. That's black's plan. So white has to, of course, develop very quickly.
For example, e3, rook f d1, queen, maybe to g4 somehow if it's possible. That should be white's plan. Also, rook a3 is also possible, trying to simply prevent these moves. Yeah, this was the Indian move, chat. He played the best move, of course. केमर निस गणेश से इंस्पिरेशन ले रहा है यार, प्लीज केमर भाई काहे को ये सब कर रहे हो भाई, प्लीज. Everyone is thinking this is a draw. I don't think this is a draw. White is much better. Kalpesh bhai, you are kind of correct there, and the difference lies in this pawn versus like this kind of safe pawn versus these weak pawns, the pawn structure, and also the bad bishop on e7. This is technically not bad, but this has no squares. You can't go to f6. f8 has no use. d8 can't go because 8 is hanging. You can't go to d6, so you can't go to any of these squares basically, and you basically have only one square. All these squares are not possible, only one square available, and that's not good sign for the bishop. And it will stay the same for a long time because you can't even play c4 because the pawn is also pinned. So कुछ खास हो नहीं रहा है भाई black के लिए यहाँ पे. What's the best move here? Best move here would be developing rook fd1. Let's go. Let's try to bring the rook into the game. Even e3 is possible. Trying to save this pawn. So development is of utmost importance. Rook a2 is possible, definitely a possibility, but I would suggest why not rook a3 instead. Taki we also have the option of rook b3 later on. That makes a lot more sense to me. Also, rook can come to f3 later on once the bishop moves. So more flexible rook a3. But Levon playing top position move means he's still in his prep while Vidit has to calculate. Chaitanya bhai, I'll tell you why this is not so important now. Because this is a very quiet position. ये बहुत quiet position है. And इस पोजीशन में क्या होता है, इंजन प्रेफरेंस की फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस इतना डिफरेंस नहीं होता. If it's a tactical position, ये sap, वो sap, ये गया, वो गया, then suddenly the difference between the first move and the second. For example, if you go to this position, यहाँ पे या यहाँ पे the difference between the first move queen e4 and the second move is plus 0.2 and minus 5. So it's a huge difference. But now in this position, even if Vidit plays the second choice, the third choice, it's not a big deal, and it's not a big deal. So Aronian's prep is not going to help him too much here, and I feel this was really bad. I feel Aronian kind of, honestly, to use the correct word, fucked up a little bit, because I don't think he'll be happy with this position, honestly. I don't think he's happy. I think now that he's thinking over the board, he will probably realize it's not easy for him to play this position. Vidit's game accuracy. Accuracy, let's check it out. Accuracy is 98.6 for VD and 98.6 for Aronian. Red kiya hai dono. Why not b4? b4? I mean ab4 free pawn. Free pawn. People think Super Gym cannot find best on this. Yeah, I mean, sometimes they cannot, Rachit bhai. Sometimes it is true. It can be difficult. But I feel even the second best move, the third best move is all fine. Why not g6, whichever? Yeah, so the problem with g6, chat, I think it's very obvious. So let's say black plays g6, chat. What do you play, chat? White to play. What is white's best move? Very clear move for white. What is the move, chat? Because that's a good plan. If black had 3 moves, yes, very good. But now what does white play? Yeah, he's played e3, chat. He's played e3. Acha, it's not possible. True. But why would I exchange this pawn for this pawn? I mean, this is a weak pawn, this is a strong pawn. Why would I exchange this? My bishop is so well stabilized. b4 makes no sense whatsoever, I feel. But my bishop is, yeah, so not b4, chat, queen to e5, threatening mate, and now black has to play f6, and that... ये bishop ने क्या सपने देखे थे, क्या से क्या हो गया? Queen 6 check, king f8, bishop f6, and black can pretty much resign. So that's game over. So let's go back. So therefore, this is a blunder. Yeah, I know it's not a free pawn, chat. I made a mistake, but unfortunately, the problem is we are just exchanging our pieces. For example, now, chat, can you find the best move for black? What is the best move for black? Come on, chat, find the best move for black. Iron the rook is hanging. So what can we do about it? What can we do about it, chat? Come on. Rook hanging hai, to kaise bachaye usko? Rook a d8. We attack the queen. And once the queen moves, let's say queen f3, now I capture and black is winning. So unfortunately that does not work. And even if this was not possible, man, even if this was not possible, let's say b4, I feel ki matlab black is absolutely fine here. He can just play a move like a4 and it's fine. By the way, after e3, a4 played by Levon, which is the best move in the position. Crazy. Ishan bhai 9:30 तक extend कर दो उसको यार. Keep it till 9:30, chat. Chat, you can still 9:15 तक कर दो. You can still win a diamond membership. You can use the link Ishan has shared, and you can predict the results for today, and you can win a diamond membership. 9:15 तक कर दो भाई. Just came who's better right now. VD is slightly better, chat. And the idea for black is, of course, to somehow try to trade these pawns. Right now, it's not really possible. 9:15 कर दो भाई. 9:15 कर दो.
Rook a3, yes, Rook a3 is possible. And chat, यहाँ पे हमें करनी है weakness create. We want to create a weakness. So what is the very subtle way? What is the very, I would say, very Divya way to kind of create a weakness here? What do you think, chat? By the way, Vidit played Rook fd1, which is the best move in the position. But what was one more way to play for VD here? कल कौन जीता prediction? कल पता नहीं है. I think ईशान को पता है कौन जीता है. मैंने देखा नहीं. Need one challenge where we can win actual diamond. Anisha, that's true, but I think only Magnus can afford a real diamond. So another reason to kind of go and ask him out. H4, exactly why. You try to push this pawn all the way ताकि ये pawn थोड़ा सा धक्का लगे और फिर हम फिर से वही move खेल के मेटे लगा दे. So very important. The H pawn is a great attacker, भाई, great attacker. श्रेष्ठ ने 8 out of 8 किया था भाई, crazy श्रेष्ठ भाई, crazy. So, but VD played Rook fd1, also a very good move now, and he can also, of course, play h4 later on. It's also possible. Rook a3 is possible, chat. It's also possible. I feel it's a very good move. Try to stop this pawn in his tracks. But I feel Rook fd1 and h4 were better moves clearly because they are more active, more proactive. आप सैंडविच खाओ फिर प्लीज. सैंडविच आएगी भाई, आएगी सैंडविच, बहुत जल्दी सैंडविच भी आएगी. What's Divya? Divya is an Indian team player. She played the Olympiad 2019 में. हेलो टिक्कू दा समोसा. अरे मेरा समोसा चैट में. अरे मेरे समोसे, क्या हाल है भाई, क्या हाल है भाई, कैसे चल रहा है लाइफ में? Bishop to d4, but what is the idea of bishop d4? Black will of course not take and blunder his queen. He will simply defend the pawn somehow, rook c8, I don't know, and or even just queen b6 actually. Mod पर आज नहीं होगा भाई. दिव्या देशमुख, yes भाई, yes exactly. 100% ऐसा कोई अवार्ड मिलेगा क्या भाई? ये लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड नहीं है भाई. Divya from my city. अरे nice यार, nice. Effect on chance, ये क्या है? So what are the practical chances with it? Can he grind out the endgame with exchanging queens and a rook and maybe hoping for an active bishop? I think the active bishop is only a good bishop when you have the queen and the rooks. If I trade all the queens and the rooks, in fact, black might be the one who's better sometimes because he has the outside pass pawn sometimes. He could play c4, c3, and you take and you start pushing the a pawn. So in that respect, I feel somehow you have to keep this piece on the board. That's why this bishop is strong, because the queen can use the support of this bishop. That's why it's important, and we keep the bishop rock and solid on c3, and we start using the queen or the rook and for an attack at some point. If the game draws, then VD has almost no chance of kind of winning this pool. So he has to win today, bhai. He has to win, and he can win. He has a great position, bhai. I think very practically better position. The best move, I mean, I think Indian is useless here. I'll tell you why. Because यहाँ पे बहुत options है, बहुत options. You could play h6, you could play I don't know, rook a d8. You could play many moves, many bishop f8. Like all these moves are roughly balanced. There's no difference because this is a very quiet position. That's why I said कि उन्होंने prepare नहीं किया हुआ था, because this is not some tactical position जहाँ पे एक ही move अच्छी है. Can Hikaru really give away his spot if he wins? I don't know if he can, but he might. Let's see. VD का time of worry. I would not worry too much yet, because I think he has played 23 moves, 17 moves to go. I think he has 17, so it might be 8.5 minutes plus 39, so 47 minutes or so. So it's more than enough time. Chess didn't see that. Thanks for for the kind words. Who is your favorite chess player among all till date? Chess player, yeah, not personality. I would say probably Kasparov. Probably Kasparov. Even Carlsen is. I think Carlsen and Kasparov tied, I guess. If both of them perfectly at more than 90%, then this will not in a draw ultimately. If both play at 98% accuracy, it will be a draw for sure. But I think the accuracy is very high at the start of the game because they have prepared something at home. But as we move forward, the accuracy goes down and down and down. And by the time the game finishes, the accuracy might be even lower than 90 sometimes. So let's see what happens, chat. Favorite chess personality, Anish Giri. Chat, do like the stream. Let's get to 600 likes. And if you're here for the first time, subscribe kar do bhai. Hamari family mein shamiल ho jao bhai. Let's get to, I know it's a big number, but let's get to 25k as soon as possible bhai. Subscribe kar do bhai. Let's go. If Hikaru wins, why will he give a spot? He might try even if he knows he has low chances. Chaitanya, because I think he also wants to challenge Carlsen, and he feels he does not have enough time. Because if he qualifies for the candidates, he has to put in so much time, and he will have to give up his streaming for that. And I feel he does not have enough time. That's why maybe. A3 right now would not be so great because it's just losing a pawn. After A3, White can just take with the rook, and he has two attacks, and Black only has one, so that's not going to work.
how do you think Carlsen would have proceeded in the situation? I think Carlsen is like a very solid guy. He really, he really tries to prepare for his opponent psychologically. So he knows what his opponent is going to play, and he kind of prepares psychologically. So I think he will try to, of course, push the edge pawn for sure, for guaranteed. Queen b3, yes, it's possible for black. For example, queen b3 you could try, but unfortunately I could simply take this queen as well. That's also possible. And now this pawn can be weak. This pawn can be really weak. My king can come slowly and simply chop off this pawn, and I will simply be better in the endgame. So I don't think Aronian will go for this. That's very risky for black. What about rook d8? Yes, rook d8 is a very good move. I think that makes a lot of sense. You try to attack your queen. Very logical. He might play it. Why not pawn b4 2 moves ago? We discussed it, Jatin bhai. Pawn b4 was kind of a move jahan pe it wasn't doing much. Black can always just play rook a d8, attacking your queen, and then he can capture the pawn. Let's say Magnus was in a must-win situation like Vidit, then maybe h4, h5 by Magnus. Even if he was not in a must-win, he always tries to win. Like I remember Carlsen, when he was playing Anand Sir, he needed a draw to become the world champion. Anand Sir repeated moves like I think once or twice, and Carlsen did not even repeat moves even though a draw was guaranteeing him the world championship. He played till king and king. So that's how ambitious he is, and he would have totally pushed the h pawn at some moment. ब्लंडर होगा लेवॉन का भाई, होना चाहिए यार. आज ब्लंडर की डिमांड सख्त है भाई, सख्त डिमांड है ब्लंडर की. आज नहीं तो कब भाई? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर भाई. अब कम ऑन भाई, कर दे भाई, कर दे. Levon, Blender Hai Nama. Can you suggest Carlsen's best game to see according to you? There are so many, man. There's so many. His game against Kazakin in the World Championship pretty awesome. Yeah, pretty dope. You can check it out. So cool. वैसे भी Levon का एज हो गया है. हाँ भाई, एज तो हो गया. He played queen to b3. पीडी भाई, मारो भाई, मारो, 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 मारो. Let's check it out, chat. Queen b3, a b3, and rook 8, rook 8. And now king f1 is the best idea for white. But I was a bit worried about this move, bishop f6, and I feel, oh wait, takes, king e1, rook a2, and rook to b1. Bhai, white is winning this endgame. I thought I was worried about this. This is winning. मार दे वीडी भाई, मार दे भाई, मार भाई, मार भाई, मार भाई, मार भाई, मार भाई, मार दे वीडी भाई, खत्म कर दे, कत्लेआम कर दे भाई, मार दे. Because he has to take. If he doesn't take, black will go a3 now. H4 line, I think the idea was, there was no particular line there. Yeah, this kind of the idea. Ki, you can just go h4, h5 and try to push it all the way to h6, force the black pawn to move, and then go queen e5 trying to mate him. Levon draw कर लेगा, वो तो भगवान जानता है करेगा कि नहीं. वो draw करे ना करे, भगवान के हाथ में और Levon के हाथ में है. But we can of course try our best. No, so queen b3, come on यार. This pawn will be very weak, and ये pawn उसके bishop से defend नहीं हो सकता. And if black plays c4, white could always play rook d4, chop off this pawn, then chop off this pawn, and king आएगा भाई नाच के, and he will chop off this pawn. Let's go भाई. Time is not an issue today, chat. Time is not an issue, because I'll tell you why. Because he has already played 23 moves. He only has to play 17 more moves. Come on. Last 15 is pretty. Yes, bhai, do predict and do win a diamond membership. Why queen exchange? So basically, chat, ये pawn बहुत safe था black के लिए, defended by the queen and the rook. Now if you take, ये pawn defend करना बहुत मुश्किल है, and the best move for idea white is just to try to trade as many pieces as possible, and then win the king. And the idea is simply win this pawn. And there is no defense, I feel. Not easy. And if you play c4, then suddenly e4, and this is defended. And again, ये bishop की power देखो भाई, क्या ही bishop है की power है. मतलब दोनों pawn रोक के रखे हैं, defense भी करा हुआ है, and this bishop is the killer piece भाई. कितने लोगों को मिलेगा? Every day one guy, अभिजीत भाई, every day one guy. If BD wins today, it will spice up the pool, see, right? Yeah, it will make it totally wide open. VD should think, yeah, I think VD should kind of wear goggles, जहाँ पे Dubov की photo है, so he can kind of think like this, and then he can wear goggles and look at the opponent, and then he can kind of think like this, and then wear goggles and look at the opponent. I think that would really help. Hari game, brief look at Hari game's chat.
Brief look at Hari game. Yeah, so after rook b8, knight c4 takes. C6 was played and h3 now. Very symmetrical position, yeah, kind of drawish. Let's go back. Chat मेरा आ चुका है. एक सेकंड में आया. Okay, I am back with my dinner as well. Let me check भाई क्या है. अरे थैंक यू सुपर भाई. डिनर के लिए सैंडविच ले आओ वीडी के जीत में. अरे आपके बोलते ही सैंडविच आ गई भाई. आपके बोलते ही सैंडविच आ गई भाई. क्रेजी सैंडविच आ चुकी है भाई. अब सैंडविच आ चुकी है तो मतलब वीडी के जीतने का टाइम हो चुका है. कम ऑन वीडी भाई. अरे रुके 3 खेल दिया यार. इसने. अरे यार बट कोई ना चैट कोई ना. The thing is, it's still better for white. That's the crazy part. It's still better. कौन सा सैंडविच? नॉर्मल है, nothing special यार. मतलब इसमें cucumber है, some ketchup, that's it. Nothing special. Yeah, so this is also fine, chat. This is also fine because it's still better. And again, this pawn is a problem. But yeah, this is not as good as the line we saw earlier. डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना पड़ेगा. हाँ अरे भाई डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना पड़ेगा. चिकन मोमो खाने का मन हो रहा है, मंगा दो भाई. अरे मंगा देंगे भाई. यही बोलते रहोगे तो मैच खत्म हो जाएगा. नहीं भाई वीडी भाई यू शुड हैव टेकन. बट आई थिंक ओके. सो नाउ लेट्स एनालाइज चैट. लेट्स एनालाइज क्वीन d5 rook d5 and I think black would really like to play c4 ताकि he can play a3. But now comes rook a2 and if a3 pawn takes, let's say rook takes, bishop takes. And now we play something like rook d7. And I do feel white is better. But will he win this? I am not so sure, yaar. I am not so sure if he'll win this, man. So this looks like a slight drawish position to me. He can of course push, but he'll have to be very creative here to win this. So queen b3 was the best move. He missed that one. And now Vidit has to fight for his life. Come on, Vidit. Come on. Try to win this, man. You can still do it. पीयूष भाई लिंक पे जाके रजिस्टर करना है. 3 डॉट्स होंगे, इस पे क्लिक करके रजिस्टर करो. Bishop is opening in this line, lead draw. Yeah, it will open, but the pawn is still weak. The one good thing is the pawns are still weak. That's very important. That really helps. लेवन वापस हैक दे. ओके हैक दे भाई. लेवन भाई हैक दे प्लीज जल्दी से भाई. 4-3. अगर 4 versus 3 बचे and you have the bishop and the rook on the board, it might be winning. With खाली rook it's a draw. So we need the bishop. Bishop चाहिए हमें किसी भी हालत में. I am beginner in chess, best already. There's our beginner course here. You can definitely go for it. Plus bike, it will really help you. If Aronian wins today, it is over. Aronian will not win this bike. He cannot win this. He's worse. If he draws, then we need Dubov to defeat Aronian. Like it kind of becomes complicated. Yeah, मतलब ऐसे India Bangladesh से हार गई तो you want like Sri Lanka to defeat Pakistan or something like this. So it depends on other results now. So that's why winning is important. We really cannot lose this. I mean, that's very hard to believe. If he draws this, then we want Dubov to defeat Aronian. That's not so easy. That's the problem here. So come on, bhai, Vidi, come on. Yeah, he will capture the queen for sure. He will capture. He has captured, by the way. He has captured the queen, and Vidi has captured back. And now this pawn is the weakness. He really has to win for sure. That's the only hope he has. ये pawn free में खाना है. जैसे मैं सैंडविच खा रहा हूँ, वैसे Vidi को ये pawn free में खाना है. Come on, Vidi, come on, ले ले भाई, ले ले. Today draw and Vidit wins next 2 games and lost. Yeah, Luchan, that would work. But the problem is, Aronian might just win one because he's playing Kamer also. C4 played, by the way. The move I was thinking, yeah, very logical, very human. Rook L2 played, and now A3 will play very soon. Chat, लेकिन एक चीज ध्यान रखना. This is still not a draw. This is not a draw still. If we can win this pawn. If we can bring the king slowly, f3, e4, king e3, king d4, and so on. If we win this pawn, we are still in the game. And this pawn is very difficult to defend for black. He can only defend it once.
but we can attack it twice easily. So I think it's still possible for Vidit to win this, but very difficult. If Dubov even defeats, then he himself might have a chance. Yeah, he might have, but then Vidit can defeat Dubov. So Vidit will have one more chance to defeat Dubov, but he will not have one more chance to defeat Levon. That's the difference, yeah. So if Dubov goes ahead, Vidit still can equalize, but if Levon goes ahead, he cannot. A3 पे King F1. You can play King F1, but I think अगर हमें A3 खेल दिया है, so this is an active rook. We should exchange this rook, yeah. That makes a lot of sense. So we should exchange these pair of rook if possible. I feel एक rook is good enough ताकि हमारा king आ पाए. With 2 rooks on the board, our king cannot come into the center. Yeah, very important. It will get checked away. So with 1 rook on the board, the king can easily come to the center. Aronian will win this game. That's impossible. That's impossible, by the way. Aronian cannot win this. How many maze will it have to play? Okay, maze. I don't know what maze means. कोई नहीं भाई, सेकंड लेग भी है ना. हाँ वो है भाई, बट ये वाले लेग में जीतना यार. वी कैनॉट गो टू सेकंड लेग. खाली हाथ नहीं जाना भाई, खाली हाथ नहीं जाना. कम ऑन भाई. वोटिंग खुली है, बंद होगी वोटिंग. 6 मिनट और खुली है भाई, 6 मिनट और. If somebody takes 33 minutes, it's usually on the board thinking, yeah. This looks forced draw. I know we support video, but let's be honest, in Charles Grand Prix, very sim. I agree, Chaitanya, but I think the only hope he has, like I agree, this is most likely a draw. The only hope he has is to win this pawn for free. That's his only hope. Okay, and how he can do that is by bringing his king and start to gain space on the king side. That's it. If you push the pawn all the way to e5, f5, g4, that definitely gives white some chances here. There's no doubt. There's no doubt. And we have to find ways, yeah. That's what we can do now. We cannot force a win, but we try to give ourselves a chance. That's what we can do, pretty much. Refresh. Brisbane moves played on नीचे. क्या बात कर रहे हो? हैं? क्या बात कर रहे हो? लीचे से कुछ और खेला है क्या? क्या बात कर रहे हो तुम भाई? चलो नूब है क्या? लेट मी चेक चैट. लेट मी चेक. यही तो खेला है भाई. क्या मतलब यार, यही तो खेला है भाई. कुछ भी यही तो खेला है. कुछ भी स्कैम कर रहे हो भाई. कुछ भी नाइस स्कैम वैसे. जी माइस, व्हाट इज अ स्कैम? स्कैम वो है जो मैक्स का ऑपोजिट है. दैट्स स्कैम. हरी गेम. ओके, लेट्स गो टू हरीज गेम वंस. हरी गेम में d5 खेल दिया. आई थिंक द बिशप शुड probably drop back to a2 now. If he can also take actually, but that is blacks the center, yeah. So I don't want to open the c file. If you take move the bishop, this pawn is a bit weak, so I probably prefer, just going back with the bishop directly. That makes a lot more sense. Let's see what he plays though. Let's check out Hikaru's game once. ये तो crazy हो गया भाई पोजीशन. क्या ही पोजीशन है भाई, crazy. हिकारू ने क्वीन ट्रेड की, मांगी भीख लेकिन मिली नहीं. अब h4 के बाद f5 खेलते हुए पाए गए ब्लैक. Let's go to Vidit game again. ओ रुक c8 a3 नहीं खेला भाई. बढ़िया, a3 नहीं खेला चैट. जब तक वो a3 नहीं खेलता उम्मीद कायम है भाई. a3 मत खेल भाई प्लीज. a3 मत खेल. a3 मत खेल भाई प्लीज. लेट्स गो वीडी. लेट्स गो. किंग लाओ भाई, किंग लाओ. वेयर इज दिस म्यूजिक भाई? म्यूजिक हमने पेन साउंड म्यूजिक से खरीदा था. g4 is possible, but आई फील हमारा पहला काम यहाँ पे है इस पॉन को अटैक करना. उसके लिए हमें राजा चाहिए. हमारा डरपोक नहीं है, वो आएगा गेम में. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ बिशप वाज ऑपोजिट कलर फिर तो डेड ड्रॉ था भाई. फिर तो डेड ड्रॉ था, बट ऑपोजिट कलर नहीं है. दैट इज द ओनली होप व्हाइट हैज. हिकारू में सोच रहा है टेक्स चेकमेट. यहाँ पे ऐसे काम नहीं करेगा. क्लासिकल है भाई. निहाल कौन सा टूर्नामेंट खेलेगा अब? मैं घर पे एक टूर्नामेंट करवा रहा हूं भाई, टिक्कू चैंपियनशिप. तो वहां खेलेगा निहाल नेक्स्ट. अंकल वीडी जीत रहे हैं ना? वीडी को अंकल बोल रहे हो तुम?
वीडी को अंकल बोल रहे भाई, जी जी जी, वेरी बैड या वेरी बैड. Does the shark sandwich shark sandwich? I also have a croissant, by the way. Croissant. Is the rook on a2? Yes, it's active. Attacking black. King have played. He played the king. Very important. Let's go. King को काश यहाँ रख पाते एक मूव में यार. अंकल तुम्हें बोला अंकल. नहीं भाई यार, आई नो तुमने बोला, अब तुम बुरा मान गए वीडी की बेइज्जती हो गई, तुमने वीडी को बुलाया. वीडी को अंकल मत बुलाओ भाई, वेरी बैड हैबिट. मतलब वीडी को दिल से बुरा लगेगा यार. मत करो ऐसे, मत करो, किसी को मत बुलाओ. होटल में फ्री को ऐसा खाने में जो मजा है. हाँ बट अभी घर पे ही हूँ भाई. घर पे ही मिल रहे हैं. ये घर ही है भाई मेरा अभी. सेम दीवारें. क्रोइसॉन आप फ्रेंच. तो भाई उसमें क्या है भाई, बहुत चीजें फ्रेंच होती है क्रॉइसॉन के साथ साथ भी, जो हम एंजॉय करते हैं लाइफ में. बहुत चीजें फ्रेंच एंजॉय करते हैं हम. भाई कनाडा भेज दो. ओके जाओ भाई, किसी ने रोका नहीं है. टमी रिवील. यार मेरा फैमिली पैक तुम देखे क्या कर लोगे यार लाइफ में. ये फूड चैनल ज्यादा लगने लगा है भाई. फूड चैनल ही है, मैंने बोला आई ईट फॉर अ लिविंग. मैंने झूठ तो नहीं बोला है बाय द वे. लेट्स चेक आउट द गेम ऑफ हरिकृष्णा. कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ नहीं है भाई हरिकृष्णा गेम में, कुछ भी नहीं हुआ. सेल्टिफा से he played the move and bishop d6 played now. So let's go back to Vidit game. Why king on c2 is good? Because we want this pawn for free. हमें कुछ free चाहिए, and free मारने के लिए खाली rook is not enough. So we want the king as well here. See, Levon was like, भाई king आ रहा है, ये जल्दी से खेलो. देखा, this is so understandable yeah, because you want this, you want to exchange this weak pawn इससे पहले king यहाँ पहुंच जाए. And very interesting yeah, very interesting. 29 plus. Show Naka's game. Naka Sakinaka. Knight to d2. Interesting. Now bishop b8 is a very crazy move, trying to bring this bishop here. Let's see if black finds it, because so many weak dark squares. ऐसे king को मत रखो यार. इतने weak dark squares है white के camp में कि black is clearly better yeah. So let's go to this game again. Rook a5 is not the purpose, because black takes, you take, black plays, and you can't really take on a4 because of bishop d8, and you lose. So bishop comes back. So white did not gain anything out of this. He in fact exchanged his active rook on d5 for the passive rook on a8. So that's like a bad trade yeah. Imagine करो, यहाँ पे एक white का rook है, and यहाँ पे एक black का rook है. Clearly that's in white's favor, and that's the exact position right now. So let's not trade that. He played a3 in fact. Yeah, 27 moves played, chat. 27 moves played, and he has like 35 minutes. बहुत टाइम है भाई. आज तो वीडियो लिटरली स्ट्रीम भी कर सकता है टेबल बैठे इतना टाइम है. Can GM be gained in an open tournament in India? No, they cannot be. Norms नहीं बन सकते. So you have to play grandmaster tournaments. You need like people from different countries in the world to come and play. Only then it's possible. According to original Indian chess or chaturang, king could move like knight one time during the game. वो है, but यार वो different है ना. It's not chaturang. This is chess. Mom Frey Tikku, my friend Tikku, pouvez-vous parler, do you speak French? Je parle français. Oui, oui. Apyuda. I think that means a little bit. टिक्कू भाई कभी टिक्की भी खाया करो, अच्छी होती है भाई. टिक्की तो मेरे खानदान में बनती है यार. टिक्की तो मेरे नाम में ही है, खाएंगे. And Vidit has taken by, he has taken the pawn. What about जी वो खेलेंगे भाई, कभी ना कभी खेलेंगे, बट पहले अर्जेंट भाई रुक हैंगेंगे. Let's take. I think total 27 moves में से I think at least like roughly till here, like a5 a4, like 23 moves were theory, and then Aronian started thinking on his own. Queen b3 was a clear mistake. Sahil play the men's nationals. I'm not sure if I'll play right now, but I'll confirm me. Are you considering to become a full-time streamer or hybrid streamer person? I don't know. Streaming is definitely the first preference because I enjoy it. I can do it from my home. खेलूंगा भी of course though. क्या हाल चाल bro? Just join. Yo bro. Welcome. Through 8 you are very beautiful. भाई अब ये सारे के सारे French pro बन जाएंगे chat में, मुझे पता है.
हर किसी को फ्रेंच आ जाएगी मैजिकली सडनली। लेवॉन बैक रैंक वीकनेस कंफर्म, वो नूब बैक रैंक मेट हो जाएगा। अगर लेवॉन बैक रैंक मेट हुआ, अगर लेवॉन बैक रैंक मेट हुआ तो भाई हाँ, तो भाई मैं लिटरली, oh by the way, rook a3 played, bishop a3 played, very interesting. Now let's see what happens. UA2, do you play chess? Oui, yes. अगर लेवॉन बैक रैंक मेट हुआ तो भाई I would literally like punch my screen right now. मतलब नहीं यार, पैसे बर्बाद नहीं करने। I would literally I don't know what I would do, like I would do something crazy भाई। लेकिन लेवॉन बैक रैंक मेट नहीं हो सकता भाई। डेडेस्ट ड्रॉ एवर। लक्ष्य भाई खेलेगा गेम फिर? एक गेम खेलोगे जिसको लगाया डेडेस्ट ड्रॉ, प्लीज प्ले अ गेम अगेंस्ट मी, आई विल शो यू हाउ इट कैन बी वन। इट्स डेफिनेटली पॉसिबल येट। मुझे फ्रेंच आती है, E4 E6 D4 D5, नाइस। चीज ऑमलेट, नाइस। तो आपका ओनली फैंस अकाउंट डन भाई, डन। अगर बैक रैंक में मेरा ओनली फैंस आएगा भाई कल से, कंफर्म भाई, इफ दिस हैपेंस। You are black dog. क्या? If Levon gets back mated, Sahil will be. अरे भाई, if I get back rank mated, I will get my back rank mated. भाई खुश रहो भाई तुम, ऐसा नहीं हो सकता. It's not happening. Can Vidit win this game? He can, but the only hope is ये pawn चाहिए. So one plan I see is to start pushing the E pawn, bring the king to D4 and simply chop off this pawn somehow. But looks difficult, man. Looks difficult, very difficult. Yeah, I don't know how he will win this though. Not easy, man. Not easy. Probably rook A5, rook A4, then king goes to D4, but then he will give a check and start, haggling white pawns. Kuch crazy hone wala hai. I think even the chat should know that Levon has a force highlighting chess history. Yeah, but history किसने देखी है वे? History पर भी तो मैं स्कूल में पढ़ी है ढंग से. रट्टा मारते थे हिस्ट्री में क्या रखा भाई? प्रेजेंट देखो, प्रेजेंट। ऑल वी हैव इज द प्रेजेंट चैट। एब्स रिवील इफ बैक रैंक में, डन भाई, डन। सब रिवील कर देंगे भाई अगर बैक रैंक में हिट हो गई तो। फे द मॉडरेटर, मेक मी अ मॉड। नहीं भाई, नो डोंट लिसन। मुझे लोकल चेस टूर्नामेंट खेलना है, कैसे पता करूं? तो भाई ASM.in पे जाओ, हाँ मिल जाएगा। हिस्ट्री इंटरेस्टिंग, इट इज इंटरेस्टिंग, बट आई थिंक इट विल नॉट लाइक it's not more important than the present, I feel. At least we have to learn from history ताकि we can apply it in the present, I think. Bishop E7 played, by the way. I think maybe he's trying to just play Bishop F6 and draw the game, but that's not a draw, I feel. Yeah, he will not do that. अभी बैक रैंक की उम्मीद है भाई, अभी बैक रैंक सॉल्व नहीं करी उसने, अभी उम्मीद है कि बैक रैंक सॉल्व हो सकती है, मेट हो सकती है। समय के स्टाइल में बोलो क्रेजी, ऐसे बोल रहा ना। Past is history, future is mystery. अगर बैक रैंक हुआ लेवॉन तो 50 subs of Levi डन भाई। जो मांगना है मांग लो भाई, बैक रैंक हुआ लेवॉन तो जो मांगना है भाई, जो मांगना है तू मांग, खुश रहे भाई। No, we have to learn history so we don't make some mistakes and we learn from it. Exactly, Musa, that's the point. No, but we don't live in the history. We learn from it and we move on. समय बाबा इन चैट डाल दो, वो भी करवा है लेवॉन का बैक रैंक। समय बाबा चमत्कार करवा दो। ओहो, इट फील्स सो गुड व्हेन यू सी समवन फ्रॉम योर कंट्री राइज अप। लमाओ हु इज राइजिंग अप बाय द वे। गूगल सर्च हिस्ट्री विल कर लो भाई, वो तो ऐसे ही विल कर दूंगा, कुछ नहीं है मेरे उस पे। हाँ मांग लो, मिल तो रहा है, नहीं है? अरे मिलेगा भाई, तुम लेवॉन पे उम्मीद लगाओ। इफ यू थिंक लेवॉन कैन गेट बैक रैंक मेटेड हियर। नंबर रिवील डन भाई। मैं अपना नंबर, समय का नंबर, B-Stats का नंबर, नीतीश का नंबर, विवेक का नंबर, सबका लीक कर दूंगा इफ ही गेट्स बैक रैंक मेटेड, कंफर्म। ठीक है, गुड डील भाई, सब कुछ रिवील कर दूंगा भाई मैं। if he gets back rank mated. Yeah, it's good, but black can just play F6 or G6 यार, so nothing happens. नीतीश का नहीं चाहिए। नीतीश का भी लेना पड़ेगा भाई।
ऐसे नहीं, नीतीश का भी लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई। प्रॉपर्टी इन कश्मीर गिवे, प्रॉपर्टी है ही नहीं हमारी कश्मीर में भाई, उस पर आतंकवादियों का कब्जा है भाई, नॉट किडिंग। अगर चाहिए तो बताओ, बात कर चाहिए तो बताओ, एड्रेस देता हूँ नमस्ते करके आना भाई वहां पे, वो भी नमस्ते करेंगे भाई लेवॉन को एक मॉन्क दो, बैक रैक नहीं डायगोनली कर लेगा, नाइस। Unless you're a Manchester United fan, then you live in the history. अरे nice nice. This is a big number. You don't want his number. Nice. FIR incoming lol. FIR की भाई. Sharks, I want 5% equity in chessassist for 5 lakh worth of back rank chessassist. 5 lakh worth of back rank. तुमने checkmate नहीं लगाया? That sounds so wrong, सिग्मा जी. थोड़ा सा इसको फिर से पढ़े. सभी घर वाले रहते हैं वहां तो नहीं रहते होंगे यार कश्मीर में कुछ ना कुछ, but I think it's like यूजली जम्मू या ऐसी का भी रहते हैं आजकल। इज इट अ ड्रॉ? मोस्ट लाइकली मॉड दे दो भाऊ। भाई भाऊ कौन है यहाँ पे? भाऊ मुझे पता नहीं। इज इट अ ड्रॉ वीडी? ओके, वीडी इज इट अ ड्रॉ? या मोस्ट लाइकली, बट या ही स्टिल प्लेइंग। क्लासिकल चेस में बैक रैंक इज लाइक 1 बॉल पर 12 रन चाहिए और बॉलर ने दो छक्के खा लिए। हैव यू डन लाइक? यस आई हैव अर्जित भाई। आई विजिटेड कश्मीर वंस एंड देयर वाज अ टूर्नामेंट देयर बिलो 2000 कैटेगरी। आई प्लेड इन 2013 एंड मेरे किसी रिलेटिव की एक हाउस बोट थी वहां पे, तो मैं वहां रुका था 2 दिन के लिए हाउस बोट पे भी। एंड आई यूज्ड टू यू नो गो वाया फ्रॉम द हाउस बोट वाया द शिकारा एंड देन प्ले द टूर्नामेंट। बड़ा सही था भाई, मजा आता था। Your thumbnail is OP. Thanks a lot. Bye. What's the advantage that VD is having? The advantage is first of all the more active bishop, clearly. Second, the slightly weak pawn on c4, and the potential to gain a lot of space. So, but it's not enough to win. He needs more. He needs more. I have said the same joke 10 times, and I'm sure you will read this. But ये क्या है भाई? You never lived in Kashmir. I have not lived. मेरी family वहाँ रहती थी. E4, bishop f6. Yeah, but the thing is, this is really bad. I can just push e5 and the bishop has to go back now. So, or I could also take, yeah, even that is not so bad. But even I can just play e5, the bishop has to go back. I play f4, king here, and now suddenly there are some winning chances again with f5, g4, and you know so much space on the board. That's definitely dangerous. Which यहाँ पे color उतना matter नहीं करता. Of course, he would prefer to keep it on light squares. But color इतना matter नहीं करता because he wants to push his pawns all the way. So it's about gaining space as much as possible. Have you met somebody? Not yet. I'll meet him someday. By the way, rook to d7 played by VD attacking the bishop, and now king f8 will be played very soon. And chat, very interesting. f8. So should we take on g7, chat? Come on. Should we take on g7? Is it a good move? Why not? Maybe I played chess for a couple of years as a kid, and then I played as an adult. So if bishop g7, first of all, the problem is this pawn starts running. That's very important. After king g7, rook e7, c3, king d1, c2, king c1. I think this is definitely possible. But what is the problem then? Then it is possible, right? What is the problem? Rook d8 check. Yes, exactly. Rook d8 check, king c1, and now rook d2, and suddenly you can't defend this pawn anymore, and you will probably end up, you know, playing this or even this. Then he can play rook takes h2, rook c7, rook g2, rook c3, rook g3, and two pawns is a dead draw. So that's why you can't really take on g7 because of rook d8 threat. Arey, thank you so much, Ishan bhai. On stage, VD himself had gone for queen trade. This with that queen trade would be better for than the present position. Did VD avoid the position due to complications? I think he was just scared as I was in this position about, you know, if we go back. Yeah, he was scared that after queen takes, pawn takes, this pawn is kind of very dangerous. It can allow rook a2 ideas. And maybe he did not even calculate it. I think that's the issue. Usne calculate karne ki koshish nahi kari deep. If he had tried, he would figure it out for sure. I'm sure about it. वो calculate कर ही नहीं पाया because it's like intuitionally it looks very scary to have this pawn here allowing rook a2 followed by bishop f6, and suddenly there are a few pawns and you can have double pawns also to create a pass pawns. So it looks a bit scary. That's why I don't think about it. If you had, you would have played it.
And in terms of the second position, yeah, not complications, but I think he just saw this move. He was like, nah, let's not do this. And you also trust your opponent, yeah, because Aronian had been playing so well, so fast before this. He was like, यार अरुण की prep ही होगी, ये बंदा गलती करेगा नहीं. It must be his prep. It must be his prep. That was the idea here. And you kind of trust your opponent also a little bit. What happened in Hari game? Hari game is going on. We saw Hari's game a while back. Bishop d6. Since then, he has played bishop g5 and bishop e6. And I feel, chat, यहाँ पे d4 move is a bit crazy because it breaks the center while black's knight is under a pin. So let's go, Hari. Let's go for d4. Let's go for d4. d4, if takes, I go e5 and I win the game. So let's go, Hari bhai. Let's go, let's go, let's go. Again, Vidit's game now. Come on. By the way, rook d7 के बाद bishop to f6 played by black. Very interesting choice by black here. And now, I think Vidit has two choices, king d2 or bishop f6. Bishop f6 feels like the most logical. And now you don't have rook d8 check. So I think if you play king d2, I think, chat, what do you play as black? Very important. Vidit plays king d2. He's trying to come to c3 and then play rook d4 and win this pawn. What can Aronian play to draw this game? Very important moment. What can Aronian play in this position to draw the game? Come on, chat. Very important move for black. You need to know how to draw this, yeah? Not easy. C2 is possible, but not the best because c3 king c2 के बाद ये pawn hanging here and the rook cannot move anymore. So यहाँ पे rook a8 was the best move, chat. Before the king can come to c3, we go rook a8. And if you play king c3, then I can simply give a check first. Very important, because if you don't give a check, then I have rook d2 here. And I am better again. So rook check first. Like this, king c4, and now rook to a2. And again, f4 के बाद rook takes h2, and it's 3 versus 3, which is a dead draw again. So I think this might end in a draw, chat. Yeah, rook a8 is the correct move, chat. You're absolutely correct. The other idea is king d2, of course. Bishop takes c3, king takes c3 looks a bit better to me. But again, black can simply play something like g6. And if you play rook d4, chat, again, what is black's move? Very important. Again, what is black's move? Rook a8. Again, same idea. Activating the rook. You take, for example, this pawn, but then I play rook a2 and you can't really save this. If you play rook f4, king g7, h4, h5. And this position, chat, question for you. 4 versus 3 on the king side. Draw or a win? Come on, chat, batao. Draw or a win for white? Batao. Yes, draw, exactly. And that means Aronian might just draw this, chat. Vidit will, of course, push in that endgame, but it's an elementary draw, of course, at this level. And let's see how Vidit tries, because if he reaches this position, I do feel he will try to push for a while because the king will come here slowly. You will start pushing the rook here. Then you go f4, e4, e5, so on. Rook can go to f6 as well, and you will have some ideas, of course. But usually it's a draw. Elementary, my dear Aronian. Arey wah wah, ye pen pal kab se aa gaye? By the way, he's taken on f6. Very interesting. He took on f6, and now gf6. Let's see what he will play, chat. Does he have some idea here? Let's see. Now it'll be very hard to win for Vidit with group C. Only hope is Dubov. Yeah. Now he has to bet on Dubov. जिस बंदे को वो 2 बार हरा चुका है, उसी की उम्मीद में बैठेगा Vidit. अरे भाई, that is so sad. Aronian takes back on f6. Come on, let's see what happens now. What will Vidit do is an important question, chat. I think he can play a move like rook d4. Oh, he played king d2. He played my move, and rook a8 played in an instant by Aronian. I think rook d4 here was a better try, because when you play rook a8, you will have rook f4 to defend your pawn. But now rook a8 played, and now this is going to be a draw, chat, most likely. Yeah, I don't see how he can hold on. Modi ji hote to jeet jate. Okay, interesting. Not going to comment on that. Draw hai bhai, draw hai, chat. This will end in a draw, unfortunately. And that means Vidit will have to hope that Dubov defeats Aronian. Rook c7 does win the pawn here, but I can simply play rook a2 check.
King probably, if he goes to c1, try to save this pawn, then rook c2, and this should be an easy draw for black. And if you, for example, give a check and go king c3, check and king to c3, then rook takes f2, rook takes c4, rook takes h2. If anybody, black is already better here, so it should be a draw, chat. It should be a draw now. Told you, yeah, you told me, man. क्या खा रहे हो? सैंडविच है भाई, सैंडविच है यार, सैंडविच है. What happens if VD trades pawns and then trades rooks? Now, that will be better, might be winning, but that will not happen because Aronian is not a fool. VD plays king to c3. He probably wants to meet rook a2 with rook d2. That's VD's idea, of course. And chat, by the way, rook a2, rook d2. If you take this rook, it's lost. Rook d2, and I will pick up this pawn and I win the game. So that's why rook a3 check first. Aronian plays the best move in the position, and now it should be a draw. The only reason why the engine says white is slightly better is because of these double pawns, but it's not enough to win, chat. The black king will sit on g6 or g7, and it will be a draw. It will be a draw, chat. And now, chat, after a draw, VD will go to 2 points, Aronian will go to 3 points, and now the only hope is VD wins against Kamer, and Aronian does not manage to win against any of the other players. Oh, he played rook a2, king b2 played. Wow, rook b3 check now, king c2 now, and it might even be a repetition like this. Let's see what happens. Yeah, king c2 now. Let's go. कैसे हो? बढ़िया हो भाई, ग्रेविड भाई कैसे हो? Guys, do like the stream. Let's get to यार 1k likes कर दो भाई, सब like कर दो. And if you're here for the first time, do subscribe the channel, guys. हमारी फैमिली में शामिल हो जाओ भाई, और एक पप्पी दे देंगे भाई तुम्हें. आ जाओ. Do you think Arjun has the chance to qualify for next Grand Prix? Yes, surely he will. He's almost guaranteed to qualify for the next Grand Prix. King c2 played, and black will play rook a3 now again. Rook a3 played. Yes, if rook d2, then black can simply wait. There's no threat. He can play king g7 and king g6, so on. A bit sad though. It is sad, but it's not over, chat. It is draw Hua, and he was better. That's a good sign. At least he was slightly better against Aronian. If king c4, chat, then rook a2 and black wins the pawn. Like you will see, black will play rook a2. He wants to play rook a2 as soon as possible, win any of these pawns, and it's a draw then. If BD could win this pawn magically, it might be a win, but with this pawn lost and many of these pawns lost, it's going to be a draw. Rook b7, yes, but then you're not taking any pawn. What's the idea of rook b7? No idea there. Chumma gambit. Chumma chumma de de. अरे क्या गाना है भाई? मैं क्या गाता हूँ भाई? Dubov or Aronian have to beat Aronian, and VD might need to win both games. Yeah, if VD wins both games, he will still be absolutely fine, because I don't think Aronian will win both games. So if VD wins both, he will still have a good chance. It's totally possible. But now it's, of course, much, much more difficult than earlier now. He has to be really, really accurate now. He cannot waste any time whatsoever. h4, yeah, but the thing is, it's white to play now. If you play h4, I give a check, king c3, and I take this f2 pawn. And black is absolutely fine, unfortunately. The only try is simply to try to, play a move like f4 or king b2 and take the draw. समय क्या बोला कॉल पे? समय ने ये बोला था कि यार हैंड एंड ब्रेक खेलते, बट मैं उस टाइम स्ट्रीम कर रहा था, तो कर नहीं पाए. अपॉर्चुनिटी मेरी छूट गई. कभी और जाएंगे यार, ऑफ कोर्स. समय दोबारा बुला लेगा, कोई चक्कर नहीं है. लेट मी क्विकली एक्टिवेट द सॉन्ग्स वंस मोर. व्हाई दे आर नॉट प्लेइंग? हाँ, when is next Grand Prix? Next Grand Prix will start on 15th. अभी तो ये वाली लंबी पड़ी है भाई. इस Grand Prix में इतना टाइम है जितना वीडियो क्लॉक में भी नहीं है भाई. Crazy. And king b2 played, chat. We might see a draw here by both sides. Rook b3 check played by Levon. If king c2, rook a3 is a draw. Let's see what happens. Will he draw the game? Why we didn't play king b4 in previous move? It does not matter. King b4 के बाद rook a2. For example, if you play king b4 here, then rook a2, and I try to win your f pawn, and black is absolutely fine. King b3 played, rook b3 check, and now the only way to continue, I think, is king a2 for VD. King c2 draws immediately. Will he draw immediately? I think so. मॉड पोल आज नहीं करेंगे भाई, आज नहीं करेंगे, कभी और करेंगे. समय कस्पारोव की बुक का गिव कर रहा था, आपने मिस कर दिया. हाँ यार, मिस तो कर दिया यार, कोई बात नहीं यार, कभी और कर देख लेंगे. हरिकृष्णा's game, let's go Harikrishna's game. Harikrishna game में क्या चल रहा है भाई? Harikrishna is playing, and he has played. Oh, he has not played d4. He played the move queen to c2, and now it's 6 by black. And Harikrishna, of course, has to probably drop the bishop back to h4. Keep this important pin. बहुत जरूरी है पिन रखना भाई, इसके बिना इस गेम में कुछ भी नहीं है. Let's go to the game of Vidit again. अरे ड्रॉ कर लिया भाई वीडी ने.
Why VD's game has ended in a draw, chat. They have repeated moves. Rook d2 looks good, yes, but if you play Rook d2 here, black can simply play king g7. There is no threat from white. You cannot move the king up, you cannot move the rook up, and it's just a dead draw. I'll play king g6, king g5, f5, h5, and so on, and it's just a dead draw, chat. Hope you're invited to commentate sometime on Silcom like KT, etc. Actually, yeah, but I don't like to commentate in English too much. मतलब हिंदी में ज़्यादा मजा आता है यार. मतलब it's like मतलब हमारे emotions ना जो दिल के हैं, जो दिल की भावनाएं हैं, वो बह बह के हिंदी में ही निकलती है. They are too professional somehow, I feel. They don't even interact with the chat, so that's not my kind of streaming somehow. It's very weird for me. Yeah, VD has drawn, chat. VD has drawn. VD's game has ended in a draw. And now it's time to focus on Harikrishna's game. So now it's all about, we need Dubov. Dubov भाई मदद कर दो यार, हरा दो यार उन्होंने को प्लीज भाई. Dubov के हाथ में सब कुछ है, सब कुछ हाथ है भाई, सब कुछ हाथ है, सब कुछ हाथ में भाई. You mostly commented in English. हाँ भाई, but देखो ना, आई हिंदी बोल सकते हैं भाई, मैं कश्मीरी बोल सकता हूँ भाई, जो चाहे वहां पे. लाइक yes, he has played bishop g2 now, and we can now play king c3. And then we can go to yes, exactly. And he's completely stuck now, I feel. Yeah, मतलब वो नहीं चाहिए यार. It's a bit boring. Lag. आज lag तो नहीं हुई भाई, आज lag नहीं हुई. Let's go to the game of Harikrishna chat. And bishop h4 played now. How is Hari doing in this tournament? Hari is doing better than VD right now. He's half a point behind Wesley, So, and Dominguez. So if he wins today, he catches up with them at least. वहां पे बार भी नहीं होता है. बार तो यार okay, I mean, but depends. No, I mean, I don't know how somebody like, I mean, if Katie is analyzing with somebody like let's say Daniil Dubov, I don't know how she can keep like in tune with him. It's almost impossible. So कहीं ना कहीं तो मदद लेते होंगे वो लोग भी. ये कौन सा एक्सेंट था? ये था यार गुजराती मिक्स विद सर्बियन एक्सेंट. डुबोव के बिना हमारा कोनो नहीं. अरे वाह वाह, एग्जैक्टली. डुबोव हमारा असली है भाई, असली दोस्त हमारा डुबोव है भाई. विदित को हर बार पॉइंट देता है, ख्याल रखता है वीडी की रेटिंग ना घटे. दिस इज द बीएफएफ वी ऑल नीड इन आवर लाइव्स. हमारी लाइफ में मिसिंग है भाई ये. What happened? VD game ended in a draw, chat. VD games ended in a draw against Levon, and that means ki VD goes to 2 points and Levon goes to 3 points. And now we're going to focus on Harikrishna's game, who's playing Alexei Shirov, and he's definitely better slightly, I would say, because it's like this pin is a bit uncomfortable, and this bishop is also much stronger than this bishop, and this bishop is just looking at its own pawn. So I do like White's position, but not really better. कभी केती को बताओ स्ट्रीम पे बुलाया था यार केती को भाई. I did call Katie on stream on Twitch. We had a stream with her actually. Please see Dubov as gamer. Okay, let's have a look. Dubov as gamer. Oh, भाई क्या position है यार. But now black is probably preparing king d7 and then knight c8, and probably black is fine. So it might end in a draw, yeah. So Dubov is no longer better. Crazy. He was completely winning at one point. एक time पे तो मतलब लगा के रखी थी उसने इसकी. VD lost rating. What? How? He drew against Levon. What is your take on Ding Lerin controversy? Okay, Ding Lerin मैंने सुना है, Lerin पता नहीं कौन है, but I would say controversy तो कुछ भी नहीं है भाई. चाइना में पूरा लॉकडाउन लगा के बैठे हैं वो लोग, तो डिंग बेचारा क्या ही करेगा. एक आदमी जितना शरीफ आदमी बेचारा शरीफ से टपक टपक के वहां पे बाड़े बहती है भाई चाइना में. उससे बड़ा तेजी आदमी है भाई. Why did he lose rating? He did not lose rating भाई. Now Hari is the best hope for India. Technically yes, technically that's true. Do you think Ding could not get a visa because of politics and not COVID? Anup bhai, I think it's a mix of both. Yeah, COVID and politics run together. मेरे को equity मिली ही नहीं चेसिस की भाई. Equity कौन सी equity? कहाँ की equity भाई? कौन सी equity चाहिए भाई आपको? Who's your fav to win the tournament? I would say Pool A में I think Hikaru is the most likely. He's leading. Pool B में I think Vodacek. Pool C में right now we have to say Aronian, unfortunately, चाहे we want Vidit to win. And Pool D में right now Wesley So. But I think Harikrishna has a chance, and even really has a chance technically. देवशीष दास का वीडियो देखा नहीं है? मैं देखा नहीं. अरे 1 घंटे का था भाई, बहुत लंबा था, मैं देखा नहीं. At which stage do you think Vidit has had a realistic chance to win the game against Levon? I think it was the moment you mentioned, yeah. That was super, by the way. It's the exact same moment you mentioned. जहाँ पे he played the move Queen B3. He simply had to take on B3, yeah. He had to take this
queen on b3 and go for this endgame where this pawn is very, very difficult to defend, and black no longer has the option to trade one of his weak pawns for white's b pawn, and suddenly there is no liquidation. You can bring the king to c4 slowly and simply win this pawn for free. So I think this was the moment for Vidit. He missed it, and Aronian played like an engine after this, and he had no chances whatsoever. So now it's all about Harikrishna's game now. And by the way, bishop h4 ke baad he took on e4, which is like a bit weird because it gives white the center clearly. And now bishop c7 played. Very interesting choice. दिवस का वीडियो देखा क्या? देखा नहीं यार. केमर वर्सेस डुबोव ब्लंडर, क्या बात कर रहे हो भाई? Okay, so what do we play now? The bar is jumping like crazy. What can I play here? I'm not sure. I want to get to the 8th rank, but I don't have anything yet. So the engine says bishop b5, but what if I play, let's say there's some random move. Oh, rook k4. अरे भाई, डुबोव जीत रहा है क्या फिर? अरे डुबोव ने पेल दिया भाई, डुबोव फिर जीतने लग गया यार. क्रेजी भाई. अब किससे ज्यादा डरे हम? डुबोव से डरे कि अरोनियन से डरे? भाई डरने की भी लिमिट होती है. हर किसी से डरे जा रहे हैं हम लोग. GF of chat, whom will you support? Okay. केमर साला विदित के सामने अच्छा खेला, बाकी सबके सामने ठीक है. अभी केमर के ब्लैक आई नहीं विडियो के साथ दो. Looks like I am engine. Yeah, bishop b5 का idea I think is to kind of prevent knight c6 and rook c6, and now rook a4 followed by rook a7 is completely winning for white. So Kemer under huge pressure if Dubov finds bishop b5. Not easy though, not easy to find this move. Kemer for vlog. बेचारा अभी बच्चे ने भाई दूध पीना स्टार्ट करा है, तो उसको व्लॉग करवा लो. Look, he saw rook a4 and he very much liked it. Okay, let's see. Dually motivated to beat Levon if he's in contention. That's true, bhai. But then Vidit has to defeat Dubov, so it's like a very vicious loop. Like for Vidit to qualify, first of all, Dubov has to defeat Levon, and then Vidit has to defeat Kemer and then Dubov as well. Crazy. सही कहा, केमर का दोगलापन है ये. भाई केमर को तो कोई इक्विटी नहीं देंगे हम यार, कंफर्म. Vidit का ड्रॉ हो गया भाई. Vidit drew his game against Aronian. He was slightly better but could not convert. Has Kemer's career peaked? I think Kemer अब he will probably start streaming soon. I think chat के हिसाब से, कुछ लोगों के हिसाब से. Kemer will beat Aronian. That is very unlikely. I mean, if that happens again, like I'll be very surprised. मतलब bishop b5 a6 still rook a4, right? Still rook a4 I feel. Still rook a4, right? It's still winning because you can't really take with the pawn. If you take rook a8 check, and that's game over. I pick up the rook on h8, so that's game over. Let's go to Harikrishna's game, by the way. अरे 17 साल का है वो बस. अरे 17 साल में बहुत होता है भाई. सचिन तेंदुलकर इंडियन टीम के लिए खेल रहा था इस उम्र में. केमर तो बेचारा यार अभी कुछ किया ही नहीं लाइफ में उसने. Okay, just kidding, by the way. What about knight to b6? यहाँ पे knight to b6. Okay. Yeah, very good move. If I could play it, very good move. अगर Vidit second आता है तो क्या होगा? अगर second आता है तो he will get 4 points. That's definitely better than I would say coming third or fourth. But then he has to win the next Grand Prix. Literally win it. Like come first. Shirov time pressure. Shirov time pressure. Okay, let me count the number of. Oh, अच्छा. Oh, इतना time pressure भाई. Oh. अरे crazy. Knight b6 for Dubov. Okay, let me check Dubov. Okay, knight to b6 for Dubov. Okay, again a very good move if it was possible. Definitely very good move. Let's go to Harikrishna's game now. Who is the favorite chess player of all time and why? I would say Kasparov probably. He's very strong. I love his play and his attitude. Yeah, he's like I love Tiku's hot takes. Coming second is better than coming third or fourth. Yeah, I think. I said coming first though. So Anisha, that's your quote now.
How much honey and Vidit need to be first? How much they need it badly. I mean need अलग होती है भाई. Gamer is match fixer. ये लो भाई सक्षम जी भाई expert comments. Match fixer कौन है भाई इनको पता है. Well played. Thank you. I hope I keep playing well even in chess. Hikaru game. Let's go to Hikaru's game. Hikaru has drawn. हिकारू के ओपोनेंट की फट गई भाई. बैकआउट ने कहा भाई ठीक है भाई ड्रॉ ले लो मिल गया. अच्छा ड्रॉ ही था वैसे यार. दे रिपीटेड मूव्स. माय बैड. सॉरी बैकआउट जी माय बैड. जस्ट हुई त्रे डेजोले. डेजोले सॉरी होता है ना. जस्ट हुई त्रे डेजोले आई थिंक. ड्रॉ ही था भाई. सो लेट्स गो टू द गेम ऑफ हरिकृष्ण अगेन. लेमन अरोनियन. नाइस. आई थिंक मैं कोई नींबू पानी का स्टैंड खोल सकते हैं. लेमन अरोनियन. हिकारू का कितना पॉइंट है? He is coming first right now. Hikaru is coming first in his group. I think he has I think कितने पॉइंट है उसके यार? 2.5. Can I still edit my votes? Is etching? No, votes are over. Chat vote is over. Salve, I am the eated samosa. Nice English भाई. वीडी का क्या हुआ? वीडी का ड्रॉ हो गया भाई. सारे यूएस वाले टॉप 4 में होंगे क्या? अरे दैट्स ट्रू भाई. We could literally have Hikaru win here, then we could have Wesley so win here, then we could have Aronian win here, and then सिर्फ B कैटेगरी में कोई रह जाएगा भाई. ये तो इंसेन है भाई. यूएस वाले सारा चैंपियनशिप ही ले जाएंगे इस बार. हम भी खरीद लेते हैं कुछ टॉप जीएम्स. खरीद लेते हैं मतलब आर यू ट्राइंग टू बाय सम जीएम्स? वो भी मेल या फीमेल? ओह माय गॉड दैट्स वेरी बैड. आई आल्सो हेटेड ईटेड समोसास. ओके प्लीज डू राउंड अप. ओके राउंड अप करते हैं भाई. राउंड अप करते हैं. चैट फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ग्रिश्चुक अगेंस्ट एसिपेंको. तो ग्रिश्चुक जी के पास आज टाइम बराबर है. दैट इज द मेन रेवलेशन हियर. बाकी पोजीशन में क्या होता है हमें घंटा फर्क पड़ता है. कोई इंडियन पर खेल नहीं रहा है. सो सेकंड इज हिकारू अगेंस्ट बैकरॉट. हिकारू हैज ड्रॉन हिज गेम एंड ही मेंटेन्स हिज लीड. थर्ड इज ओपारिन अगेंस्ट फेदोसी. ओपारिन जिसका नाम आपने कभी सुना नहीं है वो फेदोसी से पिल रहा है पूरी तरह. उसका किंग ऑन D1 ने बड़े सपने देखे थे भाई कि हम कैसल करेंगे बट वो कैसलिंग अब हो नहीं सकती. सो ओपारिन इज लूजिंग. Next is Rapport against Wotacek. So Wotacek is definitely doing really well in this tournament, but right now Rapport is slightly better. Then we have Dubov against Kemer. क्या और Dubov ने निकाल दिया है Bishop F5 सीधा Kemer के अंदर. और now Rook A4 coming up and Kemer is lost. Kemer is completely lost now. He's over. He can go home and he can then lose to video also, please. So please bye. Next is Dominguez against Wesley. So two US players playing against each other. And Wesley So is going to play knight to D3 now. So Wesley So is slightly better. Knight D3, Bishop C2. I am not sure which is the best move. He plays Knight D3 now. He plays Knight D3, Bishop C2, Rook F2, Bishop D3, Rook D2, and Black is definitely slightly better. Rook on the second rank, crushing it. So Wesley So might just win against Dominguez. And finally we have Harikrishna against शिरोव जो बहुत खतरनाक खिलाड़ी है. बट आज के दिन हरिकृष्णा का हो सकता है अगर वो चाहे तो. भाई बैकरॉड को बैकरॉप अनाउंस करते हैं यार. बैकरॉड हो या जो भी हो क्या फर्क पड़ता है यार. व्हाट्स इन द प्रोनाउंसिएशन. अब टिक्की सब एक बराबर है. वीडी का क्या हुआ? वीडी भाई घर चला गया यार. मॉड बना तो भाई डेली स्ट्रीम देखता हूँ. लंडन स्ट्रीम खेलता हूँ. अरे वाह लंडन सिस्टम खेलता हूँ लाइव में लिखा. अरे नाइस. लाइक भाई मॉड बना दो. लंडन सिस्टम खेलता है मैं डेली. कल रेस्ट डे है भाई. कल रेस्ट डे है. Yes, we buy like the American Federation. अरे nice. So which federation are we incorporating the players into? Indian क्या? So imagine if we had Indian team में होता भाई like Hikaru Indian. और imagine if Hikaru was talking like this. अरे इसको मार दिया. इसके जूसर को मार दिया. टेक्स जूसर मार दिया.
और समय की स्ट्रीम पे हिकारू, अरे तेरी हिकारू ने उत्तरी मैंने पीस दे दिया मैं। मजा आ जाएगा भाई ऐसा कुछ होगा तो। बट आई रियली डाउट हिकारू इज गोइंग टू प्ले फॉर इंडिया एंड ऑल दीज टॉप प्लेयर्स रियली अनलाइकली। सो कार्लसन का भी बहुत कम चांस है। साहिल का टका, ओके। हिकारू गॉट नो ओ रुक D1 played by Harikrishna now, so क्वीन पे बदला, क्वीन E7 I guess only move. Aronian forfeits after getting a lifetime supply of Vedika chocolates. Okay, इतनी अच्छी तो मैं भी ऑर्डर करता हूँ यार। मुझे भी ऑर्डर करनी चाहिए बाय द वे, मुझे भी ऑर्डर करनी चाहिए। टिक्को डू यू यूज व्यू बॉट? व्हाट इज व्यू बॉट? हिकारू की पंजाबी एक्सेंट क्यों है? हिकारू की पंजाबी एक्सेंट है क्या? ओके, बिकॉज पंजाब का लेटेस्ट आई एम बना ना, तो लाइक भाई आई एम बन गया, अब GM मैं बनूंगा। हिकारू इंडिया वाला का शॉट बनाओ। नहीं भाई, they don't buy players okay, gamer will become gamer. Okay, bishop E6 played now, queen E6 played now, and chat, I honestly think ना यहाँ पे ये मार देना चाहिए, ये मार के खेलो क्वीन टू E2। और ये प्यादा जो है ना A6 पे, इसको देख के ना मेरे में पानी आ रहा है, सिर्फ सैंडविच खाता हूँ थोड़ी सी। सो मैं सैंडविच खाता हूँ। हरिकृष्णा पॉन खाए प्लीज, जल्दी से भाई जल्दी। रोहित जोगी टाइम आउट दे प्लीज। आर यू रेडी टू आरती टिक्कू सिंह? नहीं यार, वो मेरे गूगल करने पे आता है कुछ, आई डोंट नो, लाइक इफ यू गो टू गूगल, दिस इज सो वियर्ड, दिस इज सो वियर्ड। लाइक गूगल पे जाओ, यू टाइप साहिल टिक्कू एंड पीपल हैव सर्च फॉर साहिल टिक्कू ट्विटर, साहिल टिक्कू लिंक्डइन, साहिल टिक्कू वाइफ। आई एम लाइक हु इज सर्चिंग फॉर माय वाइफ? मैंने खुद तो ढूंढना स्टार्ट नहीं किया, लोग सर्च कर रहे हैं भाई। साहिल टिक्कू वाइफ पे आता है आरती टिक्कू सिंह, तो ये लोग पागल। भाई आप ही हो वो जो साहिल टिक्कू वाइफ सर्च करके आए भाई? क्यों भाई, मेरी वीडियो में इंटरेस्ट क्यों है आपको? मैंने खुद ढूंढना स्टार्ट नहीं करा, आप पहले ढूंढ रहे हो, बढ़िया है भाई। साहिल टिक्कू वाइफ पे समोसा, अरे भाई टेस्टी है लेकिन समोसा यार। Oh, rook D7, by the way, he is attacking the bishop now. So what does black do? Bishop B6, I guess. Justice for Aarti, exactly भाई। बेचारी आरती को मैसेज जा रहे होंगे यार, do you know साहिल टिक्कू? मेरी दुल्हन तो आजादी है, मेरी दुल्हन तो लंदन है। हाँ भाई, That's kind of paradoxical considering लंदन ने ही लाज किया था हमारे पर। अब सब सर्च करेंगे भाई, मत करो यार। मतलब आई वॉज क्यूरियस कि भाई क्या सर्च करा लोगों ने, साहिल टिक्कू वाइफ। बताओ भाई कौन सर्च करता है ये? रोज ही सैंडविच खाते हो आप? भाई डिनर नहीं करता ना, इसलिए भाभी को सैंडविच खिला दो। भाभी, क्या पता भाभी नहीं बनाई हो यार, हु नोस। हिकारू भी लाइक लेगा इसका लेगा उसका लेगा, 80 ड्रॉ कर लेगा। लेगा इसका लेगा उसका लेगा, सबकी लेगा। अरे नाइस, अरे ले लिया भाई, ले वेद का ड्रॉ हुआ भाई, वेद का ड्रॉ हुआ भाई। केमर मेड वेरी बिग ब्लंडर। भाई इसके ब्लंडर देख देख के मैं थक चुका हूं भाई, इतना थक चुका हूं भाई, मैं क्या बोलूं अब। लेट्स गो टू केमर्स पोजीशन भाई, एक बार नजर कर लेते हैं उसकी। अरे वाह केमर जी, खेलो भाई रुक A4, लेट्स गो, खत्म करो केमर का सिस्टम। रुक A7, रुक D7 मेट, शाबाश, लेट्स गो। Rook F1 D1 to Harikrishna. Yeah, possible. Also possible is rook takes, queen takes, and rook to B1, trying to exchange this rook and queen से अंदर घुसने का. Also possible. You can also play rook A to D1. Totally possible. Or maybe some other moves. Yeah, maybe you could also come back with the rook. Also possible. Really drew. I really drew. What are your predictions in all pools? I would say pool A, it's very clear Hikaru is the favorite for now. Pool B right now, I think Vodacek. Pool 3 right now, Levon, and Pool D right now, Wesley. So it's most likely going to be that. But I am really, really hoping कि Harikrishna will at least एक तो qualify करे. We really want 1% at least. नेपो टू केमर, चलो मुझसे नजर नहीं हटती मिस्टेक्स। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है यार। आज गाने, इसका तो स्ट्रीमिंग का चक्कर चल रहा है, आज गाने नहीं प्ले हो रहे भाई लगातार। I have to constantly like keep changing it.
जस्टिस ऑफ वीडी कॉल प्रकाश समझे बुलाएंगे रैपोर्ट की रिपोर्ट दिखाओ। मैं उसका डैडी नहीं हूं भाई, अगर हूंगा भी तो भाई जरूर साइन कर दूंगा मैं, देखिए कोई स्ट्रेस नहीं है। देसी हिकारू भी लाइक इसकी आंखें लेफ्ट को है, ये रुक प्ले करेगा लेकिन इसके हाथ राइट को है, मतलब ही विल प्ले द बिशप, रुक बिशप या खुदा ये तो बैक तक वेट कर देगा। दैट्स देसी हिकारू इन मूवीज, नॉट द रियल देसी हिकारू। दैट्स देसी हिकारू इन मूवीज भाई। या आई मीन चूज वन अनीशा, हिकारू और एसआरके, यू कांट चूज बोथ। रैपोर्ट की रिपोर्ट दिखाओ। Rumor is that Samay connected VD after draw with Magnus. Okay, I'm not sure why that is so important. Chess Detective opened YouTube to study, ended up watching the stream for 1 hour. अरे बिल्कुल भैया, देखो SRK see Anisha, see unless you have plans of getting like having 2 guys for yourself, I think it's high time you choose. Yeah, SRK in big controversy yesterday. अब कल क्या किया SRK ने? Who is your favorite player? Anish Giri. The Archit he wishes. ओहो Any chances of VD qualification? हाँ भाई कर लेगा क्वालिफाई भाई, 98% तो नहीं आए VD के, बट क्या पता किसी कोटा छोटा से कर जाए भाई, क्या पता कोई जो आगे सेलेक्ट होने वाला बंदा बीमार पड़ जाए, हो सकता है। देसी हिकारू भी लाइक घोड़ा पालक का घोड़ा, मजा नहीं आया भाई, मजा नहीं आया। SRK was my first love, he cannot be replaced. Okay, so if I remember correctly, Anisha said a few days back that Aronian is like her father's age, right? So let me check Aronian's age again. Levon Aronian age is 39 and SRK age is 56. Okay, that adds up pretty much. Very good. Only Raja है मैनेजमेंट कोटा। ये तो है भाई, राजा को मैनेजमेंट कोटा है। ट्रू मैनेज है SRK फाइटिंग भाई। I think we will see a wealth flaunt soon by both to kind of woo somebody in the chat. अरे प्यार ऐसे थोड़ी होता है, अरे थोड़ा बहुत तो प्यार भाई थोड़ा वो करना पड़ता है ना ध्यान से। What is Anish's favorite season? अरे यार यो अवनीश भाई कैसे हो? साइबर फॉर डिटेक्टिव। VD का ड्रॉ चांस 0 नाउ फॉर 0 चांस ऑफ VD। आई डोंट थिंक सो भाई, आई डोंट थिंक सो। चांस है बट हमें अब डुबोव की मदद लेनी पड़ेगी, हमें खुफिया अपने एजेंट डुबोव को फील्ड में डालना पड़ेगा उसके लिए, तब मौका है हमारे पास। आपने पहले बोला था ना लेना पता नहीं किस काम का है, आपको तो ये को समझ नहीं आया भाई। Actually, Sir is older than my dad, but it's fine. Okay, all fine, all great. Yeah, I mean age is not an issue there for sure, but I am more worried about your choices. मतलब choose करो यार, Magnus और SRK. I mean you can't have both. That's the problem there. अनीशा को बहुत भाव मिल रहा है। साकेत भाई ये लो भाई, साकेत भाई, साकेत भाई आपको तो कितना भाव मिलता है यार। My favorite mall is साकेत मॉल भाई, just saying. Rapport game please, Rapport game देखते हैं भाई क्या चल रहा है। Rapport game. Rapport is definitely better chat because he has the knight on d4, isolated pawn on d5, and it feels like कि मतलब धीरे धीरे करके ना मतलब हनी सिंह स्टाइल ये भी कुछ ना कुछ तो खेल ही देगा। रुक a5, put pressure here, bishop e2, bishop f3, rook d1, king here, king to e2, and all looks good. So he's slightly better of course. अनीशा रॉय जल्दी चूज करो, नहीं तो संदीप महेश्वरी ही मिलेगा बस। संदीप महेश्वरी आई थिंक इज नॉट ऑन आवर लिस्ट। Tiku bhai, Tiku bhai, when do you go to bed when you stream? I think I go to bed like 1 or 2 hours after I stream because नींद इमीडिएटली तो आती नहीं है। गेम देखने के बाद दिमाग बहुत तेज काम करता है मेरा, चार चौधरी की तरह। विशी जेम है ना, कहाँ से निकलेगा कट ऑफ? ये तो है। अच्छा विदित, ओह यस वो तो है। Who is the favorite to win candidates? I would say top 3 chances are for Firuzja Caruana and one of the guys who qualified, or maybe even Rajabov. Yeah, Rajabov was also very strong. Tiku bhai, are you watching Tarak Mehta? Nahi bhai. No, Anisha was murdered. Okay, that's true, I guess. Jem is general engineering male for the reference.
भाई आज ऐसी टर्मिनोलॉजी मेरे को समझ नहीं आ रही भाई, जेम क्या है, ये क्या है, वो क्या है। जीएम अभी में आती, वी कांट नेम जीएम विदाउट यू नो सुपर रिस्पेक्ट भाई। ध्यान से यार, ध्यान से, डोंट यूज द नेम विदाउट रिस्पेक्ट। वीडी गेम देखो भाई, ये थी वीडी गेम, ये थी वीडी गेम। यहाँ पे उन्होंने बड़ी लंबा खेल खेला, बाद में डांस किया किंग का, चेक हटा चेक वापस, चेक हटा चेक वापस, एंड दे ड्रू द गेम। सो दैट वाज वीडीज गेम, and now we are focused on Harikrishna's game, and luckily he's head off into the end game now, so I feel I feel कि मतलब white should be slightly better. Gem equal to GM, क्या बात कर रहे हो सही में? फिर तो मैंने कितने सारे जेम्स खाए लाइफ में भाई यार, फिर तो मैं GM कैसे नहीं बना यार? शिट, लेम जोक एंड लेम जेम्स। टिक्कू तू इग्नोर कर रहा है मुझे। शिवम आनंद जी क्या हाल है यार? मेरे एक दोस्त का नाम शिवम है, एक दोस्त का नाम आनंद है, तो भाई आप तो मेरे डबल दोस्त हुए। कैन वीडी विन टाटा स्टील? नहीं भाई नहीं। एक भी चैट नहीं पढ़ रहा भाई, दूसरी भी पढ़ ली यार, 2 चैट पढ़ ली लगातार भाई। अब बोलो। रुको भाई, एक आइडिया है दिमाग में मेरे। क्रेजीज यस। कहां से आया कॉल? मेरा उतना सहून नहीं थी, इस साल देखूंगा फिर से। ये क्या चल रहा है भाई? मैग्नस एसआर के छोड़ो, अलीजा को पकड़ो, बहुत स्कोप है। भाई अलीजा को टाटा स्टील वाले भी नहीं पकड़ पाए यार, तो आई एम नॉट श्योर कि हम लोग कैसे पकड़ेंगे। हाय साहिल भाई, हाउ आर यू डूइंग टुडे? नॉट सो वेल यार, वीडी का ड्रॉ हो गया है, मतलब थोड़ा सा ना, तो मतलब दिल थोड़ा सा मेरा थमा हुआ है, मतलब ना बोलते ना, मतलब चांद थमने लगा, मतलब ऐसे होता ना, ऐसी फीलिंग्स आ रही है। आसमां हाय क्यों पिघलने लगा, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है अंदर से, आई डोंट नो, मतलब कुछ क्रेजी फीलिंग्स। अरे बच्चा है अली रजा, ओके बच्चा है अली रजा, ओके इंटरेस्टिंग। भाई मुझे आज सब्सक्राइबर ओनली मोड दिख रहा है, इवन दो मैं कब से सब्सक्राइब्ड हूँ। ओके इंटरेस्टिंग, तो अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लो भाई। कैमरा से बात करने में अजीब नहीं लगता? ओके कभी सोचा नहीं मैंने यार। एक सेकंड, हाँ यार मैं तो कैमरा से बात कर रहा हूँ, मतलब मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मतलब मुझे कोई नहीं देख रहा, मतलब सिर्फ कैमरा देख रहा है। अरे बढ़िया भाई, फिर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ बे। नाइस नाइस फॉर लेटिंग मी नो, मतलब ये सब एक असली लोग नहीं है चैट में। नाइस। विशी क्यों नहीं खेल रहा, अब बता दो ना भाई प्लीज, भाई अब बता दो ना भाई प्लीज। भाई गर्व है, मुझे नहीं पता भाई क्यों नहीं खेल रहे वो, आई हैव नो क्लू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लमाओ? पता नहीं यार। Oh my God, stop suggesting kids. Okay. भाई बच्चे नहीं यार, बच्चे नहीं, बड़े 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 अच्छे लगते हैं। टिक्कू भाई what are your अनीशा ब्रोसोन मैग्नस अलीजा किस गिनती में है? भाई I think that's why they are fighting for the world championship, Magnus and Alireza, because they are fighting for Anisha. I think that is the point there. They are not fighting for the world championship. That's why Magnus is like, I will only play Alireza, because he knows to truly capture Anisha's heart, he needs to first defeat her second crush. So that's very important. When is Vishy biopic coming out? बस कल परसों में निकल रही है भाई, पहली टिकट हम ही लेंगे। Still wondering you are the same Sahil of first video? भाई सेम साहिल भाई। Gamer has made a billion-C, क्या बात कर रहे हो? गेमर की बिलियन के लिए भाई ओपी भाई, लेट्स हैव अ लुक। भाई कान फट गए मेरे यार मुंह चल के। नहीं भाई हारने लगा है भाई। नाइट C8 इनकमिंग, चलो भाई चेक दो चेक दो चेक दो चेक दो चेक दो चेक दो चेक दो, रुक लो, लेट्स गो। व्हाई आर देयर मोर देन वन ग्रैंड प्रिक्स, बट व्हाई शुड ग्रैंड, आई मीन आई डोंट नो मैन, मतलब सबको मौका मिलना चाहिए, ज्यादा लोगों को। Akshat, anyone below 21 is baby. Chat, are you below 21? Come on, chat. Let's do a poll. Are you below 21 and above 18? बताओ भाई. Chat, are you below 21 or above 18? Very weird poll, but okay. I think Dingzen can also beat Carlson. Of course he can भाई, of course he can, but वो खेल नहीं रहा तो भाई कैसे बीट करेगा उसको? उसके लिए खेलना जरूरी है।
ओ गुरु नहीं भाई, आई आई कांट डू इट। मैं नवजोत सिंह सिद्धू के रेफरेंस नहीं पढ़ सकता। तो अपेरेंटली 37%, तो भाई जो भी आप 37% लोग हैं भाई, आप बेबी हैं। आप लोग सब बेबी है भाई। What do you think about Harikrishna performance till now? It's decent. It's decent. It's good, but not spectacular yet. मतलब अभी वो जादू नहीं दिख रहा परफॉर्मेंस में, but of course it's good enough. It's good enough. Above 23, below 25. Yes, very narrow range. Very narrow range. What happened with this game? Dubov, sorry, Aronian उठा और पीसेस फैला दिया उसने। मैंने नहीं खेलना, मैं नहीं खेलता भाई। नमस्ते भैया, नमस्ते भाई। एक पोल करो अंकल भाई। कोई पोल नहीं करना भाई। कॉफी और टी? कॉफी भाई। या आई मीन दैट्स ट्रू अनिशा, आई मीन मजाक कर रहे हैं, बट या इट्स लाइक आई थिंक इट्स लाइक मतलब आई थिंक लड़कियों के केस में ओल्डर एंड लड़कों के केस में यंगर, इट्स लाइक वेरी नॉर्मल एंड उल्टा इज नॉट सो नॉर्मल आई गेस। आई थिंक दैट्स 18 क्या होंगे फिर फिल्टर्स हो भाई। अच्छा है ना भाई, फिल्टर्स हो तो मतलब थोड़े अभी तुम्हारे ब्रेन सेल्स दिमाग में जाने बाकी हैं, वरना तुम्हारे नाम में तो नू तुमने लिख ही दिया है। कम से कुछ सेल्स ऐड होंगे तो कुछ कर लोगे भाई। आप VD result, VD do his game भाई। What are the chances of Magnus stepping down if Elizabeth doesn't win? Depends on Anisha, I guess. वो तो उसके हाथ में। Can you please throw lead chances now? VD के जीतने के लिए we want Dubov to defeat Aronian now. That's very important. अगर वो नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई लाइफ में। Domino's या McDonald's? I would have to say Domino's because I love the cheeseburst pizza. But it's not like कि मतलब कोई बड़ी चीज है, मतलब चलेगा, मतलब कुछ भी चलेगा actually. Both are good, but both are not healthy by the way. समय को बुलाओ भाई, समय स्ट्रीम कर रहा है भाई, अभी जाएगी वॉचिंग हाफ हो जाएगी। What's this music? This is my, ये मैंने खुद रिकॉर्ड किया यार, मेरा खुद का म्यूजिक है भाई। म्यूजिक टू लाउड? सही में क्या बात कर रहे हो? लाउड है क्या चैट? मुझे बताओ यार, इफ इट्स लाउड आई विल रिड्यूस इट। मॉड कांट मेक एनी, अच्छा सक्षम करो जी मॉड को सिफारिश दे रहे हैं क्या? अरे सक्षम जी नाइस नाइस, मतलब मॉड को भी लाइक ए मुझे ही मॉड बनाने का भाई, तुझे 10 रुपए देगा। कल ट्विच पे स्ट्रीम, कल यूट्यूब पे ही स्ट्रीम होगी भाई। कल एक टूर्नामेंट करेंगे, कल हम चेस बेस देने वाले हैं जो पवन भाई ने कहा था देने के लिए। सो कल चेस बेस देंगे भाई हम, कल एक टूर्नामेंट होगा क्रेजी। I am fine with them being younger than me, but even 2024 doesn't seem like a big age. But in life experience, it is a lot different. That's true. That's true. Indian society में तो वैसे भी थोड़ा सा awkward होता है, I guess. India is merging power in chess. That's true. पता है एक पोल डाला था recently किसी ने कि below the age of I think 20 years or so, like India has the maximum average rating for top 5 players. India is on top, above Russia and everybody else. I am the winner of CV16 first edition. Exactly, रशीद भाई पहली बार जीते थे भाई 2020 दिसंबर में। हिकारू गेम भाई, देखते हैं हिकारू क्या कर रहा है। Oh, he's gone home. Okay, let's go back to Harikrishna's game. एमिल ने किसी का शेयर किया था। एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली भाई। हरिकृष्णा भाई कुछ जल्दी करो भाई। देखो बाय द चैट ही आफ्टर आई थिंक वी सॉ इट रुक D7 एंड रुक E7 एंड उसके बाद उसने भाई सिंपल रुक D3 आ गया वो, एंड नाउ क्वीन E6 एंड क्वीन E2 एंड आइडिया इज ऑफ कोर्स टू पुट प्रेशर ऑन दिस पॉन। एंड जब भी हम रुक मूव करेंगे वी विल हैव दिस थ्रेट एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। And I would like to go rook a D1 or even just play rook D2 and try to double up here and put pressure here. अगर A pawn मिल जाए तो we'll be winning of course. सक्षम भाई I don't know मैच आपने पहली बार आज सीखी है कि नहीं भाई, प्लीज स्पैम मत करो। ये क्या है हैंड जी, क्या चल रहा है भाई? अन अकेडमी की लाइव स्ट्रीम नहीं है। एग्जैक्टली मतलब यहाँ पे मैं मैच नहीं दिखा रहा भाई। I met you in Panchkula chess. I'm amazed to see you here. Really? You met in Panchkula कब भाई? Panchkula chess. I played a state tournament there, I think. What does first leg and second leg mean? First leg ये right वाली leg and second leg ये left वाली leg भाई।
मुझे नहीं मिला मॉड आज तक, किसी और को क्यों मिले? ये बात भी सही है भाई, ये सही है, पॉइंट तो है, पॉइंट तो है। बाय द वे क्वीन b3 played by black and now white has an interesting move here, and that is the move knight h4 to knight f5, and that's very dangerous for black because knight h4 followed by queen g4 followed by rook g3, and suddenly there's a huge attack on black. So let's go bhai, Hari bhai, let's go. I met you in Italy, nice to see you here. Nice भाई, मैं इटली गया नहीं यार अनफॉर्चुनेटली, तो आई डोंट नो मैं किससे मिले भाई। आप एनएम से आईएम कब बनोगे और आपका स्ट्रीम्स बहुत अच्छी होती है। थैंक्स अ लॉट भाई यार। आज तो आई थिंक वीडियो गेम जल्दी खत्म हो गई तो मजा नहीं आ रहा उतना। आई डोंट नो, हर किसी गेम मजा तो आता है यार, आई नो इट्स फन बट स्टिल वीडियो गेम चलेगा तो आई डोंट नो स्टेक्स हाई रहते हैं। आई डोंट नो व्हाई दैट्स द केस, लाइक वीडियो गेम चल रही हो ना, स्टेक्स आर मच हायर फॉर सम रीजन। हैप्पी रोज डे। अरे भाई ये हफ्ता चालू हो गया क्या? अरे भाई ये वैलेंटाइंस डे वाला वीक चालू हो गया क्या? अरे भाई ये कॉलेज में कितने नाटक होते थे भाई, बाय गॉड। भाई आज रोज डे है भाई, भाई आज हक डे है भाई। भाई मतलब कितना हक डे किया भाई, पागल हो चुके हैं भाई। किसी और को भी कभी रहा है क्या लाइफ में भाई कि मतलब अरे यार आज ये है, आज टेडी डे कहां से लाऊं भाई मैं? वीडी जीत रहा था, ड्रॉ कैसे हुआ? अरे यार जीत रहा था, स्लाइटली बेटर था भाई। I met your Mars and gave you Crazy Martian title. अरे thank you for such a great pleasure भाई, thanks a lot. Rose hug day, अरे भाई sad week for wing singles. अरे भाई टिंडर डाउनलोड करो यार, टिंडर एक ऐप होता है भाई, दिखाता हूँ। Valentine's week shitstorm incoming, exactly भाई। I mean chat कोई भी सिंगल हो, this is the week. I will show you something. I'll show you, एक होता है भाई टिंडर के, शायद आप लोग काफी शरीफ चैट हो, आपने देखा नहीं होगा। So you can open up this website and you can definitely find somebody if you want to. So अब मैं इसका हिस्ट्री डिलीट कर दूँ अपनी, ये हिस्ट्री डिलीट कर देते भाई बहुत ज़रूरी है। हाँ सो हाँ इम्पोर्टेंट, सो यू कैन डेफिनेटली डाउनलोड दिस एंड यू कैन एंजॉय। टिंडर पे कुछ मीनिंगफुल नहीं होता, वो तो है भाई, बट आई थिंक चैट में कोई मीनिंगफुल ढूंढ भी नहीं रहा होगा इस टाइम पे। 7 दिन बचे हैं वैलेंटाइंस डे में, ऐसे टाइम पे सिंगल होने का प्रेशर बहुत होता है लाइफ पे। अच्छा पुनीत हो क्या तुम? हाँ भाई पुनीत तो कैसे हो? अरे टिंडर तो काफी अग्रेसिव है भाई। अग्रेसिव मतलब व्हाट डज अग्रेसिव मीन हियर? वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स देयर। स्लैब डे था और हमारे स्कूल में, अरे भाई यार स्लैब डे क्या होता है भाई? स्लैब डे इज लेम। Deleting history is a book move. Why the thing is, I never open anything ever on my laptop, phone ever. So ऐसा कुछ खुल जाए ना तो I'm like भाई अभी delete कर दो भाई। Have you met some person in? No भाई। किक डे भी होता है, ये कौन सा डे है भाई? मेरे को तो कभी किके नहीं पड़ी लकीली। मतलब people straightforward just ask if you want. Yeah, but I mean that's India, no? India में what can you expect? But I think that's not the same everywhere else. तो चलो भाई बैटरी खत्म, बैटरी चेंज करते हैं। टिंडर इज नॉट ट्रू लव। ओ अनिरुद्ध भाई ट्रू लव ढूंढ रहे हैं भाई, अनिरुद्ध ट्रू लव ढूंढ रहे हैं भाई। और भाई ये क्या पोज है भाई, ये क्या पोज में अटक गया ये? दिस इज सो वियर्ड। ओके ये क्या पोज है भाई ये क्या पोज है? जो लेग 1 लेग 2 पूछा था भाई, यही है वो, लेग 1 और लेग 2। देख लो भाई, देख लो भाई, लेग 1 और लेग 2। एंजॉय। रुको भाई मैं कैमरा बैटरी चेंज कर रहा हूं। नहीं हुकअप्स के लिए आते हैं और बाहर एटलीस्ट दे आर अ बिट यू नो सिविल अबाउट इट। टिंडर इफेक्ट, या टिंडर इज नॉट दैट ग्रेट एक्चुअली। अरे वो फॉरेन में प्रैंक होते हैं जो इंडियन में करने को मत बोलना। अरे भाई प्रैंक कौन से होते हैं यार टिंडर पे? मैं कभी यूज नहीं किया यार, मैं शरीफ आदमी हूँ। लेट मी ऐड माय फेस यार, इंपॉर्टेंट है। ओके आई एम बैक चैट, आई एम बैक। आज कुछ भी लैग नहीं हुआ ना, आई एम रियली हैप्पी। आज कुछ भी लैग नहीं हुआ, नाइस यार। इंडिया में बहुत टेबू है सब। दैट्स ट्रू भाई, बट आई थिंक इट्स लाइक कभी ना कभी तो हर इंडियन ने कभी ना कभी कुछ तो ट्राई किया ही होगा। आई थिंक कोई ऐसा चैट में है जो लाइक हु इज 15 एंड अबव एंड ही हैज नॉट यूज्ड टिंडर। लाइक कोई है चैट में ऐसा, एक बार डाउनलोड भी नहीं करा, लाइक यू नॉट इवन डाउनलोडेड इट। इज इट पॉसिबल? फिर से लाउड स्पीकर पे है, नो अश्लील जोक्स।
अरे नहीं भाई, कोई इशू नहीं भाई. ऑन द क्यू लैग इनकमिंग. नहीं नहीं भाई, लैग नहीं आएगी भाई, फॉर श्योर. क्या बात कर रहे हो? रियली? दैट्स क्रेजी भाई, सरप्राइज्ड. अच्छा, ये तो ऑफिशियल आंसर है ना? ये तो ऑफिशियल आंसर है. असली आंसर तो कुछ और होगा, वो तो फोन की हिस्ट्री में होगा. एनीवेज, क्वीन e2 played by Hari and queen b3 by black now. Shirov plays queen b3, try to control the b file completely, and Hari plays rook a d1. So it's like तू b ले, मैं d लूंगा. आप ही भाई, मैंने डाउनलोड किया हुआ है. आई एम नॉट लाइक स्टूपिड यार, मैंने किया हुआ लाइफ में बहुत पहले, कई साल पहले. हिंज इज बेटर भाई, वही मतलब हिंज, बम्बल, टम्बल, जो भी है सब कुछ. Who is the favorite chess commentator? I would say I'm not sure exactly, man. I'm not sure. बहुत सारे हैं actually. What happened to VD game? VD's game ended draw भाई, draw हो गई वो draw हो गई. अब सिर्फ और सिर्फ अतुल गुप्ता जी ग्राइंडर ढूंढ रहे हैं भाई. ओके, इंटरेस्टिंग चॉइस देयर. ग्राइंडर किस लिए होता है मुझे बता दो कोई, चैट प्लीज. आज प्लेलिस्ट की तो एल लगे हुए हैं भाई, 2 गाने प्ले हो रहे हैं सिर्फ. जितना मर्जी यूज कर लो, लास्ट में अरेंज मैरिज ही होनी है. दैट इज लिटरली द मोटो ऑफ एवरी आंटी इन इंडिया यार. आई थिंक दैट इज द अगर if aunties ever wore like teas with like some sort of text written on it, that would be the text written there. जितना मर्जी भी कर लो भाई, शादी अरेंज मैरिज ही होनी है. होमोसेक्सुअल के लिए हाँ, मैं वही पता कंफर्म कर रहा था भाई. By the way, Queen B2 played now, trying to trade Queen's chat. I don't think you should trade here. Rook D2 now, preventing the trade. Very important. Let's go. Dream destination to play chess. I would say anywhere, जहाँ पे ओशन है, like मतलब, and you can look out of the view. सागर शाह कह रहा है होमोसेक्सुअल डेटिंग के लिए. भाई आपका नाम ना कुछ गड़बड़ है भाई, लाइक मतलब कुछ ना कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लेगा इसको. Is it possible to get a date without talking? Yes. But it will cost you. Minder क्या है भाई? Top 5 tournament players are Nihan Sarin, Ariasi, Arjun, Ronak Sadhwani, Divkesh, Prag. But Arjun की rating is much higher now, so it's even higher now. Shivam भाई. Dubov won. अरे Dubov has won भाई. Dubov has won, and that means Vidit के chances और कम होते हुए भाई, और कम होते हुए, and that will be very difficult for him now. He resigned because knight c7 c8 is coming up. He's a piece down clearly. No hope whatsoever. So let's go to the game of Harikrishna again. Do you feel low sometimes? Of course भाई. यार ये VD का पूल क्या BT दे रहा है भाई? VD के पूल को बोलो भाई, ये सारे क्लोरीन डाले पूल में, जल्दी करे. सागर शाह किसी और का नाम हो ही सकता है, वो तो है भाई, बट आई थिंक कोई ना कोई क्लिप करके कहीं कुछ डाल दे भाई. सागर शाह भाई ऐसे बोल रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी. Is VD candidate hopes over? Not yet. He still has a chance, but I would say कि chances बहुत कम है. He requires some luck to go in his favor for sure. There is no doubt luck चाहिए थोड़ी सी, उसके बाद नहीं चलेगा. We also have an Indian Shah, Sagar Shah. मतलब शाह ने तो भाई, I think Shahs are dominating chess in each and every scope यार. वेस्ली वाले गेम क्या हुआ? रुको भाई, वेस्ली गेम देखते हैं. Oh, Wesley is completely winning. अरे वाह वेस्ली बे, completely winning भाई. मतलब 1 2 3 4 5 6 पॉन फॉर 1 2 3 4 भाई. अनफॉर्चुनेटली हरिकृष्णा की तो लग गई भाई, बिकॉज रुक C2 इनकमिंग एंड इट्स लॉस्ट. हरिकृष्णा का तो Wesley going to go 1 point ahead now from हरिकृष्णा also. So I think हरिकृष्णा और विदित दोनों सेम सिचुएशन में अब बहुत कम चांस है क्वालिफाई करना. Did we draw? Yes, he drew by. Wesley doing really well. Yeah, he's crushing it. He's crushing it. And now simply, you give a check. King goes here, and then you play rook C2 and threaten mate. Play कहते हैं खुदा. Okay, ये कौन से सॉन्ग के स्टार्टिंग के 4 शब्द? हरी नहीं है हाँ, बट इवन इफ ही विंस तो वेस्ली ऑलरेडी आधा पॉइंट आगे है. अब वो 1 पॉइंट आगे चल जाएगा भाई, एंड दैट टू इफ हरिकृष्णा ड्रॉज. हरिकृष्णा हैज टू विन टुडे अब, और कोई उम्मीद नहीं है.
My prediction: So and Aronian will qualify. Okay, yeah. I mean, that's the most logical prediction right now. I mean, nobody will, pat you on the back for it. It's just kind of logical. VD results. Why VD has drawn today, भाई? कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को बनाया, हर किसी के लिए. यही अपनी टिंडर प्रोफाइल का वो रखना तुम यार. I think that would really work in India. Oh God, he needed a win today with right. Yeah, he needed a win, and now he can still qualify, but now he needs help from other players. He needs other players to kind of make some mistakes. That's the only way he can do it now. So हम थोड़ा मुश्किल है. Hello, Gan the one. My hopes are only for the next generation, like Nihal, Arjun Prak. Yeah, I mean that's also a fair assumption, I guess. That's also true. You can definitely think that way. That is a song. कोई बायो काम नहीं करती, फोटो तभी मैच तो फोटो लगा दो ना यार. फोटो कार्लसन की लगा दो, घंटा फर्क पड़ता है. कौन देख रहा है वो कार्लसन की फोटो? रुक D8 भाई, फ्री का पीस है ना, बिशप एंड रुक कंट्रोल. तो कार्लसन की फोटो लगा दो यार, क्या फर्क पड़ता है? अनीशा वुड डेफिनेटली मैच विद यू फॉर एग्जांपल. बोला था समय को आईजी पे अरुण को कांग्रेट्स करने के लिए, लगता है नहीं किया. एक बार आप बोल देना. ठीक है भाई, बोल दूंगा. अब तो थोड़ा लेट हो गया यार कांग्रेट्स बोलने के लिए. विद का ड्रॉ हो गया. थैंक्स जोनाथन भाई. एक दिन इंडिया भी रशिया ऐसा एक के बाद एक वर्ल्ड चैंपियन प्रोड्यूस करेगा. क्वेश्चन है कौन होंगे वो वर्ल्ड चैंपियन. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई. आएंगे तो हैं, बट कौन होंगे वो? We can take the queen. I know it's Valentine's Day, but taking queens is not always recommendable. I would say, फिलहाल friend करो, play rook d2 and use your better pieces to kind of attack black. So rook d2 is probably better. Shit यार, draw क्यों भाई, क्या करें? कार्लसन बहुत handsome थोड़ी है. Okay, Anisha, I will leave Apurv Raj totally at your disposal. You can totally roast him as you wish. Why women can't play chess? They can play chess just as well as men. I think it's just कि मतलब number of female players are less in chess. That's the only thing. कम लड़कियां हैं तो कम चांस है ये कोई टॉप पे पहुंचेगा. It's Rose Ray bro. भाई रोज है बस है नहीं यार, कुछ है नहीं. अपूर्व राज है निशा, अपूर्व राज. टिक्कू फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप. थैंक्स भाई. इसी खुशी में सैंडविच खा लेता हूँ मैं थोड़ा सा. लेट्स गो. सैंडविच में क्या है भाई? सैंडविच में कुछ ना कुछ तो मिला है भाई. मुझे मस्त से रिलैक्स फील हो रहा है भाई. कुछ तो है. अरोनियन अदर्स आर इन वीडीज पूल. है तो भाई, सही तो है, फैक्ट तो है वो. अनीशा ने क्या लिखा है? अच्छा ओ पुराना. चैट सुनो. एक करते थोड़ा राउंड अप करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रिस्टुक इज प्लेइंग एसिपेंको एंड आई फील कि मतलब ग्रिस्टुक इज स्लाइटली बेटर बिकॉज ही हैज कंट्रोल ऑन द डी फाइल, बट इट्स स्टिल नॉट विनिंग फॉर हिम. सो आई थिंक Grischuk will push, and he also has time today. That's surprising. So very interesting. Now Hikaru has drawn against back row, whatever. So and we have Fedosi who's completely winning against Oparin. बेचारे की ओहो क्या ही ब्यूटी चेक भाई, क्या ही ब्यूटी चेक. ओहो ब्यूटी भाई, ब्यूटी. So now Daniil Dubov has beaten Vincent Kimmer and Dominguez has lost to Wesley, so he has resigned. Chat, there is no defense here. Rook d4 is falling, Rook d1 is mate, and Dominguez has resigned. Wesley so takes a 1 point lead. And finally Oparin is okay, you saw this one. And finally we have Harikrishna who's still playing. Vidit has drawn his game against Levon, so Harikrishna is still playing, and we have this position where he's technically
one like 1 2 3 over 6 a pawn down, but he has enough compensation. I think 1 2 3 over 6. Yeah, one down. Have you heard about Chess Bay? I've heard about her. Yes, कुछ ना कुछ तो ड्रामा हुआ था. Try eyes for eyes. ये क्या है भाई? टिक्कू भाई कुल्फी. भाई मेरी कुल्फी तुम क्यों खाना चाहते हो भाई? मुझे समझ नहीं आ रहा. Why do you want to eat my kulfi? Have you heard about Chess Bay? Yes. Double check exactly. VD chances over. What do you think? Diyanshu, I think it's still not over. I'll tell you why. There are two possibilities. One is the other results go in his favor. For example, they say Dubov defeats Aronian, then Vidit defeats Dubov. It's still possible to kind of qualify. Second, even if he comes second in his pool, if he kind of plays, let's say, the second Grand Prix and wins that one, he's technically could still qualify. So it's not over yet. But of course, थोड़ा मुश्किल हो गया भाई. Kemer पहले क्या रहूँगा? Any chances? I mean, yeah, if Kemer will defeat Aronian, I will then defeat Kemer. यार मतलब फिर तो बढ़िया है. फिर तो मैं भी खेलता हूँ Grand Prix. भाई सही में अपूर्व राज और अनीशा का मैच हो गया क्या बात कर रहे हो भाई? भाई यहाँ पे मैं डेटिंग साइड होकर बैठा हूँ क्या? बढ़िया है भाई. चैट भाई नाइस. ओहो अपूर्व जी फ्लर्ट करते हुए. अनीशा जी सेल्फ डेपिक्शन ह्यूमर इज क्यूट. नाइस अपूर्व भाई नाइस. मुझे पता नहीं था कि मैं टिंडर खोलूंगा यहाँ पे तो मतलब लोग टिंडर चैट में स्टार्ट हो जाएगा. हरिकृष्णा भाई कुछ क्रेजी खेलो भाई. लोगों को डिस्ट्रैक्ट करो. हरिकृष्णा कम ऑन कुछ क्रेजी खेलो भाई. अरे क्रेजी खेल दिया भाई. क्वीन ए6 मार दिया. चलो भाई क्रेजी प्लेड. लेकिन बेस्ट मूव नहीं है अपेरेंटली. अनीशा रोस्टेड अपूर्व हार्ड. भाई अजीत भाई बहुत चीजें हार्ड होती रहती है. लेट मी चेक क्या रोस्ट किया अनीशा ने. कहाँ गया भाई अनीशा का मैसेज? आई कांट सी इट. अपूर्व या यू हैव टू बी द फनी फ्रेंड व्हेन यू कांट बी द हॉट फ्रेंड. अरे नाइस. अ ट्रूथ पिल फॉर अपूर्व अनफॉर्चुनेटली. अपूर्व व्हाट द WTF आई डिडंट फ्लर्ट यार. अरे नहीं मजाक कर रहा भाई. कृष्ण को साशा क्यों बोलते हैं भाई? बिकॉज उसका नाम साशा ही है भाई. एवरीथिंग इज अ डेटिंग प्लेटफॉर्म इफ यू आर ब्रेव इनफ. रियली आर यू श्योर अबाउट दैट अतुल भाई? रियली आर यू श्योर? वो मैंने खुद के बारे में बोला टिक्कू आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. नहीं मैं समझ गया. वो तो मैं अपूर्व का मैसेज पढ़ के बोल रहा था भाई. Don't do this in the name of chess. नहीं भाई. All jokes. Anyway, chat, by the way, now black can play bishop b6 and that will mean कि मतलब this bishop is going to put a lot of pressure on white. It can also come to d4 followed by c5. So Harikrishna probably captured a pawn which was not so edible and अब थोड़ा सा डायरिया होने के chances हैं. Let's see. वीडियो गेम ड्रॉ हो गया भाई. कैग्नेस मालसन जी पुट अटेंडेंस. ठीक है भाई लगा दी भाई. फोटो काफी अच्छी है आपकी. बाय द वे अनीशा कैग्नेस मालसन देयर. रेडिट इज द बेस्ट. भाई रेडिट पे क्या डेट करोगे? ये लड़के ही लड़कों के दुश्मन बिन बात के रोस्टेड कर रहे. अपूर्व भाई यही होता है भाई. प्यार का पंचनामा देखिए ना. लाइक वो बंदा बिल्कुल सही बोलता है भाई कि अगर एक लड़की एक बंदे को डंप करेगी नहीं साला 100 लड़के पीछे खड़े होंगे कि भाई वो बंदी डंप कब कर रही है. लाइक दैट्स व्हाई इवन गाइज रोस्ट गाइज बिकॉज इट्स ऑल अ कंपटीशन. व्हाट आर व्यूज ऑन निहाल सरीन? फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन, फ्यूचर गेस्ट ऑन माय स्ट्रीम. अपूर्व भाई ये क्या है भाई? तुमने कुछ भी. Anyways, chat. I don't know which game to focus on though. थोड़ा ज़्यादा chat में कुछ crazy हो रहा है. Let's go to the game of गुरचुक भाई. कुछ crazy करो भाई. कुछ crazy करो भाई. मार दो यार. नाइट मार दो भाई. मार दो. गेम छो मजा में भाई. मजा में. ओके क्वीन d3 प्लेड बाय गुरचुक. कुछ crazy नहीं कर रहे. लगता है डेटिंग चलती रहेगी. Let's go to Vidit's game. Oh, not sorry. हरिकृष्ण's game. टिक्कू के अंगूर. ओके आई डोंट नो व्हाट दैट इज भाई बट इंटरेस्टिंग. यार अरे तुम लोग यार 2-2 दैट्स ट्रू. यार कल हो गया. थैंक्स तन्मय. सपोर्ट बना रहे चाहिए भाई. वो अपूर्व भाई वो सपोर्ट किसी और चीज का दे रहा है भाई. तुम समझे नहीं लगता है. अनिल लुक्स लाइक यू आर न्यू इन दिस रिजेक्शन लाइन.
What if Apurva? Oh, that would be a crazy twist, bhai. That will be a crazy twist. I don't know, like, I'm totally for LGBTQ. Totally. Full support. निहाल के साथ बुलेट खेलोगे भाई? भाई प्लान तो यही है भाई, एक दिन निहाल को बुलाना है स्ट्रीम पे, और 10-0 हारने के बाद लाइक मतलब बस मतलब तसल्ली करनी है कि भाई ठीक है भाई, निहाल सरी क्यों है? एक अभी खेला नहीं ना, तो लगता है कि यार कैसा खेलता होगा यार, कैसा खेलता होगा वो, कुछ पता नहीं है, तो एक बार पता जाए बस. अनीशा इज अनीश, नाइस. That's why you have less female chat in chess stream chat. That is the reason. Anyway, यार कितना सोचते हैं भाई लोग खाली. भाई शिरोव भाई 8 मिनट है भाई तुम्हारे पास. You have to play like 10 moves. You don't have much time. Fast खेलो भाई, fast. बढ़िया भाई, ऐसी ब्लंडर मारो. Awesome भाई. अब वापस ले आओ हरिकृष्णा भाई, जल्दी से. Let's go. Queen e2 back. या फिर h4 h5. Let's go fast. Vidit has drawn chat. Vidit has drawn. ये final position Vidit की. He drew in this position. Dead draw, nothing happening. 4 pawns each. Slight plus with double pawns, but not much, so they agreed to a draw. इतना शक क्यों हो रहा है सबको? अरे शक क्या हो रहा है भाई? अगर अनीश गिरी हिंदी बोल सकता है तो भाई दैट इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ भाई. अनीश गिरी कैन टॉक इन हिंदी, इससे बेटर क्या हो सकता है लाइफ में? मैंने रिसेंटली चेस खेलना स्टार्ट किया है, कैसे इंप्रूव करूं? इंप्रूव करने के लिए पहले तो भाई ये स्ट्रीम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इंप्रूव करेंगे आप, जैसे चार्ट वाले कैन अटेस्ट टू इंप्रूविंग क्वाइट अ बिट. Second, bhai, you can definitely go for our courses. And third, you can definitely, after 2 years of effort, realize कि कोई point नहीं है effort करने का. And then you can quit chess. अरे अर्चित भाई सुपर जीएम के चांस कम है भाई. थैंक्स अ लॉट भाई, साहिल फॉर सुपर जीएम. भाई आज तो लिटरली भाई मतलब वीटी गेम के बिना ऐसे भी लग रहा है कि यार लाइफ में कुछ मिसिंग है, ऐसे दिल में कुछ खाली है भाई. थैंक्स अ लॉट अचित भाई. थैंक्स अ लॉट भाई. आज लग रहा है कुछ लाइफ में कुछ मिसिंग है, ऐसे मतलब जैसे तो गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई हो, या फिर मतलब जैसे हमने पिज्जा ऑर्डर किया और डिलीवर नहीं हो रहा. लाइक कुछ तो मिसिंग है लाइफ में भाई आज, है ना? आज कुछ तो मिसिंग है भाई लाइफ में. अगर लेवॉन और वीडियो के पॉइंट्स बराबर हुए तो फिर क्या होगा? फिर वो डांस बैटल करेंगे यार. सो वीडियो का स्टाइल इज कथक एंड लेवॉन का स्टाइल इज हिप हॉप. Which nationals are you playing? Women's nationals. I follow Pranali on Insta. By the way, she knows I'm Anisha only. तो मुझे ही फॉलो करो भाई. प्लीज गाइस डू फॉलो मी इंस्टा भाई. 1000 फॉलो तो करो भाई. कम ऑन नाउ. अरे नहीं पवन रेड्डी 10 के तो टच नहीं भाई. पवन रेड्डी सर का नाम मत लो भाई, अभी आ जाएंगे वो. लेट्स नॉट मेंशन हिम राइट नाउ. पवन भाई लव यू भाई, लेकिन अगर सुन रहे तो. अरे म्यूजिक ये वाला चलाना दोनों के लिए. ओके सीधा आंसर देना टिक्कू भाई. सीधा हम देते नहीं भाई. लाइफ में कोई हमने काम सीधा किया नहीं, तो आज क्यों? वाई टुडे? किया था आपने, फॉलो बैक नहीं किया. रियली? यू फॉलो मी इंस्टा? आई रियली डाउट इट. आई डोंट थिंक सो. कहां फॉलो किया है भाई? किसको फॉलो करके बैठे हो भाई? कौन है ये? टाई ब्रेक होगा क्या भाई? नहीं, यहां से ब्रेकअप ही होगा भाई. टाई ब्रेक के चांस कम है. क्या हाल? बस भाई ठीक है यार. आज थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि यार मतलब लग रहा है कि एक्साइटमेंट के बाद में डांस ही ना कर पड़ू यार. मतलब ये बोर्ड पे एक्साइटमेंट नहीं दिख रही. मतलब ये प्यादे मार के कितना मारेंगे प्यादे यार. एक प्यादा मारा, फिर यहाँ आएंगे, फिर धक्का लगाएंगे इसको भाई, फिर कहेंगे भाई तू भी धक्का लगा, फिर तू भी धक्का लगा. इतना टाइम किसके पास है भाई? किंग के पास भागो यार, किंग को अटैक करो. सच में चेक करो. बढ़िया यार, फिर मैं देखता हूँ फॉलो किया कि नहीं. अजीत भाई बताना. अरे प्रोजेक्ट यार कुछ भी. By the way, he played Queen e2, right? Brought the queen back. So now you have to go h5. Let's go. Will Wiggin Tara steal? नहीं भाई. He will not. By the way, 1 2 3 4 गेम खत्म हो चुकी हैं. 1 2 3 4 गेम पेंडिंग है. जो 4 गेम पेंडिंग है उनका देखते हैं भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल इस गेम में तो ओहो हो. इस किंग को देखो भाई, इस किंग की नजाकत को देखो. ओहो हो. मुझे पानी आ गया भाई किंग को देख के. मतलब इसको तो जैसे चबाएंगे ना. सो वी गो टू रैपोर्ट अगेंस्ट वोडाचेक.
Yeah, slightly better, not much, probably a draw. And then we have Grischuk against Esipenko. And यहाँ पे Milton 1 का threat है जो लक्ष्य नुक तो नहीं देखेगा. So Bishop F1 has to be played now. And then you can take on F6 and try to back rank mate. That might work. So let's go to Harikrishna's game again. हाँ अर्षित भाई सही कह रहे हैं. Basically we have this startup जहाँ पे I along with 10 people we sit down and we हमारे ऑफिस में बहुत सारी डिशेस आती हैं डिफरेंट वर्ल्ड से. हम टेस्ट करते हैं, रेट करते हैं एंड वो हम फिर फॉरवर्ड करते हैं. सो तभी इतना इनकम है भाई. हु इज बेटर प्लेयर, विदित और हरिकृष्णा? यार पता नहीं यार. राइट नाउ मे वीडी इज अ बिट बेटर बट आई एम नॉट श्योर. और क्या हलचल भाई? हलचल कुछ नहीं है. आपका नाम क्या भाई? माहिल सिक्कू. ओके माहिल सिक्कू, नाइस नेम. Shark Tank Tikku, okay, nice name. If not a chess player, what would you want to be? Play by a philanthropist, something जो उसने dialogue मारा था, probably that dialogue looks sounds nice. I want equity in this startup. There is no equity available because हर किसी की 10% each है. So it's like nobody will give any equity there. बड़ा मस्त काम है, सिर्फ खाना खाना है भाई दिन भर. साहिल भाई तुमको किंग को चबाने की फैंटेसी है? ओके, मतलब वो मेटाफर था. तो मेटाफर क्या होता है यार? जब जैसे हम किसी को कुछ कहते हैं बट उसका सेम मतलब नहीं होता, उसको मेटाफर बोलते हैं भाई. इक्विटी तो खाना दो. स्मृति लाइक इक्विटी छोड़ो भाई, मेरे को ऑर्डर कर दो भाई तुम डोमिनोज से. बढ़िया है भाई. आप अपना शेयर डायलूट कर दो यार. मैं क्यों करूं यार? दैट्स नॉट फेयर यार. मेरा ही आइडिया था यार, ऐसे कैसे? शो वीडी गेम. ये लो भाई देखो यार, वीडी गेम ये है एंड वीडीज गेम इज ऑलरेडी एंडेड इन अ ड्रॉ चैट. so it was kind of a not a quick draw but kind of a slightly fast draw as compared to the other games. and yeah, कितना बड़ा है भाई? मेरा भाई कोई है नहीं एक्चुअली. आई एम अ सिंगल चाइल्ड, सो कोई बड़ा भाई है नहीं मेरा. होप देयर इज ओटीपी ओलंपियाड. हाँ भाई इस साल ओटीपी ओलंपियाड है बाय द वे इन जुलाई इन रशिया. ओटीपी ओलंपियाड है एंड फिडे ने जो ऑनलाइन, बाय द वे फिडे ने एक बड़ी चिंकी एक बड़ी अजीब चीज करी. जो ऑनलाइन ओलंपियाड हुए ना, दे काइंड ऑफ डिस्क्रेडिटेड. मतलब आई शो यू समथिंग. सो 43rd चेस ओलंपियाड, ठीक है. सो 43rd चेस ओलंपियाड हुआ था 2018 में, ठीक है. 2018 में हुआ था 43rd चेस ओलंपियाड, ठीक है. एंड नाउ इफ यू गो टू FIDE, वेरी इंटरेस्टिंग डिटेल. ओके वी गो डाउन एंड यू सी 44th, सो ये ठीक करना पड़ेगा. या 44th चेस ओलंपियाड इज दिस ईयर. तो जो ऑनलाइन ओलंपियाड थे उन्होंने कहा ऑनलाइन ओलंपियाड आथू रख दिए कोने में. मतलब इंडिया ने गोल्ड जीता, इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता भाई. यूजलेस, ऑल यूजलेस काइंड ऑफ. भाई क्रेजी रिस्क है भाई FIDE ले रही है. आई वाज सरप्राइज्ड बाय दिस यार. आई डोंट नो क्या मतलब, बिकॉज़ इट्स लाइक मतलब उन्होंने कहा कि भाई ये है ही नहीं, इट्स यूजलेस. सैंडविच रिव्यू बाय टिक्कू. भाई तभी तो सैंडविच खा रहा हूं मैं. सैंडविच एजी का भी तो नाम था पहले ग्रांड प्री में, नहीं दूसरे सेकंड और थर्ड में उसका नाम भाई. चिंकी भाई चिंकी मेरी कजन का नाम था एक्चुअली. कितने मूव्स भाई? 32 मूव्स हो चुके हैं, 8 मूव पेंडिंग है. शिरोव के पास 4 मिनट है 8 मूव खेलने के लिए भाई. What's up with VD? भाई VD is sleeping in his room right now. He's gone back home. His game is finished. Boycott FIDE भाई, boycott तो नहीं करना चाहिए. अनीश नायक है चैट में. हेलो अनीश नायक जी, क्या हाल है? How Hari is better because of the pass pawn. After the move Queen A6, Black played the useless move G6. Now Queen E2, Queen B4, and simply Rook A2, supporting his pass pawn. You cannot push it right now to A5, but long term यहाँ पे ये बहुत deadly pawn है भाई, deadly. सेम फॉर्मेट हो क्लासिकल के साथ तो इंडिया विल फॉर श्योर. या बट सेम फॉर्मेट नहीं होगा भाई. इस बार क्या होगा, व्हाट दे विल डू इज दे विल ओनली हैव लाइक नो जूनियर सेक्शन आई थिंक, बिकॉज पिछले ओलंपियाड में कोई जूनियर सेक्शन था ही नहीं. सो ओनली इफ टॉप 4 प्लेयर्स प्ले इन दैट सिनेरियो, ऑब्वियसली यूएस इज द बेस्ट. यूएस की टीम देखो भाई तुम,
हिकारू नाकामुरा, वेस्ली सो, फैबियानो कारुआना, और कौन है भाई? और कोई रह गया एक बंदा, वेस्ली सो, कारुआना, हिकारू, अरोनियन, देन शैंकलैंड। भाई भाई क्या क्रेजी टीम है उनकी, वही जीतेंगे भाई। अनीश नायक के मैसेज मुझे क्यों नहीं दिख रहे भाई? किसने हाइड किया हुआ है क्या? मुझे अनीश नायक के मैसेज नहीं दिख रहे भाई। ये कौन लिख रहा है अनीश नायक से कुछ? लेवॉन अरोनियन डोमिंगेज, एग्जैक्टली भाई। यूएस इज नो यूनिटी भाई, यूनिटी क्या चाहिए? अच्छा चेसी तो खेलना है बस। डोमिंगेज, या एग्जैक्टली भाई। इट्स इनसेन, मतलब हिकारू सेड ही वोंट प्ले, तब भी घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। इवन देन दे विल विन। FIDE said they will conduct online Olympiad each year separately. But that makes no sense. मतलब, what is the point of conducting online separately? I mean, it has no value then. If the actual Olympiad is happening OTB, yeah, it has no clear value then. I don't think any team will kind of take it seriously then. Jeffrey Ziong, भाई कितने खिलाड़ी है यूएस के यार? मतलब इतनी तो, मतलब वो ह्यू हेफनर की, मतलब वहां पे लड़कियां नहीं थी उसके घर में जितनी, मतलब यूएस के टॉप प्लेयर है। क्रेजी। रेयर ऑप्शन भी है बाय द वे। Naka and Wesley do not like Fabi. Okay, why is that the case? तबलों में खुजली हो रही है भाई, क्या तबलों में? हैंस नीमैन, वो 2600 है, लेकिन 2700 नहीं है अभी। बट एक बार तो दो ही खेलेंगे, नहीं दो नहीं 4 होते भाई। एक्चुअल ओलंपिक में 4 लोग खेलते हैं भाई, 4 लोग खेलते हैं। So that's crazy. So इंडिया में 4 कौन होंगे? If Vishi sir plays, then Vishi sir, Harikrishna, Vidit, and fourth will be Arjun or Nehal, probably one of these guys. By the way, rook c1 played, trying to attack the pawn on c6. Who is your favorite player except yourself? I mean, of course, Anish Giri. Fabi इटली से है ना? हाँ भाई, बट इटली का पिज्जा खा के बोर हो गया वो, तो वो अब यूएस से खेलता है। Andrew Tang is not so strong. I mean, in OTB chess, he's 2500 only. Only, I say with like a big, you know, exclamation mark there कि भाई disclaimer. रशिया से भी है, और रशिया में ही है। That's also very advantage Russian team, yeah. Naka said in his stream that Fabi should have played from Italy instead of US. Yeah, of course, because Naka के बहुत सारे चैंपियनशिप छूट गए ना यार। Naka का नुकसान ही है, because if Fabi plays from the US, तो Naka can't win any championship, so important है ना उसके लिए। Fabi's middle name is Luigi. Nice. विदित का क्या हुआ? विदित का गेम हो गया भाई, ड्रॉ हुआ उसका। मोस्ट यूएस प्लेयर्स आर इंपोर्टेड। भाई आज के जमाने में क्या इंपोर्टेड नहीं है भाई? आज के जमाने में सब कुछ इंपोर्टेड है। ये जो सारे माइक्रोफोन चाइनीज उनसे इंपोर्टेड, जो भी घर पे तुम्हारी टेक है सारी चाइना से इंपोर्टेड है। क्या चीज इंपोर्टेड नहीं है? तो बंदे भी इंपोर्ट कराई लो। नाइस का सच। Weren't you supporting VD against Anish Giri? I am, but VD के chances बहुत कम लग रहे हैं यार अब। In which tournament Adhivan will play? I don't know. Adhivan got married, I think, last year in October, so he will take his time now. He will start preparing, of course. He will take his time. अभी एशियन चैंपियनशिप भी आने वाली है बहुत जल्दी। Hari will win. भाई, he looks like it. He's better for sure, but ये blockade है। इस blockade को तोड़ना है। एक बार ये पॉन यहाँ पहुंच जाए ना, we are completely winning now. वेबकैम कौन सा है भाई? कैमरा है, वेबकैम नहीं है। What about VD? He lost. He drew भाई। पार्थ भाई he drew. He drew the game. कौन सी कंट्री खेल रही है? यहाँ पे कंट्री नहीं है, खिलाड़ी है भाई। खतरनाक खिलाड़ी। सॉरी बड़े खिलाड़ी। टिकू फॉर 2800, थैंक यू भाई। Did Levon win? नहीं, he drew. In future, India will become exporter of people as population of other countries declining. मैंने कहीं पढ़ा था भाई कि यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज की पॉपुलेशन, मतलब the population rate is growth rate is decreasing. So it's like, मतलब at some point they will have no people. So बढ़िया ना भाई, चलो भाई यूरोप चलते हैं। अब मैग्नस भी खेलेगा ओलंपियाड में। वो मैग्नस खेलता था पहले, फिर उसने छोड़ दिया। उसकी टीम इतनी लोपड़ थी उस टाइम पे, लाइक कि भाई मैं नहीं खेलता। वो रुक D1 चेक नहीं आ रहा क्या? किंग H2 खेलेगा क्या? रुक D1 चेक, किंग H2 आई गेस, बट आई डोंट नो, देखने में डर लग रहा था देख के मुझे। हमारी भी रिप्लेसमेंट रेट पे ही है वैसे। अरे हमारी इतने लोग हैं यार, इतने लोग हैं, मतलब इट्स लाइक, मतलब कब किसी मार्केट में जाओ ना, क्राउडेड, कभी राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन में गए हो कभी?
कभी देखा है वहां की भीड़? वहां पे लिटरली अगर तुम दिल्ली मेट्रो में पीक टाइम पे जब कोविड नहीं था एक पोज में अटक गए ना ऐसे, यू कांट मूव योर हैंड, देन यू आर लाइक दिस फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर एटलीस्ट। कोई वॉलेट मारेगा ना ऐसे दिखा के, वॉलेट मार लिया, अरे भाई रुक, भाई रुक जा, भाई रुक जा, मत ले वॉलेट प्लीज, भाई हाथ जोड़ रहा हूँ भाई। ये हालत हो जाएगी भाई लिटरली, इतनी भीड़ होती है। साहिल भाई अकेले सारी पॉपुलेशन संभाल लेंगे? ओके, संभालना क्या होता है भाई? मैं भी मेट्रो से ही हूँ, यहाँ भीड़ भी होती है। कौन से मेट्रो से यार? लॉकडाउन, अच्छा यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल राइट आई थिंक, या और ऐसा कुछ। लॉकडाउन में पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रिपल हो गया है यार। मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था पॉपुलेशन ग्रोथ लो जा रहा है, पीपल आर लाइक फ्रस्ट्रेटेड विद देयर लाइव्स, दे डोंट वांट टू, इतनी आदत हो गई अपने पार्टनर्स रहने की, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं भाई, इतना लड़ाई हो रही है, बच्चे मतलब कम हो रहे हैं, तुम कह रहे हो बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, कुछ भी। राइज ऑफ मेट्रो स्टेशन में यू जस्ट स्टैंड एट द डोर एंड मैजिकली बोर्ड द ट्रेन ऑटोमेटिकली। एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली। और जो सुगंधें आती हैं, ओहो उफ। VD's match has drawn. Yes, VD has drawn his game, chat. He has drawn his game. Rook and game, equal number of pawns, and he agreed to a draw. It's only Harikrishna playing right now. People are frustrated and then making babies per hour. Okay. Divorce हो रहा है, exactly. लो जा रहा है population rate growth बहुत, exactly भाई। अब होगा ही ना लो यार, जब बच्चे अपने बेटे, पेरेंट्स अपने बच्चे को करते हैं कि इसको हम जीनियस बनाएंगे, हमारा बेटा आइंस्टाइन बनेगा, बाद में वो क्रिएट अकाउंट करते हैं अपने चेस कॉम पे, लक्ष्य नूब। इमेजिन द ट्रॉमा ऑन द पेरेंट्स। The inside of the bus is solid because people have packed so close together. Exactly. By the way, he played Rook D1 check. Yeah, he made the attempt. हो गया वो. Now King H2 only move, of course. King H2 played. Very interesting. Oh, Queen. He took the Queen. What? Oh, now it's completely winning, right? I mean, like much winning now because this blockade is not strong anymore. Bishop if I just Rook C5. Harikrishna is, I think, much better now. I feel. Can I play Rook C5 here? Is it possible? Rook C5, Bishop B6. Yeah. So not so clear yet. But yeah, it should be much worse now. Let's see what happens. He played Bishop F5, by the way. Bishop F5 played. I have E1800. How can I enhance it more? Solve tactics, भाई. Tactics like crazy solve करो. मतलब जैसे तुम्हारे पीछे दिनचक पूजा फूल लेके पड़ी हो, बस ऐसे बस पालू का tactics solve करो भाई. मॉड बनाओगे तो तोड़ेगा. ओके, क्या तोड़ना है आपको भाई? Real life Olympiad this year will be COVID super spreader. I mean, it can be, but it depends. Yeah, I mean, कि क्या situation है? बहुत time है, जुलाई में है. Solving 10 puzzles a day, okay, not really. Why? Depends on how fast you want to grow. If you want to grow really fast, then you probably need more. I think at least a couple of hours of practice. Cancel टिक्कू भाई, ऐसा क्या किया हमने भाई? सैंडविच खा ली इसलिए कैंसिल करोगे तुम? है क्या किया हमने ऐसा कैंसिल होने लायक? कुछ किया तो है नहीं, इतने शरीफ है हम. $5+ के लिए मेंबरशिप चाहिए, आप दोगे क्या? सुपति भाई, रोज तो हम चैलेंज कर रहे हैं, लिटरली एवरी डे वी आर गिविंग 1 मेंबरशिप. आप रजिस्टर करो ना भाई, मिल जाएगी उसमें, एक दिन तो लकी हो ही जाओगे. अकेला खा रहे थे इसलिए कैंसिल. भाई ईशान को तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा भाई. तुम यार डाइट पे फोकस करो. यू आर नॉट सो इन फिजिकली फिट राइट नाउ. प्लीज फोकस ऑन डाइट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट. ईशान भाई डाइट फोकस करो. यंग हो अभी, जवान हो, फिट रहो भाई, 6 पैक बनाओ, लड़कियां पटाओ, वेरी इंपॉर्टेंट. पराठी ओपी. ओके, व्हाट इज पराठी? पराठी ओपी क्या है? वीडी का क्या हुआ रे भाई? भाई वीडी का ड्रॉ हो गया भाई, वीडी का ड्रॉ हो गया. वीडी ने भाई ड्रॉ कर लिया आधा आधा. एंड टू बी ऑनेस्ट, नाउ इन हरिकृष्णा's गेम, so my king is a bit stuck, so probably g3 g4 makes a lot of sense. Yeah, he plays g3 and now you can play the king to g2 and make it a bit more solid. Then you can try to, you know, play sometimes, for example, rook c2, rook b2 and try to enter with the rook, or even rook b2 directly actually is also possible, and then rook b7 and
maybe h4 later on, and it does feel like matlab white is better but not winning yet. Bishop b6 तब खेलेंगे जब rook c5. If for example let's say I had played rook c5 with the idea of pushing this pawn, then bishop b4 or bishop b6 and the rook has to go back. Let's say bishop b4, rook c4, bishop a5 और draw हो जाएगी. So that's the problem here. U is very bad, my English is good. Haha, nice. Imagine Kemal defeats Aronian, तो party करेंगे ना फिर भाई पूरी night. Maybe Tikkuji doesn't want to answer question. Which question, भाई? In Russia, you will get paid for producing children. Okay, producing is such a wrong word. Factory में नहीं बना रहे भाई बच्चे. किसी इंटरेस्टिंग एक्ट से बनते हैं जिसके बारे में आप पढ़ोगे 10 साल बाद. What are your parents' reaction of you being a chess player and streamer? They'll be proud of this question. I don't know, man. अगर चैनल चल गया, टाइटल मिल गया, they'll be proud. अभी तो वो भी बीच में लटके हुए मेरी तरह. वो भी बीच में लटके हुए हैं. 5 people on 5 out of 5 in prediction. Nice. Producing children, exactly. Like reminds me of the Matrix somehow. By the way, F5 played by Black. F5 Black कह रहा है कि भाई तू विन नहीं कर पा रहा, मैं खुद गेम देता हूँ. Not a good move, I feel. Not a good move at all. Which tournaments are you planning to play in the future? Plan तो है. I might play the nationals. I'm not sure about that one. But कुछ GM tournaments हो रहे हैं दिल्ली में, अहमदाबाद में. I might play those. In China 10 lakh loan. भाई पहले बच्चे भी कर रहे हैं फिर लोन भी ले. मतलब दोनों तरफ से नुकसान ही दिख रहा है मुझे तो. Rook c5, knight c5. Yeah, but for example, if rook c5, I can simply, now though I can capture on e4 also. And if you had played rook c5, now bishop b4. And if you play rook e5, now comes bishop d6 and you lose the game. So be very careful भाई. पिन शिन का ध्यान रखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है. Do you have any bro and sis? No, I'm a single child. Single child, happy child. Congratulations 21k, you'll get GM title and 100 million. भाई 100 million तो कुछ ज्यादा ही हो गया यार. ऐसे मत बोलो यार, कुछ रियलिस्टिक बोलो. रियलिस्टिक भाई, रियलिस्टिक. रशिया में लोगों का ठंड से, अरे यार ये क्या है भाई. इंटरेस्ट फ्री लोन होता है फॉर चाइल्ड केयर. या बट आई मीन लोन इज अ लोन. यू हैव टू रिपे इट समहाउ. आई लोन कंसेप्ट ही मुझे पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक इट इवन अ सिंगल बिट. ऑफ कोर्स इन सम केसेस इट्स रिक्वायर्ड, बट या इट्स दैट आफ्टर ऑल. Results so far भाई. Hikaru has drawn against Backrod in this position. Oparin lost to Fedosiev here. Oh भाई क्या crazy position है यार. And Dominguez lost to Wesley. So in this position, Daniil Dubov defeated Kemar in this position. Will drew against Aronian in this position. We have 5 results now, 3 more to go. Harikrishna game I think will finish in the next 15 to 20 minutes. I feel काफी fast होगा. कल का डेली पजल दिखाओ यार. डेली पजल कहां पे से पे प्लॉट ट्विस्ट 100 मिलियन वेनेजुएलन करेंसी. भाई जिम्बाब्वे की करेंसी की हालत याद है. ओ माय गॉड भाई, लिटरली उनके पास आई थिंक उनके नोट थे लाइक $1 ट्रिलियन और समथिंग के नोट थे भाई. जस्ट इमेजिन उनकी करेंसी इतनी खत्म हो चुकी थी भाई. $1 ट्रिलियन के हिसाब से उनके नोट थे भाई. ब्रो सो जाओ. लो भाई सो गए भाई. चाइना के बारे में मत बोलो, वहां सब कुछ फिशी है. ओके गुड नाइट कृष्ण भाई, गुड नाइट. इंडिया तो मोर गर्ल्स एंड बॉय, फिर भी क्यों. अरे भाई हाँ, ईरान करेंसी इट्स लाइक यू गेट अ बॉटल ऑफ वाटर फॉर लैक्स. They had $100 million note and 5 had them. Yeah, exactly. Like they had these bundles of like lakhs and lakhs of dollars. इतने सारे मतलब वो थे bundles लेके लोग घूमते थे. Like imagine करो तुम स्टोर में जा रहे हो, वहां पे मेरे को अब तक याद है एक केला पड़ा हुआ था. ठीक है, उनके एक ग्रोसरी स्टोर में एक केला पड़ा हुआ था.
और उस केले को खरीदने के लिए वो इतने सारे नोट लेके गए थे भाई। इमेजिन करो ऐसे करके केला दो भाई। क्रेजी था भाई वो। और ये हट टट्टी मूव, ये क्या है भाई, ये क्या पाप है ये भाई। ओके टट्टी मूव एक्चुअली फोर्स्ड है यार, दैट्स व्हाई F5 वाज रियली बैड यार, मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। सो FE4 के बाद आई कैन जस्ट टेक विद द रूक एंड द E5 pawn is almost lost. There will be a day when other streamers will stream your games. Best of luck. Thanks a lot भाई। गर्मी कर लेते थोड़ी सी भाई। क्या आपको पता है जर्मनी करेंसी का भी ऐसा हुआ था ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? ओके आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय दैट, उसके बाद ही हिटलर आया था, नॉट सरप्राइज्ड। डॉलर्स नहीं भाई, इन्फ्लेशन वाज अ बिट देन गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रिंटिंग अ लॉट ऑफ नोट्स। हाँ भाई वही ना, वही बात है ना, दैट्स व्हाई आई एम पुअर चैट बिकॉज आई डोंट प्रिंट नोट्स प्योरली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ग्रेट डिविजन में जर्मनी में हुई थी, नाइस। जिम्बाब्वेन डॉलर्स था ना कुछ, आई थिंक ऐसा कुछ था। आज फिर ग्रैंड प्रिक्स में समय के बारे में क्वेश्चन पूछा था वीडी से। भाई आई थिंक समय के बारे में क्वेश्चन क्यों पूछते हैं वीडी से, समझ नहीं आया मुझे ग्रैंड प्रिक्स में। उसने खुद ही समय का नाम लिया होगा। हिटलर वाली कॉमेडी देखी क्या मुनावर की? नहीं यार मुनावर की मैंने देखी नहीं, कोई शो आएगा उसका? आई हैव नॉट सीन इट, नॉट येट एटलीस्ट। रूकी फॉर टेकन एंड द ओनली क्वेश्चन रिमेन्स कि ये वीडी वाले हालत तो नहीं जाएगी कि मतलब एक पॉन एक्स्ट्रा है, मेरी टांग नकली है और वो पॉन को कुछ कर नहीं पा रहा मैं। Dina is asking all those questions to VD. अच्छा, oh, nice. Miss stream watch it in bits and pieces. Will watch from start now. अरे जानवी कैसे हो यार? Why VD accepted draw? Because it was a draw यार. इस वजह से कुछ भी नहीं है. Like they can play around, but 4 pawn दोनों के पास कुछ नहीं कर सकते भाई. So let's go to this game. And यहाँ पे कुछ similar हो सकता है. वो C5 played. Now you can take the E5 pawn. Let's take it भाई. Let's take it. मार. Come on Hari, come on. Let's go. You're winning man. नहीं इंटरव्यूअर ने बोला समय का। भाई दैट्स क्रेजी, आई मीन दैट्स इंटरेस्टिंग यार। मतलब बाहर के इंटरव्यूअर जो समय से कभी मिले भी नहीं है, वो लोग समय क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वीडियो से। इट्स काइंड ऑफ क्रेजी दो। शिरोव लो ऑन टाइम, या लो ऑन टाइम, ऑल्दो ही ओनली हैज टू प्ले वन मोर मूव नाउ। 39 मूव्स हो चुके हैं बट इट्स ऑलरेडी लॉस्ट। रुकी 5 और 95, he will already be a pawn up. This is weak. He has some sort of blockade right now, but I feel कि long term it should be lost. 2 दिन पहले वीडी से गर्लफ्रेंड पूछ रही थी, क्या बात कर रहे हो सही में भाई? मतलब यही क्वेश्चन पूछने होते हैं क्या? मुझे भी कर लो यार, मैं भी इंटरव्यू ले सकता हूँ फिर तो। ये तो मैं भी ले सकता हूँ, मुझे भी ले लो यार कोई चेस कॉम प्लीज कॉल मी फॉर इंटरव्यूज। विद के चांस के बारे में बताओ। विद के चांसेस यार कम है, स्पेशली बिकॉज वैलेंटाइंस डे में एक ही हफ्ता बचा है and he has to play the tournament, so I think chance बहुत कम है अब कि he will become single का double in the next week. वो funny type के इंटरव्यू थे, हाँ पता है सोच भाई, मतलब मजाक कर रहा हूँ। Wesley so is running away in D pool, he won with black. Yeah भाई, he's going to win I think. हरिकृष्णा के तो although if Hari wins today, he kind of catches up a little bit यार, मतलब हाफी पॉइंट पीछे रह जाएगा वो। Very important, he has to win today. वो इनका वर्ल्ड चेस का भी वो अंधेरा कायम है क्या? लेट मी चेक। वर्ल्ड चेस की स्ट्रीम पे वर्ल्ड चेस प्लीज कॉपीराइट मत देना यार, प्लीज कॉपीराइट नहीं देना। अंधेरा तो है इनका, आई डोंट नो व्हाई इट्स लाइक प्लेयर्स आर लिविंग इन द डार्क फॉर सम रीजन। ऐसे अंधेरा ऐसे लग रहा है, पता नहीं, मतलब मजबूरी में बिठाया, कोई हॉस्टेज सिचुएशन लग रही है, मतलब किसी के सर पे बंदूक रखी है कि भाई चेस खेलो वरना उड़ा देंगे। ऐसी सिचुएशन लग रही है किसी एंगल से। आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस। एनीवेज लेट्स पुट इट हियर। निकालो 10 करोड़। ओके टिकू भाई, पैसा ही पैसा होगा। पैसा क्यों भाई? कुछ ऐसा क्या हो गया पैसे वाला? मुझे भी नहीं पता क्या सीन कर दिया मैंने। व्हाट? क्या सीन हो गया भाई? क्या सीन कर दिया? नो इंटरव्यू कैन कम क्लोज टू डुबोव। भाई डुबोव से तो डुबोव तो क्रेज सब करता है भाई। ही टॉक्स अबाउट पॉर्न, ही टॉक्स अबाउट गर्लफ्रेंड्स, ही टॉक्स अबाउट एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम चेस यार, मतलब एवरीथिंग। बाय द वे रुकी 5 प्लेड नाउ
Rook e5, rook e5, knight e5. So this pawn is hanging. It's probably king g7 and then knight c4 and we move the bishop back. We want to put this bishop back ताकि हम pawn push कर पाए. बस ये अगर ये दोनों pawn exchange हो गए तो draw के chances बहुत बढ़ जाएंगे भाई. So you have to be very careful about exchanging these two pawns. Very important. टिकू भाई आपने बीटेक किया है? हाँ भाई बीटेक ही किया है. हम भी मजबूर हैं पर आप नहीं मत करना भाई. कुछ और कर लो. Who is the hottest chess player according to you? Okay, chat. I don't know. I think there's only one answer in all our minds. So let's not ask this question again. It's kind of stupid. Chill आदमी है डुबोव. बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही chill है भाई. और कार्लसन का second है. बोलते हैं ना, if you want to ask out the hottest girl in a group, ask out the second hottest first, and then you will have a good chance of making her jealous. So Anisha, good chance there to get Magnus. शिवम भाई दोनों पॉन के बारे में. So now I think to be honest king g7 looks logical, then knight c4 and let's say the bishop moves somewhere. Bishop d8 looks very logical. I think you prevent rook e7 and the first move that comes to my mind, my noob mind, is rook a2, rook behind the pass pawn. Then he can play rook d4 attacking the knight. And then I can play rook c2 because now there is no rook a1. Then rook d1. And now rook d2. And I win the game. It's completely winning now. Rook d2, rook knight d2 and I win the game. So Harikrishna should win this game, chat. He should win this game with good play. Vidit का draw होगा भाई. Shirov lost some time. क्या बात कर रहे हो? Anyway, 40 moves हो चुके हैं. 40 moves हो चुके हैं. That's why he gained some time. Hari flagged him by time. नहीं भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ. आज भी पूछा इस विदित गुजराती पता नहीं यार, मुझे नहीं पता. ये नहीं पूछा था आई थिंक. Are you the fighter appeal like you Anisha was speaking Norwegian? I mean I think learning Norwegian is a great way to get into Carlsen's heart, I think. So I can highly suggest it to anybody who's trying to woo Carlsen. ये नहीं पूछा था क्या बात कर रहे हो? अरे यार आई थिंक उन्होंने कुछ एरर किया था ना, कुछ नाम डालने में उसका, तभी उसने डाला था व्हाट्स इन अ नेम. आज मेरा OBS का ना प्लेलिस्ट इज नॉट प्लेइंग अगेन एंड अगेन. आई डोंट नो व्हाई. व्हाट्स रॉन्ग विद माय OBS टुडे. गाने बार प्ले करने पड़ रहे हैं. रुको भाई चैट. लेट मी डू सम मैजिक. मैजिक. Isn't Carlsen Anisha's bro? यार ये वो वाले ब्रो है जो होता नहीं है जब नए रिलेशनशिप में आते तो कहते हैं who's this guy? He's my cousin. हाँ वो वाला है भाई, ये वो वाला ब्रो है भाई. चेक ब्रो, बहुत फनी इंटरव्यू है. I'll check it भाई, बट ऑन स्ट्रीम चेक करने में डर लगता है मुझे भाई. प्यार से डर नहीं लगता भाई, कॉपीराइट से लगता है यार. आपने कहाँ से बीटेक किया था भाई? थापर यूनिवर्सिटी से. Anyways, I am actually learning Norwegian. क्या बात कर रहे हो? Okay, what's Carlsen is my boyfriend. What does it? How can you say that in Norwegian? Like how can you translate it? Translate करो भाई. Without Google translate. Okay, so अब शिरोव बहुत सोचेगा यार. कितना सोचेगा ये आदमी यार, ये बहुत सोचेगा यार. Shit. 40 मूव हो गए यार, बहुत सोचेगा आदमी भाई. किंग जी7 इज द ओनली मूवर. क्या खेल सकते हो यहाँ पे? मे बी जी5 बट दिस लुक्स सो बैड. तो खेल दे किंग जी7 भाई जल्दी से. आई एम थापर एलिवेट ओपी. अरे भाई एलिवेट ओपी कौन से ईयर में पास आउट हुआ भाई? अभी थापर में ही हो सिद्धार्थ भाई. Hari's winning pawn up and he just has to exchange rooks if he can somehow, and we saw it's kind of possible. Final year, very nice, yeah. Nice.
आई थिंक आई पास्ड आउट इन 2014, so काफी साल हो गए उससे। उतना नहीं पता, आई ओनली नो हाउ टू से मैन वुमेन किड्स, उतना ही चाहिए यार। मैन कार्सन, वुमन तुम और किड्स, और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए ही नहीं। I saw is a handshake page, true. Yeah, I saw that. भाई कितने से आजकल नहीं होता भाई, ऐसे टुंग 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 यही चलता रहता है भाई। नॉटी टिकू क्या है भाई, तुम भी तो बच्चे कभी पैदा हुए थे, नॉटी क्या है इसमें? 14, you're 28 years old. नहीं, I'm 29 भाई। I was born in 1992. Can VD win? भाई VD की गेम ऑलरेडी ड्रॉ हो गई भाई। It would be very surprising if he won now. घर बैठे बैठे भाई इसको if he won somehow, that would be very weird. एलिवेट क्या है? एलिवेट यार मैंने बताया था एक जगह है जहां पे लोग दर्शन करने जाते हैं। वर्ल्ड चेस के इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग है या मतलब कुछ इंटरेस्टिंग थे। आई थिंक डिस्ट्रिक्ट वाले बहुत फनी है, हिकारू वाले बहुत फनी है। बाय द वे चैट एक तरीका तो है कि मतलब वीडी कैन क्वालिफाई अगर अरोनियन का पॉजिटिव टेस्ट आ गया तो, बट ऑफ कोर्स आई होप दैट्स नॉट ट्रू, बट देयर इज ऑलवेज वन चांस। 10,000 का क्या किया? कौन से 10,000 जो पवन में भेजे थे? उसमें से एक तो भाई कल तो भाई टूर्नामेंट होना है चैट, कल एक टूर्नामेंट होगा जहां पे चेस बेस हम गिफ्ट करेंगे, सो कल तैयार है ना भाई। आई कैन से आई एम वुमन, यू आर अ मैन टाइप सेंटेंस राइट नाउ ओनली। सो बोलो ना, लेट्स से यू आर अ वुमन, कैसे बोलते हैं? आई वुड लव टू नो। साल के जन्म से ही स्कैम होता शुरू हो गया। अरे भाई एक बंदा था जो बोला था कि मेरे को पैदा किया, मुझे अपने पेरेंट्स पे केस कर दिया था उसने, याद है? वो था असली स्कैम वाला जो समय ने भेजा था। अच्छा वो यार, वो तो अगले महीने मिलेगा ना यार, वो तो नेक्स्ट महीने की उसमें आएगा। वैसे ही मैंने इयरमार्क नहीं करा कि भाई ये 10,000 इधर, ये इधर। टिंकू ओके। हाउ वाइल्ड कार्ड इज डिसाइडेड इन कैंडिडेट्स? बेसिकली यार फिडे देखती है कौन सा बंदा है जो बहुत डिजर्विंग है और क्वालिफाई नहीं कर पाया किसी रीजन से, उसको देते हैं वो लोग। तो मेरा चांस पूरा था इस साल, बट लेकिन रजवा को दे दिया उन्होंने। You need to make a Reddit man. Yeah, but actually audience बड़ी होनी चाहिए ना, because otherwise there will not be enough people to make funny memes somehow. ऐसा मुझे लगता है। समय का तो 8 लाख है तो there are enough people. I think 50K 100K से पहले बनाना useless रहेगा वो। आपको वैसे खुद नहीं पता, वो कुछ भी बोल सकती है भाई, कुछ बोले तो at least I can translate. No, I have Google Translate from with me. Do en Queen. Okay, let me translate that. Let me translate. Google Translate का भला करे भगवान। You are a woman, but I am not a woman. ये क्या है भाई? I am a woman बोल रहा था भाई, not you are a woman. I am not a woman. I can prove it. I am a guy. Anyways, good night Tikku bhai, hoping Hari wins. Good night bhai Rishikesh bhai. Good night Tikku bhai, hoping Hari wins. Okay, good night bye. टिक्कू लेडी जो, ये क्या है भाई? कुछ भी। हरे कृष्णा भाई चल दे भाई, चल दे, काम खत्म कर भाई, चल दे मुन्ना, चल दे। सॉरी शिवर भाई, इतना टाइम लगा वो लिखने के लिए, पक्का ट्रांसलेट किया हुआ। JRN केविन देन, भाई ये क्या है भाई? ज्यादा खतरनाक लग रहा है मुझे। आई एम अ वुमन देन, बट व्हाई आर यू वुमन देन? तो पहले से वुमन होनी चाहिए ना, दैट्स आल्सो रॉन्ग। Only if I am not a woman, then you are a woman. That's what it means, right? VD result, chat VD drew. VD has drawn his game, and अभी हरी कृष्णा की गेम देख रहे हैं हम, और आई थिंक सारे रिजल्ट्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं। सिर्फ हरी कृष्णा की गेम चल रही है और 2 और चल रही हैं। ग्रिस्टो अगेंस्ट एसिपेंको तो इट्स लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग, बट रफली अ ड्रॉ, इक्वल मटेरियल। एंड रैपोर्ट अगेंस्ट वोडाशेक इज ऑल्सो अ ड्रॉ मोस्ट लाइकली, सो we might see like a lot of draws remaining. I think Hare Krishna game में win हो सकती है बस। Can Shirov have drawing? Yeah, so what Shirov wants is to exchange this pawn for this pawn. If he can play rook a1, rook takes a4, and white plays rook c2, rook takes e5, then he will have some drawing chances. But white will try to avoid it, yeah? He will try to avoid the exchange, and he will try to keep these 3 pawns solid. Shout out to Tikku bhai. अरे shout out Arnav भाई। Good night को शाकर भाई। Duo क्या हुआ? Duo जीत गया भाई।
वो अपने गेमर को भाई हरा दिया भाई, वो भी मेरी तरह गेमर बनने वाला है बहुत जल्दी अब। यो सिद्धार्थ भाई व्हाट्सअप व्हाट्सअप, कैसे हो भाई? If you had to pick two guys in candidates in the current qualifiers, whom would you pick objectively? That's very difficult. Objectively, I would say Wesley, clearly, no doubt, and Aronian. I think they both deserve it. I think clearly, अगर मतलब हाँ क्लियरली वेस्ली एंड अरोनियन, बिकॉज आई थिंक दोनों ने बहुत बढ़िया खेला है, बहुत बढ़िया खेला है। अनीशा सुपर चैट करने की जरूरत नहीं थी। ओ माय गॉड टिकू, first you said how to say you are a woman, so translate to the Kevin, then you said to translate I am a woman, so I said Kevin, then आप कौन सी समझिए? मैं समझ गया यार, but at least I am a woman बोल के तो यार then नहीं आना चाहिए ना, there should be no then there, I am a woman होना चाहिए। so क्लोज समझ रहे हम, बट स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स, तो वहां पे देन नहीं आना चाहिए। बट थैंक यू फॉर सुपर चैट। अनीशा अगले 12 year old, नहीं, but then she would be fine if Firuza being 18, yeah, so if she's not fine then she's not 12 year old। साहिल for GM वाले thanks for it भाई, thanks a lot for the kind words भाई। someday man surely, I think मैं प्रैक्टिस आज से स्टार्ट कर दिया थोड़ी बहुत, और तभी वो चेस बेस हैंग कर गया था आज। Are you friends VD? I did contact VD. I did send him an email and he will come on stream at some point in the future for sure. और आज ही मेरी सागर भाई से थोड़ी बात हुई है मेल पे, तो थोड़े कनेक्शन बन रहे भाई। बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे भाई, एक दिन बुलाएंगे भाई सागर भाई को, एक दिन बुलाएंगे भाई VD को, एक दिन बुलाएंगे भाई मतलब मलिका, एक दिन बुलाएंगे भाई समय को, इन द फ्यूचर समडे। मस्त लोग यार, मतलब ये लोग चेस को इतना आगे लेके जा रहे हैं, इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, मतलब यू काइंड ऑफ लर्न फ्रॉम देम एंड यू आल्सो काइंड ऑफ be a part of their journey as well, हाँ तो ना बुला के। Why did you call अनीश? भाई अनीश को बुलाना तो मेरा सपना है भाई। अनीश जिस दिन आ जाए ना भाई, उस दिन मैं यहाँ पे सीट पे खड़े होके नाचूंगा भाई। अनीश तो सपना है भाई, अनीश इज अ ड्रीम कम ट्रू। someday I'll definitely call him, definitely। अरे बच्चों के पास ऐसी पैसे कहाँ से आएगा? बच्चों के पास पैसे मैग्नस कब आ रहा है स्ट्रीम पर? भाई मैग्नस ने सब्सक्राइबर बढ़ाने पड़ेंगे काफी ज्यादा काफी ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे सब्सक्राइबर अनफॉर्चुनेटली मैग्नस को बुलाने के लिए। अनीश तो चैट पर आ चुका है ना? हाँ चैट पर 2 बार आया भाई, बट स्ट्रीम पे ऑन वीडियो भाई जब साथ में बैठे हो भाई वो अलग फील है ना। अनीश को ट्वीट करो, ही विल जॉइन समडे। या आई नो भाई, बट खुद कभी ऐसा कुछ होगा जब लगेगा तो मैं बुलाऊंगा फॉर श्योर। What do you think? Who publishes more in India, Samay or Sagar? I think Sagar has been doing for much longer because he was doing it for many years back. But Samay of course has this pull of his audience जिससे वो ज़्यादा लोगों को गैरी कर पाता है। वो तो clearly पिछले last couple of years समय ही होगा I think। लेवॉन को हरवाओ पहले डुबोव से। यार लेवॉन को हरवाने के लिए क्या करे भाई, हमने भीख मांगी, हमने पूजा करी भाई, नारियल फोड़े, सर फोड़े, मगर लेवॉन नहीं हारा भाई। Sahil we all shy when he joins, ऐसा कुछ नहीं होगा Pernali, surprisingly enough that will not happen। I'll be very comfortable with him to be honest, because I mean he came on a channel where we had 800 subs man, like that's crazy, like इतना down to earth बंदा है, उसके हमने क्या स्ट्रेस लेना। हरि कृष्णा क्या हुआ भाई? वही ओ हरि कृष्णा गेम नहीं है, हरि कृष्णा गेम तो ये चल रही है यार। ओ रुकी ऑन प्लेट, मारो भाई मारो, खत्म फिनिश ओवर, मारो कौन मारो भाई। शिरोव तो भाई कुत्ता कुछ खास खेल नहीं रहा आज। विल यू प्ले इन CS? आई एम नॉट दैट स्ट्रांग येट। व्हाट इज द हेल्प ऑफ द आई एम ह्यूमन इंटेलिजेंस? सबसे पहले GM, फिर आएगा IM, फिर आएगा WGM FM, फिर आएगा NMCM, और फिर आएगा WFM, और फिर आएगा भाई घंटे का टाइटल तुम्हारा। David is one of the coolest GMs in my opinion. Yeah, true. He's fun and he plays really well as well. मतलब he world rap में कितना खतरनाक खेला भाई वो। But somebody removed the elitism from the field. Now everyone who watched him doesn't feel inclined to chess. That's true. That's exactly the point. Yeah, मतलब he brought the game to the audience. मतलब जो normal audience है, पहले सोचते हैं ये चेस खेलता है, ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट होगा रे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं भी खेलता हूँ चेस। That's evidence.
जब चैट पर आ गया था तो स्ट्रीम पर भी आएगा, इज अ जेम। दैट्स ट्रू भाई, दैट्स ट्रू। Blunder, yeah, it's a blunder because now I don't want to save this pawn. I can simply take this pawn. I'll have 3 against 1 and he'll have this 1 pawn. That's completely winning. I will play rook e4, knight c4, blockade this pawn later on. So knight g6, rook a4, and all I have to do is just blockade this pawn. I should be completely winning. It's of course going to be tough now, but I think f4, g4, f5 and so on should be completely winning for white. Let's see what happens. समय के सब बैटल कितनी बार हारे हो, ये नहीं पूछते आप, पूछते ये है समय की सब बैटल में कितनी बार आपने टीम को जिताया है। दैट्स द करेक्ट क्वेश्चन। दैट इज 100% अपार्ट फ्रॉम 1। डुओ गशुक आर द कूलेस्ट इन माय ओपिनियन। आई मीन सारे कूल है यार चेस में। आई थिंक टॉप प्लेयर्स में बहुत सारे लोग ऐसे जो फनी है, कूल है। अनीश इज द बेस्ट दो। नहीं, नाइस इज नॉट द बेस्ट। अनीश इज द बेस्ट जीएम भाई, देयर इज नो डाउट। अनीश गिरी ओपी भाई, always. VD Drew भाई, VD Drew. Gurchuk is pretty fun though, हाँ मस्त तो है, उसके मजा आएगा कभी। But I think he's slow. And then I played e4 and then थोड़ा सा स्लो है वो, बाकी लेकिन कूल तो है। 2 से 4 के अलावा सब कूल है। That's true. That's true. 2 से 4, yes. I think yeah, true. Yeah, 2 से 4 के अलावा। अरे ग्रिशचुक एक बार लिटरली ना उसको किसी बोर्ड पे खेल रहा था, वो किसी और बोर्ड पे जाके बैठ के मूव चल दिया भाई। इतना एपिक बंदा है। Honestly, I was very surprised by how many cool and down to earth chess players are in top. Yeah, but it kind of makes sense, no? But it's like ऐसा नहीं है। There were time की बहुत realities in the chess में, मतलब like you just could not approach Kasparov for example. Like एक book है Calculate Like a GM by Daniil Dubov, ऐसे कुछ GM है वो। He's like 2650 GM यार, इतना बड़ा GM था वो। So he says कि मैं एक बार कस्पारोव की गेम देख रहा था। He was playing a game and Kasparov sitting like this, ठीक है? He explains it in great detail, vivid detail. So Kasparov is thinking like this and he's playing a very great, like a classic, attacking game, and he checkmates like his opponent. And he gets up ऐसे चौड़ में ना, कस्पारोव ऐसे चौड़ में उठ रहा है, ऐसे उठ रहा है, एंड गोरमैली गया उसकी पीठ पे थपथपाया ऐसे, वेल डन गैरी। गैरी उसको घूरता है ऐसे, तू कौन बे? कहता मेरा मन कर रहा था मैं बस धरती में घुस जाऊं, मेरे को कोई चिड़िया उठा के ले जाए। भाई मैं पैदा ही क्यों हुआ? मतलब वो 2650 जीएम था भाई, वो 2650 GM था, just imagine. So it's not always been that way. I think it's only because of the last couple of years जो ये चीजें चेंज हुई है। Yeah, he played rook e4, but this is also winning chat. Don't worry, जीत जाएगा अभी। It's not a big blunder or something. It's fine. Not the best move, of course, though. Hari blunder, yeah, it's not really a blunder, I think. मतलब he's still, I think, winning. Knight c6 at some point is possible still, but थोड़ा मुश्किल हो गया because the bishop is kind of blocking this pawn and rook behind the pass pawn is very important, as we discussed. Yeah, very important. Why do you need to become a GM IM just to say an NM? What's difference? Injisha, because GM IM, yeah, I mean I'm playing chess and I want to get better. I mean that's the basic reason after all. Of course there are monetary benefits and so on, but I mean you want to be a GM. That's every chess player's dream, and it was my childhood dream and I will totally try to achieve it for sure. GMs also have existential crisis. Yeah, GMs भाई कई GM इतना रोते हैं ना भाई, किसी GM को तुम हरा दो, तुम कहते हो ना like if you defeat some GM online, वो बोलेगा तुम चीटिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो। तुम OTP हराओ भाई, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। OTP हराओगे ना, ओए भाई। एक बार एक IM से खेल रहा मैं, आई एम कंप्लीटली विनिंग, वो मुझे क्लॉक ही दबाने नहीं दे रहा भाई। क्लॉक पे हाथ रख के बैठ गया वो, कहता मैं दबाने नहीं दूंगा। मैंने कहा भाई क्या चोमू इंसान है भाई। सो टाइटल प्लेयर्स भी कुछ कर सकते हैं ड्रामे। He is more fun and relaxed now that he's not playing competitively. That's true. Now he's more relaxed. True. Once an arbiter came very close and looked at his game, he spared him, so the arbiter did a quick 180 and fled. Nice. और उसने कस्पारोव ने किसी की उड़ाई भी थी एक्चुअली। आई थिंक इट वाज सम आर्बिटर जिसने कोई साइमल रखा था जहां पे 2200 रेटिंग वाला एक बंदा खेल रहा था। ही वाज लाइक, मतलब हाउ इज दिस 20 गाय प्लेइंग, आई डू नॉट नो अबाउट दिस। क्या उड़ाई थी भाई उसकी? कौन था आईएम? कोई आई थिंक मॉन्टेनेग्रो या किसी का कुछ आईएम था भाई, लोल आदमी था वो। If someone starts playing chess 15, can he become GM? Surely he can, but effort बहुत ज्यादा लगेगा, 10 times effort.
So many GMs are every Indian बच्चा है who says यार मुझे नहीं खेलना. Yeah, kind of, but I think it takes effort, of course. सुपर चैट नहीं कर सकता स्टूडेंट हूँ भाई. किसने कहा करने को भाई? चिल करो अर्नव जी. भाई आपके नाम में गांधी है. आपके पूर्वजों ने देश के लिए बहुत कर लिया भाई. आप चिल करो. आपको सब अलाउड है भाई. Raja was funniest in stream. Yeah, but Raja is now totally focused on the game, yeah? Imagine Magnus putting hands on clock. I mean, he does to press it once. Scott Rose. I don't know who he is. I have no clue. कोई ट्रैप ना उसमें. कोई ट्रैप ना हो, लग रहा है मुझे. So, अभी वाला गांधी कुछ नहीं कर रहा, बट अरे यार मतलब मैं अभी वाले गांधी पे कमेंट नहीं करूंगा. पॉलिटिक्स पे नो कमेंट्स, बट पुराने वाले ने काफी कुछ किया है. What about rook g4? Rook g4 is possible, and black will of course go g5, and then if you go h4 for example, then he will try to play king f6 and he gets away from the spin. So it's not winning for white anymore. मतलब थोड़ा कुछ और weakness create करनी पड़ेगी. One should stick to one opening or try variety. I think you should try variety once and see which suits you, and then you should stick to that opening for now. Will VD qualify now? अरे भाई कम chances है. It is possible for sure, but कम है थोड़े chances. So अपनी किस्मत साथ देनी चाहिए हमारी. अगर ऐसा होता आपकी जगह तो आई का हाथ तोड़ देता भाई. ये तो है, बट भाई वही ना, शराफत का कोई जमाना नहीं है भाई. शाह सिंह अभी वाला ये भाई मैं पढ़ नहीं सकता, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे उसमें. VD game result. VD game drew. Yeah, VD drew his game against Levon Aronian as white. Yes, VD drew. हाँ राहुल गांधी मेरा बेटा है. लाइफ इज अनफेयर. अर्नब भाई यार दैट इज प्रॉब्ली नॉट ट्रू. ध्यान से भाई, संभाल के थोड़ा सा, घर पे कहीं नॉक ना हो जाए. If for example rook g4, g5, king h4, king f6, knight d7, I can simply play king f5, attack your rook now. So the rook has to move, let's say rook c4, and now I simply, I don't know, maybe I take on h4 now, or I play, what can I play here though? Probably just king e6, yeah, knight c5, king d5, and so on. Looks very strong for black. It's kind of holding, barely holding, I feel. मतलब ये pawn exchange रहेंगे, ये pawn भी जाने वाला है. Rook has to probably come back. Then bishop b6, and I win the a4 pawn. So the knight has to move, of course, and then I win this pawn. So draw chances काफी हैं अब, बहुत chances है draw के. We might get a rook and knight against rook. That is also a dead draw. VD should have more confidence. He has, buddy, he has. Panal, I'm so jealous of you. I wouldn't know how to behave in front of him. In front of whom? I missed some chat, I think. अभी बिरयानी खाई है गवर्नमेंट ने, नॉक किया तो भाग भी नहीं पाऊंगा. Do you think the format of Grand Prix is needlessly long? It is kind of, I feel. It is a bit longer than usual because they're trying to find the best player. But honestly, I mean, if you're spreading a tournament over 2 months, of course with gaps, but still, I mean, it's a bit much usually. तो World Championship भी नहीं होती. I think they should have kept 1 week for each tournament, 3 tournaments, and finish in 21 days or 30 days. That would have been appropriate, I feel. Akkad Bakkad Bombay would have been better. Akkad Bakkad Bombay वो ठीक है, but उससे प्रॉब्लम ये है कि यार कर सकते थे एक्चुअली. कितने प्लेयर है? 24 प्लेयर है. सो कितने पे आएगा भाई? काउंट करो. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 काउंट करो कितने वर्ड्स है भाई उसमें. वी कैन सी इफ वीडी वुड हैव वन विद अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो. हिज नेम इज अर्नब, विल जस्टिफाई व्हाट ही सेड. ओके बट वो अर्नब है भाई. अर्नब और अर्नब में बहुत डिफरेंस है. समय के नाम से सिलेक्टेड बाय अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो. ओके भाई बट समय विल नॉट प्ले. आई थिंक सो. It would be fun to see Samay though. I think Samay versus Vidit in the Grand Prix, जहाँ पे एक बंदा भाई 20 मूव कैलकुलेट कर रहा है, एक बंदा 20 मूव तक हग रहा है. Can Hari win this game? He can, but the thing is, Bishop is a huge advantage here. I mean, you can simply try to capture this pawn now, and in the end, you will sack the bishop for 2 pawns, and it should be a draw, I think. What would be the worst move in this position? For white, okay, worst move is
Probably rook e1, I guess. या rook d4. अक्कड़ बक्कड़ में 21 वर्ड्स हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई मतलब नीचे से तीसरे नंबर पे कौन है भाई. विदित का नाम वी से आता है, किसी का नाम आता है उसके बाद, लाइक अल्फाबेटिकली किसी का नाम वी के बाद आता है क्या? वेस्ली आता है एक बंदा, और कौन है? और तो कोई भी नहीं है ना. बोर्ड से आता है दो बंदे. ओके, दो बंदे हो गए. वीडी मॉनिटर वन. यार इंटरेस्टिंग. Was Hari winning early? He is still kind of better, but yeah, he was winning at some point. अरे विषयान ठीक है, बट अरे हाँ विंसेंट केमर भी है भाई, तो 3 लोग तो हो गए, तो बढ़िया है भाई, फिर तो वीडी जीत गया ना. 3 लोग मिल गए भाई. वीडी इज विनिंग देन. Knight is definitely good, but I feel I could just play bishop b6 and I just defend this pawn, I feel, and you still can't go a5, and if you go knight d7, if only I can move it, then probably bishop b4. Also rook a2 is also possible, by the way, attacking f2, and if king g2, now bishop b4 maybe. And it still defends the pawn, so it's not so easy, man. ऊपर से अगर ये exchange हो गया, for example rook c4, let's say I don't know what to play here though, it's not so easy. Let's say h5, knight c5, bishop c5, rook c5, rook a4, this is a dead draw. यार ये पूरा का पूरा draw है यहाँ पे. It's similar to what VD had, so draw के chances बहुत लग रहे हैं मुझे, बहुत ज्यादा chances हैं. वेस्ली का 100 काउंट होगा. अरे यार घंटा फर्क पड़ता है, 100 हो या वेस्ली, हम तो एक ही बंदा है ना. कल टाइल ट्यूजडे खेलोगे? आज मंडे है, आज ट्यूजडे है. आज मंडे है, हाँ कल खेल सकते हैं यार. अरे हाँ कल खेल सकते हैं यार, कल ट्यूजडे है. लेट्स सी. It's so funny that I am trying to press the clock, Lamau. I can't stop. Like, yeah, I was like, I was like, I think 3 or 4 pawns up. I मैंने pawn यहाँ बिठा कर रखे थे. C5, D5, E5, F4. He was like completely lost. And वो बेचारा एक B file पे खेल रहा था बस. It was lame, super lame. Dina asked me today, one of the 10 questions science cannot answer. It's Vidit Gujrathi or Gujarati. Knight d3, bishop b6, rook c4. Okay, knight d3, bishop b6, rook c4. Again, I just play g5. If you take the pawn, I take the knight. You take the pawn, I take the pawn, and it's a draw. We go home, shake hands, shake what I want to, and go home. Kal race hai, kal race exactly. भाई ये बहुत लंबा खेलेंगे भाई. कम ऑन, थोड़ा फास्ट भाई, थोड़ा फास्ट लाओ. 18 मिनट है शिरोव के पास, 25 मिनट है हरिकृष्णा के पास. दे विल नॉट गेन एनी मोर टाइम हियर, सो इतना टाइम भी नहीं है. पता नहीं काहे सोच रहे हैं यार. हरिकृष्णा का चांस जीतने में ही है. इफ ही ड्रॉस तो इट्स ओवर फॉर हिम, आई फील. मैग्नस ने और कोई क्लासिकल गेम खेला क्या नॉर्वेजियन लीग में? आई डोंट थिंक सो. खेला होता हमें पता रहता, और खेला भी होगा तो पक्का जीत गया होगा. वरना अब तक हेडलाइंस होती भाई, कार्लसन हैज लॉस्ट मोर रेटिंग, कार्लसन इज अ नूब, 2400 IM भाई, सॉल्विंग वर्ल्ड हंगर नाउ. मतलब वो बंदा ही इज अ सेलिब्रिटी. टेक व्हाट यू वांट टू. एग्जैक्टली भाई, फ्रीडम ऑफ शेकिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी है, तो फ्रीडम ऑफ शेकिंग होनी चाहिए. Knight is played by Harikrishna, by the way, and black just played rook a3, so he attacks the knight. And if you, for example, capture on c5, you say pawn mil gaya, suddenly bishop b6, and you cannot move the knight anymore. And if rook c4, then he takes the bishop, you take the knight, take the pawn, and it's again a draw. Chat, unfortunately, I think Harikrishna game draw hone wali hai, and he'll be very pissed at himself. He'll be very pissed because then he also has almost minimal chances now. ये इंजन्स की क्रिएटिविटी की वाट लगा दी, सब स्पॉइल कर दिया. इंजन्स की क्रिएटिविटी, आई डोंट नो ये कहां पे रेफरेंस है भाई. फ्रीडम ऑफ लिबर्टी. अर्नू, हरी इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर एवरी ओपनिंग एक्सेप्ट लंडन. आप सिखा दो.
आज लड़ने तो नहीं खेला इसके ओपोनेंट, लेकिन ये तो वाइट, हरिकुद वाइट है। साहिल भाई कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाया ओटीवी चेस की, इफ रिमेंबर एनी। भाई स्टोरीज बहुत है, अगर आप 1000 सब्सक्राइबर से पहले आए थे यहाँ पे चैनल पे तो यू वुड रिमेंबर लाइक टन्स ऑफ स्टोरीज। इतनी मैंने क्रेजी क्रेजी बताई है। आई डोंट नो व्हिच वन आई शुड से। आई नो स्टोरीज का एक्चुअली अब ये हो गया ना कि लाइक मतलब दो स्टोरीज में लाइक प्री पैंडेमिक टाइम्स। आई थिंक अब तो अलग ही होगा, लाइक यू विल हैव टू वेयर अ मास्क फॉर द टाइम बीइंग। जैसे जो एएसएफ का जो नेशनल का वो है, nationals में it's compulsory to be vaccinated. You also have to wear a mask, and which I will of course anyway if they did not say, but it's like मतलब बहुत complicated है यार। और इंडिया में क्या है कि not everybody can afford to even wear a mask every day. Like everybody who plays the nationals is not well off enough कि वो mask रोज पहन पाए। So it's like क्या ही कोविड स्प्रेडर बनेगा वो नेशनल्स में, पता नहीं है। आमिर खान ये स्ट्रीम देखते हैं क्या? नहीं, अरे चेस टॉक नहीं है, दिस इज चेस असिस्ट। इवन तो हम टॉक बहुत करते हैं चेस के बारे में, बट चेस टॉक नहीं है। अगर डुओ सर्वेंट में लंदन ओपनिंग हो गई तो डुओ विल विन। अबे यार आई डोंट नो मैन, मतलब आई जस्ट फील कि अरुण को हराना इट्स वेरी डिफिकल्ट। वी नीड लाइक अर्जुन देयर, अर्जुन ही कर सकता है वो। आपका बूस्टर लग गया भाई यार, मैं इतना बूढ़ा नहीं हूं कि बूस्टर का मेरा वो स्लॉट आ जाए अभी। कोई बढ़िया वॉर मूवी, वो देखो यार, कौन सी थी वो, कोई गेम, सम गेम चेस के ऊपर थी यार, कौन सी थी वो चेस वॉर मूवी, कौन सी थी यार वो? हाँ, द कोल्डेस्ट गेम भाई, वो देखो अच्छी, आई लाइक इट। द कोल्डेस्ट गेम अच्छी मूवी है, चेस के ऊपर है एंड कोल्ड वॉर के ऊपर है, वो देखो, इट्स अ नाइस मूवी, द कोल्डेस्ट गेम। सर विद का क्या रिजल्ट था? वो ड्रॉ रहा अमर भाई। हाउ कैन ही विन? बेसिकली ही नीड्स टू कीप दिस पॉन्स ऑन द बोर्ड, देन try to play knight e5, start pushing the pawns as much as he can, bring the king to the center if possible, and maybe to d5 as well. And very very slow progress I feel. Matlab there is no way on earth ki he can just win quickly. COB6 का मैं पता नहीं यार, I have no clue. समय जो नया इवेंट करवा रहा है उसके बारे में कुछ पता है? कौन सा नया इवेंट भाई? मुझे आइडिया नहीं है कौन सा इवेंट है भाई। Do you remember the days when you had us watching? Now you're going to your credit. Do you want to give credit to someone? Credit to someone. Yeah, I think first of all, it's still kind of speculative how far we have grown because events में obviously watching ज़्यादा होती है. But yeah, I would say कि streamers के साथ interact करने से B-Stats, प्रखर, विवेक, समय जितना interaction हुआ है, it definitely helps. Comedian GMs will be involved in the event. Yeah, but कौन सा event है? आज बोला क्या उसने? मुझे पता नहीं यार. Someone said comedians and GMs will play together. भाई आई कैन टोटली इमेजिन भाई जो गालियां पड़ेंगी। मतलब इमेजिन करो बेचारे जीएम्स, बेचारा अधिवान खेल रहा भाई अपनी नई नई शादी से टाइम निकाल के, बेचारे ने इतना 25 मूव तक मैनूवर कैलकुलेशन करी भाई, क्रेजी निकाला, एंड सडनली भाई उसके बाद कोई कॉमेडियन जाकर 2 में गेम दे दिया भाई, क्रेजी। आज नहीं, पिछली स्ट्रीम में बोला था। अच्छा ओके, इंटरेस्टिंग। Are you buying a CSD? भाई तुम्हें लगता है मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है यहाँ पे? भाई इसमें ग्रिस्टुक की गेम में ग्रिस्टुक को एडवांटेज दिखा रहा है, लेकिन ड्रिल तो ड्रॉ ही, कैन एक्सप्लेन। ऐसे पे ग्रिस्टुक ओके, they have already drawn, by the way, they've already drawn. I think it was a mouse slip, yeah. I think he must have played, not king e6, he must have played king e7, and white must have offered a draw. So basically when they finish the game, they place the king on e5 and e4 just to kind of show the results. So वो एक mouse slip है. He has not played king e6, of course. White would obviously take the queen. So they took a draw. And the final remaining game, apart from Harikrishna, is Rapport against Votacek, which is a dead draw apparently. 3 pawns each. Nothing happening here. So ये भी draw होगी. सिर्फ हरिकृष्णा की गेम पेंडिंग है। पैसा तो बिस्वा के पास भी नहीं, वो अलग बात है। चेस स्किल्स भी नहीं। अरे भाई बिस्वा कॉमेडियन है भाई, चेस प्लेयर नहीं है वो। Shouldn't Kapil Sharma invite Vishy Anand? That would be a great boost to chess in India. Yeah, but I mean कपिल शर्मा का मुझे पता नहीं ना भाई, उसकी मर्जी किसको बुलाए, वो फिनिशर को बुलाए, विशी को बुलाए, किसमें उसका बेनिफिट है वो देखेगा ना वो। You missed the VD game, you missed a crazy game man. बहुत crazy थी, but unfortunately ended in a draw. And
दैट बेसिकली मेंट कि मतलब कुछ कर नहीं सकते अब, एंड विदित हैज टू टोटली बेस हिज ओपिनियन कि अब उम्मीद से डूबोव हरा देगा अरोनियन को, एंड वीडी हरा देगा डूबोव को, एंड ही विल गेट अ चांस. That's all he can do now. There's not much he can do anymore. So yeah, that's pretty much it. मैच ला सोने सुबह अपडेट करता है रिजल्ट्स, बाकी है 2 सुबह कर देना भाई, कोई चक्कर नहीं. कपिल हिंदी में बोलता है, विच इज इंग्लिश में, एंड ही डिडंट विन एनीथिंग रिसेंटली. आई मीन दैट्स नॉट, आई मीन कुछ रीजन जितना जरूरी नहीं है यार, मतलब ही हैज अचीव्ड अ लॉट. ऐसा नहीं कि ही विल नॉट इनवाइट विशी सर, बट आई फील कि मतलब यूजुअली कपिल शर्मा ट्रेंडिंग में काम करता है ना. इट्स लाइक यूट्यूब ट्रेंडिंग, मतलब किसी की मूवी आई उसको बुला लिया, किसी की टीवी शो आया उसको बुला लिया, किसी ने ब्रेकअप कर लिया उसको बुला लिया, किसी ने न्यूज बेच दी उसको बुला लिया. सो मतलब इट डिपेंड्स ऑन व्हाट्स ट्रेंडिंग राइट नाउ, सो इसलिए शायद बुलानी होगा. विशी could go to promote his biopic. Yeah, that's true. अगर बायोपिक आई तो पक्का आएंगे, वो तो है, that's true. क्वीन वाले मुंह से गेम पलट दिया विडी ने, ये तो है यार, ये तो है. he could have won that one. But anyways, अरे भाई ये तो ड्रॉ हो गया भाई. चलो भाई, हरिकृष्णा ने हम सबको अपनी मिजरी से निकाला, उन्होंने पॉन मार दिया है. बिशप b6 के बाद अब रुक c4 खेलेंगे और ड्रॉ करेंगे जल्दी से. He can give a check of course, but then after king f7, I think ये पॉन जाएगा ही जाएगा कभी ना कभी, and it's not long term holdable. Let's see भाई जल्दी कैसे ड्रॉ होता है. गिविंग फॉरएवर जी रो रहे हैं फॉर सम रीजन, लगता है उनकी भी गर्लफ्रेंड भाग गई एक हफ्ता पहले वैलेंटाइंस डे से. फीलिंग सैड फॉर यू भाई. विच इज अ 5-time वर्ल्ड चैंपियन. यस, ट्रू. Kapil's show is basically movie promoting show. Yeah, that's kind of true actually, but it's funny. But yeah, it's kind of true. तो बायोपिक बनना हो विशी की, भाई बन रही है. It's already been announced, by the way. It's already been announced. Hari not winning. भाई यार ये तो नहीं है, winning तो नहीं है. I don't think Dubov must defeat Levon. From my opinion, if Levon draws 2 games and VD wins both of his last games, then Levon and VD will be both on 4 points and heading to tiebreak. But Levon will play against Kamer, so that's very likely Levon is going to win. That's first thing. Second, Dubov is also ahead of Vidit now, I think, if I'm not mistaken, and that basically means कि उसका भी ख्याल रखना है. So yeah, I would rather hope कि Dubov defeats जो भी हो, मतलब बस टाई हो जाए भाई. जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है बस टाई हो जाए और विदित को चांस मिले एटलीस्ट. आमिर खान प्लेइंग विशी, दीपिका हिज वाइफ, कुछ भी. ये किसने बोला भाई, ये किसने बोला? मैं हरा दूं लेवॉन को 11 से रेटेड. नाइस यार, नाम गांधी डजंट मीन कि हर बार अहिंसा काम करेगी. यहाँ पे अहिंसा चाहिए हमें. 4 hours completed. Yeah भाई, I think now we can end the stream in a couple of minutes because I think ये एक डेड ड्रॉ है अब. Now there's nothing to do. ओहो पार जी, हमारे बिलियनियर, ओरिजिनल ओजी बिलियनियर इन द चैट. कैसे हो भाई? जिस चैनल, मस्त नाम है बंदे का. Repeat VD game. Yeah, so VD game chat. Yeah, we can do a quick roundup. I think it was all opening prep for both sides in the Catalan, and then unfortunately for VD, Levon was so well prepared and he could not really find any sort of great edge, but he got a play of a position in the endgame, something like this. And this was the critical position, this endgame. Yeah, this endgame. And it does feel it's better for white because black has 1 extra pawn island, white has a strong bishop on c3, and it feels like it's slightly better for white. And we did kind of make it a bit better for him, but then slowly, gradually after queen b3, Vidi had to take on b3 here. If he had taken on b3, he would be absolutely fine, but he played the move rook a3, and then after the exchanges, it was just a dead draw, and there's nothing to do. Have you seen this video? कौन सी video है यार? Let me see. ये स्टूडियो पे खुलती नहीं है for some reason. I don't know why it does not open on the studio. अर्षित भाई, I don't know. खुलती नहीं है because वो लिंक का पूरा लिंक दिखता नहीं है. Let me check on the phone. हाँ, I've seen that video भाई. Maurice Ashley वाली ना. I've seen that video. Trash talker वाली. हाँ, I've seen it भाई. 2 pawns अभी draw. कौन सी 2 pawns up है भाई? रुको. या ये वाला. So 2 pawns up में चक्कर ये है कि यार मतलब ये pawn बचेंगे नहीं. Either this pawn or this pawn will be lost soon. If you move the knight somewhere else, I'll probably take on f2 and it's all fine. The only move is knight e6 check. Then I play king f7. And long term after, yeah, rook a2 is coming up, but there's not much you can do. For example,
king g2 feels like defending the pawn, but now rook a2, and there's not much you can do to defend this pawn. So knight d4 is probably the only move, but then I just take the pawn, and it is a dead draw now. It is a dead draw. पहले लगा रिकरोल होगा, नहीं भाई रिकरोल नहीं था. डोंट ओपन वीडियो, वेरी रिस्की. नाइस. दिल्ली इंटरनेशनल खेल रहे प्रोस्पेक्टस आ गया आपके पास या मैं भेज दूं? आ गया क्या? क्या बात कर रहे हो? दिल्ली इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टस भी आ गया भाई. ऐसे तो फास्ट काम कर रही है. लेट मी चेक दैट इज एक्चुअली ट्रू. प्रोस्पेक्टस दिल्ली 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 दिल्ली. नहीं, कहाँ है यार? अभी तो नहीं आया. डिस्कॉर्ड में भेज दो जनरल में भाई. ये आज साहिल ने भेज दो. आई चेक इट आउट. कहाँ पे आया मुझे तो नहीं मिल रहा यार, और तुम्हें पता नहीं कहाँ से मिल गया. फास्ट हो यार तुम. ओके, आई तो कांट सी इट. अच्छा आ गया है. वो आ गया, जेन्युइनली आ गया भाई. क्रेजी. नाइस. By the chat, knight e6 check played by Harikrishna now. He will play king f7 or something like this. Let's see. Please check my DM on Instagram. I will, bhai. I will check it. I barely check Instagram nowadays. इसलिए शायद मैं देखा नहीं होगा. I will check it out. क्या DM किया भाई? यही लिख दो भाई. ऐसा क्या है DM में? विषय का पैक कब अनाउंस हुआ? ये अनाउंस हुआ था यार. I think a couple of months back, if I'm not mistaken. इसी साल लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट ईयर यार, कुछ ऐसे कुछ हुआ था. हरिया कोई चांस नहीं है. चांस है, चांस तो है यार. फॉर एग्जाम्पल इफ योर ब्लैक हैज टू आई थिंक प्ले किंग f7, किंग f6, किंग g2, rook a2, knight d4, and now if rook to d2, there is rook e6 check, so you win the bishop. So that's why black king has to go to f7 instead of f6. That's very important ताकि वो rook e6 check ना है, and that's the idea. So by the way, he played, or let me refresh, what did he play? I vibe so hard on this background music. Thanks, Abhi. Yeah, he played king f7, chat. He played king f7 and now it's a dead draw. I think we can end the stream now, chat. It's a dead draw and not much to do. देखो 12 बजे की आपके साथ हूँ, अब तो मॉड बना दो भाई. 12 नहीं बजे पसंद भाई. 12 नहीं बजे अभी. Chat, so final round up कर लेते हैं. Grischuk has drawn against Yasipenko. Hikaru drew against Backrot. Fedosi won against Oparin. Rapold will draw against Voracek. Yeah, draw incoming very soon. Tesiso defeated Dominguez. Daniil Dubov defeated Kamer. Vidit drew against Aronian. And finally, we have Harikrishna who's going to draw against Shirov. That means दोनों के chances अब बहुत कम है to kind of qualify, but still possible if they kind of end up winning the future games. So let's see क्या होता है. जाल से जाना पड़ेगा मेरे दोस्त, जाना पड़ेगा भाई. नींद भी करनी है भाई. COV इसका पता नहीं भाई. Any chance of VD? I think he has to just win both his games. और कुछ नहीं है. I think from his point of view, all he can do is win both games. It's white against Kamer and black against Dubov is doable. दोनों गेम जीतनी है बस. And then he can hope for luck. हरी can also win, but हरी के chances और कम है because हरी के ग्रुप में ज़्यादा strong players हैं. It becomes a bit more difficult. Harikrishna has not drawn yet, but it's a dead draw chat now. Because the only variation here is king g2, rook a2, f2 is hanging. So if rook f4, I take the knight. So knight d4 only move. And now just rook takes a4 and it's the draw, yeah? So rook f4 check, king somewhere, I don't know where there's no check. Let's say g8 probably. Knight e6, rook takes f4, knight takes f4, king f7. And this is just a dead draw, pawn down. Bishop will sack itself for one of the pawns for white later on. And just a dead draw. So bye chat, I'll see you tomorrow. Thank you joining in भाई. I don't know आज कितना मजा आया because आज विद की गेम जल्दी खत्म हो गई. But regardless, thank you for joining in भाई. मजा आया. Thanks for support chat. I'll see you tomorrow. Take care. Keep smiling. Bye bye.